So you'll find on the controls there is a recording button. So we'll do that. No, a significant recording will happen. कहाँ पे जाएगा? C में जाएगा या D में? हाँ, it will go into the C users HP documents Zoom. So there is a Zoom folder which is created. I'll just show it to you, and I will put the shortcut for you. Just don't worry. It will go into the HP. Then there is a folder called the documents, and when you close this meeting, so it will go into that. Hello. Yes. We are still on. Okay. It will create a Zoom folder in this. You know, it will create a Zoom folder. So let me do this thing. Let me create the Zoom. Maybe once I will stop this one, it will happen. Yeah. Stop the recording. So once we stop the recording, it's going to happen. We can see it right now also. So what we need to do, that on the desktop we should only put the shortcuts, right? Just like this. And just like you have this, when you are going to use a software very frequently, so you should put them here on the taskbar. Okay. So if you want to keep it there, it's okay, it's fine. So that's not a problem. So normally we keep all the softwares here, like we say pin to the taskbar. Unpin from the taskbar, this is pin to the taskbar. Adobe Acrobat, you also pin it. No, there's no need because it is opened by the click. Okay, and if you're fond of the movies, you can keep it here also. Now Primavera will also come here. So now what we will do, that we will start the installation of the Primavera from the software folder. So we go into the software. So the software is here. Actually, we should be keeping the software outside for convenience. So let me cut this. So downloads work area. Okay. Now you go into the software folders. Now you will learn. So it is now your. Now you click on the software folder. Yeah. In the software folder, get into the Primavera. See, you click this file first, NDB462, double click so that the system can update itself. If the system is updated, the software will give the message. I think I installed this one. I tried yesterday, but I did not prepare the data. Okay, already installed. So it is done, right? Yeah. So now what we will do, once this is done, once this, let me check on the desktop, there is no message from the software. So it is installed properly. Now you go into the x64 folder. You go into this folder also. Now you start this file. This is the P6 Pro. And this is the latest version of the software. So I will double click. Okay. We'll go slowly and slowly so that you can remember it, what you did, because if you need to install on another computer, so you will remember. Next. So see, there are two options here. One is the typical and one is the advanced. In the advanced, you are given the option to choose what you don't want to install. But we want to take all the features, so that's why we go for the typical. So typical means everything. So click on the typical option. Yeah. Now we will click on the install to start. Driver type is okay, I think, same, right? Yeah, now I'll explain to you that what is happening here. Just wait. Just see, Primavera has an architecture of client server.
The software which is used on the Windows is called the client. The browser is the client. Server is the database. The database is at the back and it serves the data, it stores the data, it updates the data, Correct. contains the data. So this is a client server and the update. देखिए, I believe that you are using Facebook from the browser and from your mobile also, right? Right. So you are seeing the same data. Correct. So it means that the data is not in your mobile, it is somewhere there. Correct. Somewhere in the backend. So that is the database. The data, your pictures, your text, your videos, your audio, everything is rearranged in the properly arranged in the database. And what you are doing on the mobile is that you are using the client application, is the app. Correct. So Correct. browser is the client application. So this is that architecture from the day one. Now, Correct. what is the benefit of this architecture? That the data is organized properly and it has room to grow very big. Because if the data is in the database can be expanded. So this client server the architecture has the possibility to connect to your Oracle, to your SQL. SQL Server is a software from the Microsoft, because some companies may have the some companies may have the license for the SQL, and the SQL is already installed. देख लो ये आ गई, साउंड आ गई ठीक से, साउंड आ गई, you are getting the sound. Yes, yes. My God. DDS. Now can you hear me? Oh yes. Okay. Yeah. I think उसमें double वो करना पड़ेगा. Ah. Okay. Okay. So actually this is useful when you are connecting your laptops to some external theater system. Dolby theater system, DTS. So it will give you theater like surround sound. Now here in this drop down, as we can see, there is an the option. Just click on this drop down. I'm not able to click. Now there is a third option. It says P6 Pro Cloud. Now what is happening these days? You must have heard about cloud computing. Cloud computing. So people do not understand what is cloud computing. Why is it called the cloud? See, in earlier days, in the data center, we used to hire some space in a server. Correct. Now, when our business used to grow, then data had to be moved from one server to another, and it meant a downtime of minimum 2 days. So one person will take the backup from the smaller hard disk, he will transfer it to the bigger hard disk and a bigger computer, and then the data will be live again. Then the company's work will start again. So these days, then what we did in the IT industry, we thought that this is a frequent option. This is called a scaling up. Now it is like expanding a building. Like you created a building of 5 floors, then after some time the client's requirement grow, his business grows. He says that I have more the employees, build me one more floor. So you can scale up, but based upon the foundation. If the foundation is supporting up to 8 stories, 9 stories, then you will build it. So this is called the scaling up. Now what we did that in the IT industry, we came up with a solution for this. So we joined thousands, 1,000 minimum computers in parallel. In parallel in the data center, already we created racks and space. We will join 1,000 minimum computers in parallel. Servers, high speed server. Then from that, we will create one big virtual computer. One big virtual computer means that all the hard disks will join. It will create 1,000 terabyte hard disk, virtual hard disk, and it will create 1,000 gigabyte RAM, a big computer. In that big computer, we will create small little slices as per the requirement of the client. Now, what is the benefit? The client scale up immediately at the push of a button. Within 1 or 2 minutes, you can scale up. Suppose right now you have taken the configuration of say 4 GB RAM and 1 terabyte hard disk, and tomorrow your business grow. So within 5 minutes, your 4 GB can go to 8 GB and your hard disk can be increased to the 2 terabytes. Now, what is the benefit of the cloud? If any of the constituent server goes down, the cloud
has still 999 computers of the working. The cloud will stay on. The cloud will continue to work because all the hard disks, they have a system called the mirroring. So they are creating a mirror. The data is not kept on one hard disk, but it is kept on multiple hard disks. Right. So it is a fail-proof system. Now, what is the benefit of the cloud computing? You can focus on your core business. So your core business is the construction. So you Right. don't have to hire a IT administrator, the database administrator, network engineer. Earlier, the companies used to have the IT department, very huge one, and people will be there. At least 5-6 people will be there to take care of those things. So right now, it is not required. All you can do is just install the client and connect to the P6 Pro Cloud Connect. All your data will be kept there, so people can access the same data from the multiple locations. Multiple units, yeah. They'll be working on the same data, just like you are looking at the same Facebook or profile from multiple location. So that is the centralized storage of the data. So this is how it can work for your company also. So right now we are going to use the fourth one, P6 Pro standalone. Why the standalone is given? Because it's a free trial. So in the standalone, you will get to experience the full features, but this software will not connect to the cloud. Correct. It is only there for your knowledge, but it will not connect. It can connect to the local database only, which is the fourth one, P6 Pro standalone SQL Lite. So it is a light database which will be stored on your computer only. Okay, you click the fourth version, fourth one. Okay, click the next gently. I will show you. See here, it is saying add a connection to an existing. If you are reinstalling or if you are installing on a system which already has a database, so you will add a connection to any existing. Since it is not showing any existing, so it means that we have to use the second option. Add a new standalone database and connection. Next. So wait here, enter your new password as admin. Password also admin? Yeah. Because the person who is installing the software will be given the administrator right. Confirm you password admin. And in the personal name, you put your name as Vishal. Okay. And click on the next. Next. Okay, hold on. See, it will always try to install in the user's HP. Now, this is a folder which normal people, they cannot access. They don't know that where it is. So you will browse. Just on, there is a browse button there. Now you go to your Primavera in the work area, D drive. So here in the work area, you go Primavera. You will find a folder called database. Now you will click on the save. Click on the save button here. Now, what is the benefit of keeping the database there? See, in the night when you are taking the backup of the entire folder from the top, that is the work area, your database of the Primavera will also get backed up. Plus, if you want to take the backup of this database separately during the daytime, so you can attach your pen drive and copy it into your pen drive. Correct. If you want to put it into another system, you can easily transfer the data. Okay, because now you know that where it is. And right. An option here, load sample data. Yes, we want the sample data because using the sample data, we'll be able to understand the working of the Primavera, that how it works on a big scale. So it will load lots of projects and lots of data to show that how it functions as a portfolio manager, enterprise projects and portfolio manager. It is called an EPPM. Correct. So that is why it is called. What is the enterprise? What is the portfolio? We are going to learn. It is a one-time exercise, but sometimes if you need to install for your colleague, for yourself, so you can do it. Okay. And next. Next. Yeah, database alias will be project management database. PMDB means project management database. So that is a very simple name. Click on the finish. Yeah, finish, and it will install. We have to wait for a moment so that it can finish installing the software. Now, after that, you close this window, you close the Explorer window, or you can minimize it.
Now you will find the software on your Windows. So you click on the Windows left icon, left corner, left side corner. See, you will find the in the Oracle KLMNO. No, the Oracle will be there. Yeah. Yes. Click simply. See, it is having database configuration P6 professional. This is the standalone database. In future, if you want to configure, now this is the one we want. You right click on the second one, number 2. Right click here and click on the more. No. Click on the, yeah, that's okay. Click on the more. Pin to taskbar. Taskbar is always fast. If you clicked on the pin it on the start, that's okay. Okay. So whichever you want to use early. See, normally we are all right-handed, and I believe that you are also right-handed, right? Lefty. Achha, left side. So you will keep it on the left side. So you will keep, so whatever you use first, so you will keep it on the left side. It is convenient for you. The thing that you use frequently, you will keep it on the left side. Okay, now you start. See, here you have to put the login name as admin. Do you see this cloud here? Pieces cloud. Right. So, it is a sort of advertisement for you that if you wish that in the future you can connect to the cloud also, the cloud is available. It is just a sort of advertisement. So right now the database is only one. We will use English, the United States. And if you want to change the language, see if the Hindi is there. Do you see the Hindi? No, not India is a very big country, but they won't put a Hindi. For small little countries, they are putting the language. Okay, never mind. We'll use the English. Yeah. Connect. Okay, so this is something because it's a new software, so we need to do the setting. It is just giving us a message that we have to set the preference of the industry type. Yeah, and we will soon do it. Now the software starts. Now in the main screen, what you are seeing here is the complete list of the projects. And on the top, what you're seeing is the enterprise. Now, how to interpret this thing? So to interpret this thing, I have to tell you that what is the Tata Enterprise? Name of the company is Tata Enterprise. It's not a company, it's an enterprise. Enterprise means an organization. So in the enterprise, there are various lines of business. So what is the line of business in the Tata Group? Tata Passenger Car Division, Tata Commercial Vehicles, Tata Consulting System, Tata Consultancy Services for the IT. So just like to represent the entire organization, so here is the structure. This is called the Enterprise Projects Structure, EPS. Okay, so this is where it starts. Now, how to interpret this? See, we can interpret it like this. First, what I will do, I'll hide this lower part and I'll just scroll up, see this. And this is the, say, oh, here we have a project called Project Nano. Okay, so this is the project. So basically what is happening here, all the projects, they have a duration. This duration is represented as a Gantt bar. Now, this is the duration of an individual project. We have to go inside the project. This is the line of business. So how do we see the line of the business? We go to the view and then we say collapse all. So when I collapse, this is the Tata Enterprise. Let's say, now what is the business? Sujoy, 1 minute just. Can we just confirm if the recording is happening? Because like, okay, we did the installation part and we just make sure the recording is happening. Let me do the thing. Let me stop the video first, then you will be able to see this. Okay, let me stop this video. Let me stop your video also. Can you please stop your video? Stop video. Okay, you stop the video. Now I'll stop sharing your screen. Okay, so now you will be seeing some controls at the bottom. Okay, yeah. Do you see that it is on? Which one?
Uh, Recording, yes. yeah, is that on? Yeah, it's on. Yeah, fine. Now you share your screen. Okay. Can you see now? Yes, yes. Do you want my video or it's okay, not required? Yeah. Now I'll just tell you. So the recording is on at my end also. So in Mm-hmm. case by chance it is not recorded on your end, I will send you from my. Okay, great. So Great. that's not a problem. So let's keep it on both the ends. See, Okay. here is the enterprise, and this is called the line of business. Mm. Okay. This is called the line of the business. Now this is the project ID, and this is the project name. So you can sort it like this. Okay, you can sort by the project ID. So this is the ENC, engineering and construction, energy services, manufacturing, product development, corporate program, information technology. So this is the structure of the enterprise, and this is called the line of business. Like the Reliance, Reliance has got many line of businesses. It has the Reliance Petroleum, it has the Reliance Geo, it has got the Reliance is also into the fabrics, because that is the main business. So all this is representing what is the line of business of the entire company. So after that, we can see that what is the projects in the engineering and construction. So this is an individual project. This. So do you see this the icon, that is the pyramid? Do you see Correct. this small little pyramid? Yeah. So Yes. Clear. remember this, that what is the meaning of the pyramid? So pyramid is a structure. Structure. Okay. So it is the structure of the line of business. So it is just like we say, this is the pyramid structure of the business. Okay. Now in this pyramid, there can be more. See, if I go to the IT, IT has got further substructure, that is the line of business one, line of business two. You can add three also in the future. So line of business. Now this is the. Do you see this pyramid? A line of business one. Now this is also a pyramid structure. This is not a project. Then what is a project? See this the icon. Now I'll just tell you that what is the thing you have to do. Just like you remember the face of a person. Mm. Okay. When you see a person, I believe that if you see me tomorrow in Kuwait, and I believe if by chance if you see me, you can recognize me. Okay. Mm. So if I see you in Delhi or somewhere, I can also recognize you. Right. Sometimes it might also happen that some other person might be looking like me. Okay. So, or some other person might be looking like you. But so we remember the face of a person. Right. So once we have introduced to the person, we know his name. So you just know that this is the project icon. This is the face of a project. Mm. Mm. Okay, you will have to take a mental note of this. And this is the face of a portfolio. This is Okay. called the portfolio. See, what is the word portfolio coming from? Actually, it is coming from there is a folder, partitioned folder used by the accountants to keep the documents separated. There Okay. is a document for the supplier, vendor, for employees, for transport. They have a bag in which there are separate compartments, separate partitions on which the labeling is there. That is called the portfolio. The portfolio word has been taken from there. Okay, Yeah. it is a physical piece of an item which is used by the accountants to keep the papers in proper sorted fashion. So it is doing that exactly. So that is why it is called the enterprise, project, and portfolio management. So engineering and construction is a portfolio. So Okay. who is the portfolio manager? Portfolio manager is Ratan Tata. And Mm. who is the project manager? Project manager is you. Okay. So all the project managers, they are having one or more projects. So their name will be also there. Now, what do we do that when I want to look into the project? So what I will do, I'll right click. Just right click here on this project. You will see this icon, open project. Mm. Click on this. Now, this is the Gantt bar, and I believe that you have already seen this many times, and I believe that you may have also worked on the Primavera before also. It's not the first time thing for you. No.
You have used Primavera? I have used, but just for like as a consulting, not creating new Oh, okay, projects not and all that. creating. Okay, So fine. like I mean like when because in consulting job like we receive direct Excel file Hmm. and that we upload in our system and we take out the reports, different kinds of reports out of that. And Okay. like because actually my role is not that in planning. I Okay, was in the not in the board, planning. but Okay. now actually since I am only one in the project control, so that role is also assigned to me. And we have the core in the core team. We have the lead planners and all that. They support me in case if I stuck up somewhere. Hmm. But now like I can go to like certain filters and certain groupings, and Hmm. I can go and check what are the I mean completion dates for certain Hmm. milestones, like and all these details. So Hmm. that kind of all the reportings the client requires, I can get it out from Primavera. But Okay. like yeah, I'm still not that much I mean like competent kind of, because Okay. Never it's like mind. I'm like yeah current like because now we have huge project with like actually 4 packages, and Hmm. each like our my package is like having almost 16 to 20,000 activities if I'm not wrong, but other packages like having 50,000 plus activities, that much big. Okay. Since it Okay. is a refinery, I'm looking into marine package, jetty, and offsite facilities and all that. So Hmm. main refinery package is there, then utilities and utility package is there, and then third is tank farm package, and fourth is marine package. Hmm. So like I'm looking currently, into that marine. I'm assigned into that marine package. So Okay. also Okay. offshore, onshore facilities and all that, it like comes to my package. We have a Hmm. jetty which is around 17 kilometers far in the sea, and Hmm. it's a big platform, for the 4 numbers of loading vessels and all that. Hmm. And there's a undersea pipeline is there, cabling and all that, and onshore facilities, onshore all the buildings, and Hmm. there's also a sulfur conveyor exporting facility, but that is onshore. That's only like they have kind of made a breach, of 2 kilometers Okay. with the trestles and all that, and Hmm. they have constructed the exporting facilities. So all these marine loading arms and ship loading facilities and all that into that. Okay, okay, fine. So never mind. So by the grace of God, so if you work with me and you will be able to do it. I say work with me, not train, because I'm a consultant. So Absolutely. basically, I want people to come to the consulting level. So I Correct. call this 3 days of the training as work. Okay, so we are working to learn. Okay, Correct. so see in this screen, what you're seeing on the left hand side, this is called the table. Okay, this is the table. On the right hand side, it is called the Gantt chart. So Gantt chart was created by a person 150 years ago. His name was Henry Gantt. Hmm, hmm, So Henry Gantt basically was a consultant to the road construction contractors, those who used to work for the US government. Earlier big projects were done by the US government many years ago in 1910. hmm, So there was a lot of recession was there. So what the U.S. government did, because the people there are very rough, so hmm, U.S. government put the people to work through the road construction projects. They hmm, said that we will construct the road from east to west. I believe if you've been to the U.S., you'll find you can drive from the Atlantic to the Pacific East Coast. I have lived there for 2 years. I have driven once. Okay, and those hmm, roads are they were made 100 years ago. So what happened that these contractors, they wanted to be better than the other contractors, so they called this guy who was a mathematician. He said that we want to make our bids very strong when they go to the officials, so that they can instantly read and understand it. He said that okay, instead along with the dates, you create a bar chart like this. So he created this bar. So this bar would show that what is the total duration of the work in the pictorial format. correct. Okay. And those officials would first look at the picture side, and then they will look at the data, and then they would be convinced. They said that, okay, give the project to this contractor. Okay. So this is how he is doing the work. So this Gantt chart became very famous. Earlier, they will do it using the drafter. So I believe that you must have used it in your school also, drafter in your engineering. So I've also used it. Okay, 2 years in the 11th and 12th, mechanical engineering was a Hmm, subject in which I used drafter. So these days, basically the software is drawing it out for you. You don't have to.
worry about how it will turn out. We just only have to understand that what is the proper sequence of the work using our technical domain knowledge. So Mm-hmm. we all work in a particular domain. You are in the domain of the civil engineering. I'm into the domain of the software engineering. I understand that what is the proper sequence. So once I put the task in the sequence, it will create the picture. And this picture will give a better understanding to yourself first. That is it looking right? And then to your team members, if your team members find a flaw, they can check the sequence and they can increase or decrease the duration. They can fix the sequence also. So once it is done, then we have a foolproof plan. So this is the Gantt chart, and this is the project. The project will be shown in the activity tab, and list of all the projects will be shown in the projects tab. Okay, so keep this in mind. Okay, list of all the projects will be in the projects tab, and activity means individual project. Now, which project? If you look at the top row, absolutely at the top of the screen, do you see the name? Do you see the name Haitang Corporate Park? Yeah. So actually it is the name of the project which we have opened on the screen in front of us. And this is the project code EC00501. Every company might be having some code. So, okay, so this is the code of the project and this is the name. And below that, it is called the main menu, file, edit, view, then tool, admin, and below this we have the icon menu. So all options which are there in the main menu, they are also placed in the icons. Now, what is the benefit of the icons? The icons are faster. Something that you use very frequently, and put into the icons menu. And once you have recognized the icons, you don't have to go into the main menu. You can just click on the face of the icon to do a particular functionality, and which we will do in a while. Okay. In a while, we are going to first set up the software properly, and then we are going to use it. Then there is another button on the left panel. I'll say left panel, right panel. So this side is your right panel, and this side is your left panel, and on the top is the main menu, and below is called the panel. So we can add one more panel. I'll say panel 1. So the panel 1 is there. Then we will add the panel 2. If I ask you to click something on the panel 2, I'll say click this button on the panel 2. Click this on the main menu. So main menu is file, edit, view, project, enter. This is the main menu. This is the panel 1. This is the left panel. This is the right panel. On the right panel, what you have is the plus. Now, plus is a very special button. If you're in the projects, it will create a project. If you're inside the project, it will create a task. And if you're inside the WBS, work breakdown structure, it will create WBS. It will create a WBS. If you're inside the resource, and if you click on the plus, it will create the new resource. Yeah. This is a special, and below this there is a cross button. So cross is doing the same thing. If you want to delete a resource, if you want to delete a WBS, if you want to delete an activity, if you want to delete a project, see, and you can do the same thing using the physical delete button and the physical insert button. So both will do the same thing. Okay, and then there is copy paste. Now what we will do, that we will try to understand that how we can first set up the buttons. To set up the buttons, what we do, that we try to find out that which buttons are here. I'll say add or remove the button. Activity usage spreadsheet. Yes, I need this very frequently. Then I need the hide this resource usage spreadsheet, activity users spreadsheet. The arrange children button I need. Align button I need, and hide left column, hide top window. I don't put them there because people can get confused. Sometimes they will click it and it will hide something. So I don't like to put this button for the new people, but later they can discover it and use it safely. No bottom layout. Yeah, this is a very useful button. See, in the bottom, what you're seeing is the detail of the task. Do you see this? See the horizontal partition. Yeah. And in the project, you will be seeing that for the project. If I say, show me the project details, it will show me the bottom screen, but this time it is for the project detail.
And in the activity, it will show me the activity detail. Activity details. Yeah. And in the WBS, it will be showing me the WBS detail. Now, if in a particular screen I want to hide the bottom part, I can click on this button. See, if I go into the activity, if I go into the projects, I want to see the list of the entire projects. So if you right click, project detail will come. Sometimes you can hide from here also. Hide detail window from here also. But sometimes if you don't find the hide button, so you can always click on this. If I go into the resource, I am having the detail. I want to see the entire list of the resources. I can click here. Now I can see the entire list of the resources, right? Now, first we will set up all the buttons. We will recognize the button and then we will do the project. Now I'm going to add more button. So new layout, open layout, save layout as, then table front row, user preferences. So user preferences is very frequently used. So we will have this on the front. And global change, apply actuals, top-down estimation, summarize, store, threshold, issue, navigator. Yeah, we'll have this. Okay, so and this button is very frequently used. We are going to place it here in front of the eyes, and this is something that we use less frequently. So we are going to place it on the right side. See, right now the panels will be jumping. So after some time, we can lock them. So now let me see what more buttons are there. So first of all, it might seem that it is too much. So that is not a point. So expand all, collapse all, because once we start to use them, so no, they will become very useful for us. So then we will be able to recognize. See, once we go to a party, we might be seeing new faces there, but after some time, once we are introduced to the people, so then we can recognize most of the people. So that's not a problem. So page setup, print setup, that is good to have. Okay, and there will be export and import button also. So let me have that. I'm trying to find that button where it is, export import. So export import button should be there. So let me see, issues, thresholds, assign baseline, maintain baseline, and I'm trying to find export import enterprise project. You can do it from here also. Okay, so add or remove buttons, commit changes, refresh data. This will be used by you very frequently. Now I'm trying to see where is the export import button. File action. Yeah. Now this is very good. Let me see, administrator, find, publish, reports. Reports I need. Very useful button. So I'll put the reports here. Report groups. Yeah, I need this button, very useful. And administration button. Yes. So this is the admin. So see, admin choices are here. The same thing. The same thing is here. Absolutely the same thing here. Okay. So now, after having all the buttons in place, okay, I'll put, see, in the center of the screen, I put the very frequently used buttons. You see this button, these are very frequently used. This plus minus, this one, you will use very frequently. This one and this one, all this you will use very frequently. So what I'm going to do you see this lock? Right. So I'll just click on this lock. Now, once you click on this lock, and by chance, you will not be able to shift any of the buttons. Okay. So mistakenly, they will not get shifted. So all of the buttons are nearly in place. Now you will do it. So this is a configuration which I've done once, but later you can do it by your own use pattern.
You have to recognize that what I love to use most, what I should keep on my left side. So based upon your convenience, you can shift it. You can shift the frequently used button towards your left side. Okay, so that it is good for you. So right now I have given something which is good for the average of the person. And slowly, as you recognize your usage pattern, you can add more button or you can remove the buttons you feel that you are not using them. Okay. Now what we will do, that we will set up the Primavera. So what is the setup? See, if I go into the projects, so I'm not able to see that what is the start date of the project and what is the value of the project. Okay. So if I click on this, the button, this will show only the column. And if I click on this, it will show me the Gantt chart also. So, Okay. okay, just try to click on this. Yeah. Click on the Gantt chart button. Gantt chart button. Yeah. So, these are the two very frequently used the button. Yes. Then I say table view. Click on the left side, left button, table, Gantt chart, table, Gantt chart, right? So now I say table, you will click on the table. Yeah. Right. Okay. Now, if you look at this, so what is happening that you are the boss of the enterprise. You're saying that, okay, I can see the project name, total activity strategy, but where is the start date of the project? Where is the total value of the project? Yeah. So we can add those columns in the Primavera. It is giving a great flexibility. It is called a layout. Okay. So by default, it is a new software. It's a new item. So we need to configure it. So everything which is a software can be configured very flexibly. Now, how do we configure this? Do you see the small little triangle here? See, Right. if you click this, a menu will come. And first I will show you, then you will do it. I will Okay. click on the layout. In the layout, what I will do, I will click open. So when I say open, you will say this layout. Global, chart view, project coding project. The same data can be viewed differently. Okay, so what we will do, first of all, this is the view which we like. It has got the blue, green, yellow setting. I'll go to the layout. I'll say save as projects. I'll say a project's original layout. Okay, and you can put your initial like this. So once you save, then you will see that what is the value of this. If you go to the layout and you open, do you find this admin partition? There are two partition here. One is the global and one is the admin. Now in admin, what we have done, what is the best practice, that we do not change the original. Original is provided in the global. So if I want to see the chart view, I will click apply. If I want to see the project coding, I will click the apply. The same data will be formatted. If I want to see the project cost, I will click on the apply. I will get the project cost. Now, sometimes people say, sir, this is a very bland looking thing. I want that yellow green thing. I say that, okay, if you like the yellow green thing, first you go through this. Say, sir, no, this is very faded. I like the yellow green. This is the looks that they love. I think this is the most comfortable also, because it is this is distincting the data with the color bands. So this is what we do. We first save it immediately after the software is installed. Now this is the original layout. I have given it the name project original layout. Now we can add all these columns. You don't have to worry. See, this is the columns. Do you see these columns here? Standard project view. Do you see this column? Project manager, finish, all this. So we can add these columns here, and we can make the same list of the columns in this looks. The looks will be mine, and those same columns will be there. Now, what I will do, that I will go into this and I will say save as once again. I will keep the original layout as the original. Now, what I will do, I'll call it as the project's cost
layout, or you don't use the word layout. Okay, project cost and dates. Okay, click on the same. Okay, now do you see the layout name which is currently controlling on the left of the corner? Okay, now we are going to modify this. Okay, now you right click on any of the column or the blank area, that is the strip, the column name strip. Okay, do you see this columns? If you go to the customize, yeah, so you can select, you go to the duration. First you go to the duration. So you select the BL project duration. BL project duration means the baseline project duration column. So now here. Now, yes, I believe that you are a little bit familiar with it. And remaining duration also you can take it. Remaining duration. Yeah, here the cursor is on that. Okay. Okay. Now you go to the cost group call. No, you need the start date. You go to the dates group. Yeah. You take start and finish. Only start and finish. Start will be yes below. Yeah. And you can move the start to next to the project activities. Yeah, like this. Now, what you will do, you will place the cursor here, and then you will go to the cost group. You will take the project total cost. Now go to the cost group. You'll find something like BL project total. No. Here you can see here. If you scroll down, you can see it there. That will be very long list. No. You go into the cost group. Just group this. It's there right in front of you only. Just click on the categories. Scroll down. You see this BL project total cost. This one. This one you take. Okay. Now you click on the OK, and this will be applied and closed. This is applied and closed. Now, how do you optimize the size of a column? Just like in the Excel. So yeah, we gently double tap here. Okay. See, once we get this thing, this looks, so we gently double tap just like this, and this will optimize. Now, sometimes if I click on a particular column, it will get sorted. Do you see this small little triangle here? Right. Actually, it is being sorted by this column. So it is called the ascending sort, and this is the descending sort. See here. This is the Siddha. This is the ulta. Correct. Okay, just see the triangle. When the triangle is straight, it means ulta. When the triangle is downward, so this is the Siddha. See, it will be starting from the lower number to the larger number. See, 501, 515. So if I click on this, now the triangle is Siddha, but the data is ulta. Okay, so just keep this in mind. And make sure, sometimes you know that what happens, that people sometimes will click here or click somewhere, and they will get confused that I'm missing my project. It used to be in a particular sequence. Tell them, look at the column carefully, the project ID, activity ID. Normally it should be sorted by that column only, so that it is easier for you to identify. Now, if you want to sort the project ranging from the lowest to the highest, yeah, maybe you can sort on the project total cost. And in each of the group, it will be sorted by that. Okay, sorted in that order. Now you can see, okay, it is being sorted. Now, since you have created this new column layout, you will save it. Okay. So once you save it, it is there, and you can export it also. You can give it to another colleague also. You can send it. It is called the project layout file, and we will learn. So I'll sort it back on PLF, right? Yeah, PLF file. I believe that you may have received it also. Yeah. So it is called the Primavera layout file. Very simple name, PLF Primavera layout file. So the layout file contains the information of the columns, and this will work on if your data is the same, and if you want to discuss with another colleague, and suppose if you're not sharing the screen,
So then it is good to share the Primavera layout file, and he can open the file in front of him, and you can basically talk with him that how it is to be done. Okay. Now what we will do, now we are going to configure the software further. Right now it is showing the data in the dollars. Suppose if you want to see this data in the rupees or the Kuwaiti dinar, so our first concern is that whether can I see the data in my currency or not. Yes, you can. Now there is one more thing that I want to tell you. Do you see this in the start and the start column? You see A. Right. In some dates there is A. See, I'll expand this for you. Here there is A means actual. Now actual means that this project has started and actual data has been collected into this project. So actual data has been collected for start date, finish date, for the units of the resources. So man hours, machine hours, material quantity has been actually collected. And once you have the actual data, then you are able to do the variance analysis and you can do the monitoring and control of the project. Now, once you see the actual on the finish date, it means that the project has finished. Do you see this column, remaining duration? Remaining duration 0, yeah. That is why. Completed project. Completed project. So there is no remaining duration. Okay. So some of the project like this is 588. So that is the total duration. This is BL means baseline project duration. And this is the remaining duration. So it means that 433 days of the work is still there. Okay. Now this is the planned cost. If you want, you can insert another column here, actual project total cost. Now you go to the cost column. You right click here, column. In the cost, you will find actual project total cost. Actual total cost, yeah, this one below, come down below, yeah, those. And you place it next to the project total cost. Down or down, yeah. Down means right, yeah. Click on the OK. OK will be applying and closing. See this, okay. So for the number of the days which have been utilized, and if you want to see the number of the days which have been utilized, so you will insert a column called just duration. Just the duration. Now, if you insert this column just duration, it will show which duration have been the number of days which have been utilized. So here in this project, do you see the actual total cost as 0? And do you see any actual here on the dates? No. There is no actual. It means that the project has been planned or it has not been started yet. Either the project may have started physically, but the data has not been brought in. It can be anything. Right. Just one question here. Normally, please. Actual cost is like, it's not a formula base, it's a actual amount which you entered. Yes. Right. So, yes. Normally, how reliable actual cost in this Primavera format? Because what I heard, normally people don't use, the proper tracking of cost and input of cost in Primavera. But like, how much reliable it is, or it depends on the planner, right? Kind of. Yeah, very good question. I'm glad that you're asking the right question as a project manager. See, it is as reliable as the people that are using the Primavera. Primavera is not unreliable. It is the people who are unreliable or reliable. Now, if I'm using the software Tally in my company, and suppose if people are taking cash from the accountant, but they're not filling the voucher, is it the fault of the Tally? Right. No. Achha, suppose that people are taking the money, filling the voucher, but the voucher are piling up on the table of the accountant. He is not entering into the Tally. Now, is it the fault of the Tally? No, definitely not. So you don't have to doubt the Primavera. So basically, the Primavera is as reliable as the people that work with it.
That's a very simple thing. You have to understand. So that is why I tell people that, look, I will start the Primavera session with a little bit of understanding of the project management and importance of the role of the project manager. Because I've seen in that in many big companies, they have installed Primavera with a lot of fanfare. In India, they're spending 10 lakh rupees, 12 lakh rupees, and then I have tie up with some local vendors. So whenever the vendor they make a sale, they tell the client, look, this is the person. If you wish, you can contact him. So they contact me, I do the training, and then I tell them, look, this is what you have to do. So they say, हाँ कर लेंगे sir, कोई बात नहीं. Now what they don't do is that they don't follow the rules. So when they don't follow the rules of the project management, they are not updating the actuals, they are not monitoring and controlling the people. Okay, when they find that someone is slipping on the baseline, you know what they do? They create another baseline. Yeah, that is what happening. That should not be done. I'll just tell you what is the meaning of a baseline. Suppose you are playing a cricket match on the basis of, say, T20. Okay, so you played your side and you made a very good score. Now your rival side is playing, then they realize that they might be going to lose the match. Now they say, oh okay, अब ना T50 खेलते हैं, हम जीत जाएंगे. तो ऐसा तो नहीं होगा ना. So from if you're changing the number of the overs from 20 to 50, so it means that you are changing the baseline. Now, whether there is a victory or loss, it has to be decided on the basis of 20 only. Correct. Okay, so that is the value of the baseline. Baseline should not be changed. So baseline, but we should start with a very good baseline. So good baseline means that the subject matter experts, those who are very good in identifying the duration, identifying the right resources and their quantities. There is a person in the project called the quantity surveyor. So why the person is only doing that only? He's just doing the quantity. We have applied just 1%. We say that you just apply your brain only on the quantity survey only. Do nothing else. So why we do that? Because we want to have a very good cost baseline. Because once we have a very good cost baseline, we can trust it. And then according to the baseline, we can tell the person, look, you are not applying the material properly. Some wastage is happening more than we had planned for. And more than what is the known standard operating procedure or the standard application quantity. Okay. So the baseline is something which people have to follow, and Primavera is as reliable as the data you put into it. Okay. So someone has to be strict. So who that person would be? That would be the project manager. The project manager is following the project management fundamentals, and he is also making the team follow the project management process. You will see the Primavera will show you the true reflection of the work site. Right. You'll be able to trust it. If people come from the work site and they lie to you, I have completed this much work, but physically they have done less, but they are reporting more. Tell me, what is the fault of the Primavera? Nothing. Primavera will not be able to tell you the true picture unless the true data is entered by the people. Okay. So Primavera is reliable as per the company policies, as per the company work culture, as per the company thought process, as per the sincerity of the people to the purpose of the work and the project management. So they have to work technically good, and they have to also contribute to the tracking of the data by reporting everything truthfully. Right. So it will be okay. And once you implement it, and once you put the people through the system, and if you involve them into the teamwork during the planning, so people will be basically maintaining that spirit during the work also. So they will not be slacking. There's something called slacking, means that they will tell you 10 days estimation, but finish the work in 12 days. So they're slacking from whatever they told you. So if the slacking can be stopped, you will find that Primavera is working fine. Okay. So we will first take the good estimates. Now, what we are going to do, since we have understood all this, now we are going to put the currency. Now, where do we get the currency from? We can get the currency from two places, admin currency. And if I recognize the face, I can click here also. The same thing. Now you click on the admin. Now click on the currency. Now this is, now I'll just tell you, just hold on for a moment. See, you are able to access the admin because you have installed this software on your laptop. So
if you are installing it, it means that you are the super user. But Hmm. if you work in the company environment, in the network environment, you might not be the administrator. Right. Everybody cannot be the administrator. There is a great risk. Right. It contains the master data. If the master data is changed, then the value of the project can change. So that is why many people in your company, you will not see the admin link on the top or admin option on the top. Hmm. So it is for you only because it is on your laptop and you Right. are the owner of the database and the installer is also you. So normally when you are working in the company environment, admin will be one person at the top and you will be using the data entered by. Now you are going to check out if the Kuwaiti dinar is there. Just check if you find it there. Kuwaiti dinar KWD. So we will create two currency here. One is the INR and we will create the Kuwaiti dinar. If it is not there, we can add it. Click on the add. Hmm. And in the column called cur, you put the currency code here. You type here. So which one do you want to create? You type the code. Now you put the no, not like this. In the left side, you put the KWD code, and on the right side, you put the full name, just like the above. Now you will go to the axis. Here, what is the symbol? If you don't have the symbol, just do one thing. Just type K, KD. capital KD. Yes, yeah, KD. And exchange rate you can find from the site axi.com. 245. 244, 245, No, 240. just no. I'll just tell you. Go to the site. It will not be 245. It will be 0.245 because the value of the Kuwaiti dinar is high Ah, as per sorry, that the is business. INR. Okay, so Because no. point with Here KD. the base currency is the USD. Yeah, yeah. Just So go to the axi.com. 3.30. No. This is not 3.30. We are basing it on the $1. It will be less. See, I'll just No, tell no, you. no. Kuwaiti dinar is higher than dollar, na? So that is why the fraction. That is why the fraction. $1 will be equal to zero point 0.3. Ah, okay. Fraction of that one. Fraction. It is fraction. Because the Kuwaiti dinar is stronger. So how strong it is? So let us confirm. So can we go to the xe.com because they will give you the 4-digit, 5-digit. Because when you are converting into thousands and millions, you will not be losing the money. Go to xe.com. Open another tab here. No, here you click on the plus. You will be opening another Yeah, tab. yeah. Because I was not able to see the plus because Yes. Yeah, because the control is there. just a minute. Okay. Hello. Yeah. So $1. You put one US dollar is equal to how many? You will see the fraction KWD. You will see the fraction because the yes, because it is stronger, right? So what do? You take 0.306. Yes. Add. No, you just click Okay. somewhere else and it is added. Now you will add one more. We'll add INR. INR. Okay. Rupees. Okay. So rupees. Let me do this thing, but let me type it from here.
let me type this because it will not come from your keyboard. I am going to type Control Alt 4. Just one second. Control Alt 4. Control Alt 4 should type it. Okay, so what I will do, I will send it to you in the chat box, and then you can type it. Let me check if I have Control Alt 4. Just do Control Alt 4, that what it is doing on your system. No. All Okay. F4 or only 4? No. Control Alt 4, number 4. On the No, number no, 4, you no. might be It's not. having a. No, it's not coming. Okay. So what we will do? Okay, I'm going to send you that in the chat box. Okay, just give me a moment. So you can put it there. Let me see if the chat is going to support it. You can put me in WhatsApp as well because I have WhatsApp and desktop. Yes. In case it's possible. Otherwise, I can take it from here. I have the chat box, our chat box here. Okay, check. And then you'll have to go to the xe.com, and then you can enter. So normally this is updated by the administrator only once. So you 1 USD to INR. 75.10. So you can take 75. Just put 75 there. Press enter. Yeah, now it is entered. Okay, now click on the close. Now this is the creation of the master. But creating the data doesn't mean that it will get applied. It will be applied by the user preference. Okay. So you have to tell him the preference also. So where do you get the preference? If you go to the edit user preferences, okay. Now you will have to go into the currency. We'll let us go into the currency, then we will do all the preferences here. You click on this and type INR, type Kuwaiti dinar, and see that how it looks. In the INR, the amounts will look big. The numbers look big, 75 times more. Click on the plus sign. The plus sign will select. In the Kuwaiti dinar, the amount will look small. Click on those. Okay. Now the numbers have become small. The numbers have become small. Okay, because the Kuwaiti dinar is 3 times the dollar. Now you change it to the INR. So this is an exercise. See, this is the user preferences here. Just see this. Do you see on the extreme right side of the number 1 panel? This one? Yes. Now this is quick. You just have to remember that where it is. The numbers have become big. Right? So, this is the benefit of the Primavera. So in the Primavera, the real conversion is there. Okay, so real conversion. The project may be created in any base currency, but if the conversion rate is correct between the US dollar, from any currency to any currency, we can see the value of the project. Okay. So basically it is the conversion value is based upon the US dollar because it is a US based software. So that is why they are basing it on the US dollar.
So that's not a big deal. But if you want, you can switch the currency and create the resources in your currency and then apply them in the project. Then it will show the round figures in your currency. Right now, the round figures will be showing in the US dollars, but not in the Indian currency, because it is converted. It is converted. But if you create it in your currency, so maybe the value of the project will show up in the rounded number. So if it shows in the rounded number, it means that that is the original currency of the project, right? Mm-hmm. Okay. So now what we will do, we are going to set up the software further so that the software is usable and we are getting right configuration. So we will start at the top, that is the admin. Okay. Top menu, admin. See the words which are there, that is the menu. When I say panel, panel means those the icons. Panel number 1, panel number 2. When I say left panel, the left panel, right panel is the right panel. Right. Now, do you see the admin preferences? Yeah, click on it. Okay, I'll explain to you one by one. So this is the general, this is the code separator. Code separator means that whenever you have code 1.3, in Germany, the code separator is a comma. In India, in rest of the world, when we are mentioning thousands, millions, we are using the comma. For the code separator, we are using the dot. Now, first day of the week is given as Sunday. Now, if I use Sunday, so then I will not learn anything. So make the first day of the week as Monday. Let us change the default and learn. Make it as Monday, first day of the week as Monday, because the calendar will start from Monday on your left hand side. We'll be seeing from Monday, Tuesday, and default duration. Do you see? There is another box here. I'll just tell you. See, whenever you create a new task, as a matter of convenience, it will put the default duration which you feel is mostly used. So right now it is saying 5. You put 6 here. You just make it 6 because you have to put something for practice. Now you go to the next step, that is the data limits. Now this is the limit EPS tree. Tree means that child structure. So it can have 20 child. I believe that nobody needs more than 4 or 5. EPS, resource tree, role tree. So that is more than enough. Now we come to the next, that is the ID length. Next step. Click on the ID length step. Okay. I'll explain to you what is this. You see the project ID, task ID. So if you want to create a project, will you ever need more than 20 characters? ID means normally not, identity number. Yeah. See, do you see the third one? That is the resource ID. Resource ID means your employee code. Employee code. So how many employee code character is there on your? 5 digit is there, yeah. Okay. So I think that 20 is given. So it is just to make you familiar. Just in case you need more than 20, you can come and set here. Okay. Now we come to the time periods. How do we? Just one question. In the data limit, we have the maximum baseline copied with project. Yeah. What that means? Means you can only consider 3 times of the baseline, or? Yeah, that's a very good question. I'll just tell you. See, when we are exporting the XCR file, okay, or when we are making an internal copy of the project, so we can set, suppose if I have created multiple baselines, see in the project I can create, so here I have set up to 10. Suppose if I've created 10 baselines, so the 10 baseline will go with the project data. Now that may not be useful. So if I set it to 3, I say that first 3, because on the screen also you can display maximum 3 baselines only. So normally people do not work with more than 2 baselines, because the baselines are created new every year. Once we move from first financial year to the next financial Y, because once we work in the first year, so a lot of project data can change, which can revise the planning. If I am revising the planning, I'll have to change the baseline. I will use the
the second baseline for the second year. I'll not be using mostly. I will not be using 2 or 3 baseline. But some project managers, they say, no, I want to see what was the previous plan, what was the next plan. So with every project, I want to copy 3 baseline. So, but if it is so, then it will increase the XCR file size. So when I'm It exporting, means like if we have just example in my project, we are in revision L. Okay, probably consider that is the baseline. Okay, revision L, which we consider. We have multiple baseline because actually difficult to say it is a baseline, but yeah, now we are referring to that revision L, yeah, and that is for multiple reasons. So in case if I have this three, so when I copy project, it will only consider last 3 baseline when I copy it will consider the first 3. first 3. So it means B1, ABC B2, B3, it will consider. baseline And base if you plus want to base. increase it, you increase it to 10. There is no harm. But Mm-hmm. it will unnecessarily increase the size of the XCR Size file of the if the person no, needs but to I use mean like only. the latest baseline is if consider like latest baseline is number 4. Hmm. Okay, so if I'm copying a project and it will only consider 3, B1, B2, and B3. It will So it, it will consider the applied 3. See, in a project you can apply 3 baselines at once. hmm. First, it will consider So means you mean to the say like baselines which are comparison of 3 applied. baseline at a time? Yeah, you can Okay, put 3 thin baselines below your project along with the actual, and you can see that effect. I'll just show it to you. That's not a problem. okay. So if you want to make it 4, 5, 10, it is okay. But as per the majority user, it is set at 3. But there can be an exceptional user also who needs 2 or 4. So that's fine. Mm-hmm. It is all by the observation by the Oracle company. So that's why they put 2020. They've seen that Mm-hmm. nobody needs more than 20 characters. Exceptional to that, yeah, there are people in this world, they enter their name in the Guinness Book of World Record by creating a 100 character name. Okay, Mm-hmm. someone is having a name as .com. We don't have people like that normally. No, Mm-hmm. nobody writes name like that. I understand. So we just go by what is normal. So normal it is 3. If you want to make it 4, you can make it 4. If you Correct. think that it is useful and beneficial for you, you can do it. Okay. Mm-hmm. So right. So now we come to the time period. The next one. Mm-hmm. The next tab is the time period. Click on that. So time period is basically, I'll tell you, the first is the man hours per day. See, in the clock, there are 24 hours. But a Okay. person cannot work 24 hours according to International Labour Organization and the standards which were set 100 years ago. So when the Industrial Revolution happened, people were used to work 10 hours, 12 hours, or until they will fall down. So Okay. then after the Second World War, when WHO, when the United Nations were formed, so there were organizations like WHO, okay, World Health Organization, International Labour Organization, then Geneva Convention for the military, these Mm-hmm. organizations were created that how people will fight, how people will be treating their labor, how the health, the policy should be there for the countries. So then the humanity decided that the man hour should be 8 per day. Okay. So that is why we say the man hours is standard 8. But you Mm. can increase, decrease it. Right now we'll work with 8, but we can Yeah. increase, decrease the hours per week. So suppose this is 40. 40 means it's a 5-day week company. Mm. I say no, in my company, people will work 6 days a week. You make it Mm. 48. Mm. I'll tell you because this is a practice. So we want to change it. Mm-hmm. In 48. this, yeah, in this cell you put 48. Now, if you multiply 48 by 4, so you will get how much? Use a calculator on the mobile phone. 192 And if you multiply 192 by 12, so how much you will get? by 12 into 12. 2304. So instead, I'll ask you to put 2400. Why? Because there are some extra days which are not yet being counted in the hours per month. Mm. Okay. Now here we come to the time period abbreviations. I'll tell Mm. you it is a very important point here.
See, do you see for the months it is M, Hmm. and for the minutes it is N. N. Okay. Now I'll tell you what is the problem. Here it is not the problem. If you are using the Primavera, then it is not the problem. But the Okay. problem will start if in your company Microsoft project is also implemented. Hmm. Hmm. Sometimes what happens that people have to export the data from the Primavera into the Microsoft project, then the problem begins. Then Okay. Microsoft project begins to complain and they are not able to locate the problem because people are mostly engineers. They are not software people. Okay. And someone should know and set it for once. See, I'm teaching Microsoft project also. I'm certified on that also. Hmm. Hmm. Know from that knowledge that in the Microsoft project, the abbreviation of the month is MO. So you make it MO, Hmm. and in the minutes you put M. M. In Microsoft project, they use M for minutes and MO for months. Now, when you are exporting your data from Primavera to Microsoft project, it will be fitting into their column of the Microsoft project very smoothly. Because if Okay. you're sending N, so if it says 5N, if you are saying 10M, so it will interpret the 10M as the 10 minutes instead of the months. Okay, so it Hmm. should Hmm. be suffixed with the proper code. 10, 10M would mean 10 minutes. Now, if you are exporting 10N, then Microsoft Hmm. project will say unable to recognize column data for the duration. Okay. So this is just for the future compatibility, just in case. Hmm. Okay, now we come to something called the earned value. So earned value means the value of the Hmm. project which is Hmm. partially completed. The value Hmm. which you earn by completing a part of the project. So Hmm. that is dependent upon the overall project completion. Percentage of project completed multiplied by budgeted at completion cost is called the earned value. Hmm. Hmm. It is in the PMP, it is based upon activity percentage complete, which is the correct setting, and ETC is equal to remaining cost for activity. So ETC is being calculated for the from the remaining cost of the activity, so which is fine. Sujoy, can we take 5 minutes break? I just go to washroom and come back. Ah, yes, yes, Yeah, you can please. take Okay, that. Yeah, just yeah, fine. sure, sure. You can Yeah, also that's like wait with us. Yeah. yes, yes, it's okay. Okay. Hello. Hello.
Okay, I'm back. Okay, I'm here also. I think this Bluetooth headphone, if we can connect, but I think it's not. I don't know why. Okay, 1 second. Let me try.
इसमें click करना, just click here on the device manager. Okay. Now, Bluetooth. Now here you click on this, click on this, right, expand this arrow. No, just click on only once. Okay, you now right click here. Here. Yeah, right click here on the Bluetooth. No, on the top. Scan for hardware changes and keep your headphone on. It's on. Okay, now just see that which one is your headphone. MS. So it is not coming up, right? Yeah. Okay, just do this thing. Right click on the Bluetooth and then you will see properties. Properties. It will show something on this box. It should be showing update the drivers. Okay, if it is not showing, then only thing left for me to do. Is it a connecting? Yes. I have the external Bluetooth. Wait. I will put it that. So you can use the external Bluetooth jack and Yeah. use it because the internal, Activate. I believe the driver is not updated yet. Maybe. Because when you bought a new PC, it is using the old driver. Where did I keep that? Okay, just a minute. I'll come. Actually, I have resent the request for the remote control because I was not getting it. Okay. Now you expand it. And after applying the USB, you right click on the desktop. Do you see this desktop icon on the top? And then you say scan for hardware changes. I put it. Audio input and output. This is the new one which has come. And if you right click on that, you can scan for hardware changes and it will. Which one? The first one? Yeah. No, the desktop. You see on the top, parent. On the top. Yeah, the parent. I This mean one. the computer, which is the text. Yeah, scan for the hardware changes. Okay. So have you applied the device because it is now showing generic Bluetooth radio. So you right click on this and you click on the update driver. Search automatically. I have the CD drive. They also provided. The best driver for your device are already installed. Okay. Now you do the right click. Now it is not working. If you have a CD, you insert that. Now we will do it from the CD. So you insert the CD. So then you right click here. Then you say update driver.
Uh, Yeah, run the Run setup. setup AX. Yeah, that will be the best. Because the driver sometimes is not found on the internet, so it is better Mm-hmm. to install it from the driver CD of the headphone, speaker, camera. Sorry, actually in between we are. See, this is a new laptop, so it is for the first time it will be like that. So a lot of things will be installing step by step. Sujoy, I received that PM book slides and all that. Hmm. It is not the book, right? The PM book 6 is different, right? Yeah, I'll just tell you that what is the book and what is the book and the slides. So just click on this. See, PMBOK is basically it is a very detailed book, Right. very detailed. Now, what is the utility? Project management body of knowledge. It's a practically utility is for the project managers when they are managing the project. If you're managing the project, if you're stuck somewhere, Mm-hmm. and it is good as a handbook, but it cannot be understood by a person who is totally new. I understand. The first time you have to undergo the training so that the okay, well, let us first complete this. Next, I accept. Next, discover mode on. Yeah, this is fine. Laptop, laptop, select laptop, laptop. Next. So the PMBOK is basically the framework. It is the foundation on which the exams for CAPM, PMP, PGMP, PFMP. PFMP is the portfolio management. They are conducted. So it is very difficult to read and understand the book in the beginning because of the details. So that is why we conduct this 4 days training so that we can crack the core concept. And it is a guideline from the PMI also. PMI says that when a person is going to take a project management test, Mm-hmm. he should take a test in a knowledgeable way so that he will have a positivity toward the profession of the project management. Right. It's taking so much time. Hello? Yeah. Acha, okay. So that is why we are conducting this training all over the world. It is a standard thing to conduct this training so that people can take the test in a knowledgeable way and they are feeling positive about it. They're feeling good about it. Because what happens when a person is working in any industry, he is gaining experience by, he is gaining knowledge by experience also. Yeah.
Correct. I think No, just wait. No, add fine. Bluetooth. Yes, this is fine. So you add it. So Bluetooth, yeah, pen, audio, yeah, this is fine. So if your headphone is on right now, it will be able to find it. But if it is not able to find it, then what you have to do, you might have to restart your Windows. Mm-hmm. Bluetooth थोड़ा सा परेशान करता है शुरू में. Mm-hmm. But once it is set, then it is very fine. I think I need to use this one. Wait. See, if it is turned on. So see, so here, what you have to do in the folder here, just in the There are two Bluetooth. Is there one? show Bluetooth devices, add a Bluetooth device. So Bluetooth and the I other. think this dongle. Yeah. So where is the dongle? Just check. Okay. These are the Bluetooths. Okay. Is on discoverable. Add wireless display dock. No, you select the audio device only. Pens. Yeah, the first one is because it is the audio device only. Because as far as I feel, it should be disc. Anyhow, no worries. So let's continue. I think it will not happen. I think I need to check maybe after the training. Normally it connects everywhere, but I don't know why. Okay, let's leave it. Okay, we'll do it later. No, it's today we'll continue as it is. But I think it's removed out of here. Update the scan for yeah. So what is the Bluetooth radio? Is it your Bluetooth device? It is identifying as the radio. I don't know. Yeah. So this is installed. This is the working because this I believe it came only after you connected that USB. Right. So I think it is the Bluetooth radio. Now you just check your headphone if you can hear something because you will have to play some music on your No, system. actually I can hear from desktop itself. Or maybe the issue is like this call I have selected the desktop sound. Just you can just go to the YouTube and click anything. I think it's here only. So now you are getting it in your headphone. Open sound settings. Choose your input device. Yes, just check. Choose your input device. No, that is for the mic. Sound we need to activate Windows before you can personalize your PC. Just choose your output device. Realtek high definition. Yeah, so that is fine. You need to activate. Have you activated your Windows? Have you activated your Windows? Yeah. So then, why is it saying that you need to activate Windows before? Okay, you click on the right side, just check Bluetooth and the other devices. Why is it saying that you need to activate Windows? I don't know. Only they gave me activated. I don't know actually when I.
Okay, anyhow, let's leave it right now. Yeah, for the time being, let's leave it. See, if you have the headphone cable, you can attach a cable also. The sound will come directly into the headphone. Actually, it has two ports, two different ports, because it is all in one unit. So it's like, it's not exactly laptop, it's all in one, that desktop and like CPU comes together in one screen itself. Okay, I got it. Yeah, so it has actually two ports. So when I connected the headphone, it has two ports, different for mic and different for this one. But I can connect two. One I can use for speaking and one I can use for. See, normally what is happening that your headphone, your Bluetooth headphone can be connected by the cable also. That is the audio jack cable. So it is provided just in case you don't want to use the batteries or you have run out of the batteries, so you can use it. So if you want to use it in wireless fashion, you can switch on to the Bluetooth. So that's fine. I think your speaker is also fine. Speaker is good. It comes with a speaker, this system. Or what you can do, you can connect the cable. Yeah, that is available now. So if you connect the cable, it will be fine. Hello? Yeah. Okay, so now is your headphone or is it the speaker? Dolby Theater sound. So basically, headphone means that whether you are connecting from the jack or whether you are connecting from the YouTube. So Okay, sorry, where we were? so just see that if you can connect the cable, if you want to hear it in the headphone. But I think the speaker is good. Otherwise, the speaker which has come, can Yeah, now it is. There's no issues, but I thought like, okay, let's have some privacy with the things and all that, because. so we'll fix it in the break time. If Yeah, you it's okay. Yeah. I don't know, you had bought the system. Otherwise, I would have got online yesterday. Fix it. Just don't worry. I'll fix it No, anyway. it's okay. No, it's not. So let us get into the Primavera. Okay. Okay. So Yeah, we are here. okay. Now what we were doing, that we were into the admin. Just click the Admin admin. and We were into the admin preferences. preferences, In and the we preferences, we were into the finished the time ID periods. length, and Time we were periods. time periods So time period. So this is clear. Earned value. I was and value. explaining to you. Okay. So activity percentage complete use. See this. Remember this formula which is selected here. Hmm. Activity percentage complete. Now this is the standard formula, and this is what you will learn as part of the cost management also. And it is ETC is equal to remaining cost for the activity. This is exactly set as per the PMI standard. Sometimes the project manager want to see something different. Then we will learn the cost management earned value. Then we will understand what is the importance. But normally we go by the normal, so which is already set. Now we will come to the reports. In the report, there is a setting. So here you put something. Here you can put report created by Vishal. Remote. No, report created by Vishal. Report. Report. Report created by Vishal.
And in the footer label, so you can put hash the name of your company, because what will happen that once you see it placed there, then it will give you the idea that what is the setting goes to which part of the page. Hmm. So you replace it with the name of your company. Name of the Company. So whatever is the name of your company, you can okay. just remove the Oracle Primavera. Okay. Yeah. Fine. Now we come to the options. Next is the option. Next panel below the report on the left panel. Okay. By calendar WBS. Yeah, this is fine. Now do one thing. Do you see this URL? PC's professional online help URL. So Hmm. you copy the whole thing. Copy the whole thing. This complete URL. You go into the box. Control C. Now you go into your Chrome browser. Yeah. Now you open it there. Hello. Yeah. Good morning. Hi. Yes. Speaking. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Actually. Okay. Okay. Good. Good. So what you can do? Just I'm actually in the middle of a training session for the Primavera only. And what you do in the WhatsApp, you put your name and the mail ID. I will just get back to you in the break time, right? Okay, thank you very much. Okay, okay. Okay, now I'll just tell you that what is the benefit. You do a control D here. Control D. Yeah, control D means that you will bookmark it and you will create a proper folder for this, and you will say choose another folder, and here you will say new folder, not like this, but on the bookmark bar you will create a new folder, Primavera. Okay, and Hmm. save it into this. Now, how to get this? So if you click here, Hmm. so you will see that bookmarks show the bookmarks bar. Yeah. So in the bookmarks bar, so where is the Here, bookmarks bar? here, I can we can see here. Okay. In this one, we have to. This is my bookmarks, but folder here. Bookmarks Oracle bar bookmarks. should, yeah, Oracle Primavera. You click this, it will come. Now, what is the benefit of keeping it here? The benefit is that because this is the source from where all the help regarding the software is coming directly. But Hmm. once you have shown it to in the software, you will not remember it. Hmm. 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 कहाँ पे Hmm. जाना है सॉफ्टवेयर में ठीक है ना so Okay. even without the software you can read this sometime. Okay, Hmm. if you read this sometime, it is a very good thing to read, but this is not relating to the project management. This is relating to the upkeep and management of the data, import, export, administration. It is good to know. Okay, so some of the basics I will also teach you. So I always ask my students to get outside in the browser so that they can get to it instantly, because every day we are using the browser. Okay. That's a best practice. Rate types are standard, so that's okay. We don't touch that. In the industry, we will select. I believe you remember the notice. It says that you select the proper industry type. So I believe your industry type is engineering and construction, the first one, Hmm. right? Hmm. So So you we can select touch that the one. utilities, oil and Yeah, gas. yeah. So which one do you want to use? Yeah. Utilities. Yeah. So you select it. Click on the close. Okay. Yeah. Now this will be applied when you restart it next time. So that's okay. Okay. Now what we have done that we have set up certain preferences. Now we will go to the admin.
And now we are going to check the admin category, which is a master data. So you click on this. Baseline types is fine. Expensive category we need to create. Baseline is okay. So I'll just tell you that what happens that see, in a company, when we are going to plan a task, so for the task we need certain expenditure. So which are called the planned cost. So see, the cost is coming from the resources, from the man hours, from the machine hours, and also from the material quantity. But there is a cash expenses, so which is used for getting the work done by external resources. Who is an external resource? A transporting company, a subcontractor. So for them, we create the expense categories and we put the planned budget into the expense category. So for this one, we need to add one. So one category which you can add is the transport. You click on the add transport. Transport. You click on the plus button on the right hand side. Okay. So you write the word transport here. Okay. Now you move the transport to the top. Don't keep it here. Why? Because so that you remember that you created it. Now there is one more thing that we use in India or maybe another part of the world. We can add one thing called the staff welfare. Now what is staff welfare? It is a planned expense for on-site welfare of the staff, like chai, coffee, samosa, like that. So you can add this also. So you can put the staff welfare. Sometimes people need to be cab dropped home, so we can include some staff welfare, WEL, welfare, right? Okay, this we can use in the expensive category, planned expenses. So very soon you will see the utility. Now come to the next is the WBS category. So WBS category is according to the PMI, initiating, planning, controlling, monitoring, executing, closing, which is fine. There is no other category. Then we come to the document category. Come to the What is the use? This is only the breakdown yeah, categories. breakdown. We can use that this work breakdown structure is pertaining to this category. Okay, so Suppose when we are once we so create any WBS, we can assign any of this category. हाँ कि भाई ये किस कैटेगरी है अभी ये जो WBS है ये इनिशिएटिंग का है या प्लानिंग का है या कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग का WBS है इसकी कैटेगरी क्या है ना so that gives us a better understanding of the project. So So this this is is related to, according you mean like milestone, like start milestone, finish milestone? no not for the start milestone but it is for the logical grouping. Actually work Logical. breakdown structure is the WBS is for the logical grouping of the task of a particular type or a category. So that is to classify it further under the project management. So we say that these four WBS, they are of the initiating types. These another five WBS is of the planning types. So they're belonging to the planning category. So when I look at my project from the top level, I can drill down. First, I will drill down what I'm doing in the initiating. I might be seeing three WBS. When I drill down into the WBS, I will be seeing my task like that. So this is the top level of the project management. Now we come to the document categories. Yes. Now just look. Do you see any document category which you use in your company which is not here? Just have a look. Requirement specification, or if you have the design or anything like that. There are so many, so yeah. Like transmittals, just example, transmittal of any So if, procedures. if you think that you will be adding into the system a, a document, so you know what you can do. You create the category by clicking on the add, like project management document or high level design specification. So if you feel some document category is not mentioned, you add it. You just add it and take it to the top.
and make the C as the capital and move it to the top. Yeah, because if you move it to the top, you know that it is created by. Then we come to the document status. Suppose if you are processing any document through the system, so one status which is not mentioned here, that is the rejected. So you can add the rejected status here. Rejected, huh? Yeah. Then we come to the risk categories. So risk means any unforeseen incident in the project which has a negative impact. So the risk can be in the project management. So, these are the categories which are very, very common, applicable to almost all the projects. And then we can add more to it. So for the time being, we can keep them as like this. So we come to the notebook topics. In this, one of the category which is mostly missing is the general. So it is when we are adding a note to a task, we can select that what kind of note we are adding. So a lot of notes are here, but one is missing is the general notes. So you add here general notes. General notes, you write the general note. And you move it to the top, shift up. You see this button shift up on the right side? Yeah, general note. We Now, have to show it everywhere. yeah, now if there is anything that comes to your mind later, so we can basically we can come and fix it. So we need to use general notes, constraint. We use this very frequently, and so if I feel that I need another category of the note, I can add it. We So can edit mostly here. I will add into the general note only. This tick mark is only the places it will be shown, right? Yeah, it will be shown in So even I EPS put project. some notes in activities, I can see the same at the Yeah, APS level yeah. also. So if you scroll right, you will see more places where you can add. You can add it at the project level, WBS level, activity level. At all the level, you need the general notes. But then there are certain notes you don't need at all the level. Just like if you see the resource of brokering, you don't need it in all the levels. You need it only at the activity level only. Okay. So now we come to the units of the measure. It is very important. Now, do you see kg? So you have to add kg, liter, meter, running meter, square foot, cubic meter. You need to add all these. You just add them. You add them. Where is coming? In my laptop? It is connected somewhere. I think that is why it is not coming. Connected mean in the sense means. Means because I have multiple devices here, it is connected with some other mobile or laptop or somewhere. That is why. Okay. Oh, your headphone. Yes. Okay. So what you can do that just go into your mobile Yeah, yeah, yeah. and you switch off the Bluetooth from your mobile. Then I believe it will free up No, the. no, actually, it's not my mobile because I have two another laptop and two another mobile, my wife's mobile, one extra spare mobile. So I need to No, check. if no, you see if those mobiles are not in the range, Yeah, then it will connect to the nearest day device. Just do nearest one one I thing. know, but yeah, but I don't know why it started playing music, which we Yeah. need. So it means that someone is playing the music but is not able to hear in the speaker. It is coming to the headphone. Maybe. Yeah, they have switched it off. Maybe one of the unit here, I have another tablet there.
but it is only off. Okay. Yeah, let's see. Okay, next. Okay. So what we are going to do, and so we are going to go into the measurement of the material, and the units of the measurement will be created by us. So just go into the Primavera and create in the abbreviation you add. You click on the add. Which one? We should add. Now you add kg. You put K and G in the capital, and in the next column you write kilograms. Okay. Okay. Now you tell me, do you use meter, liter, cubic meter, and all that? You need to add all that. Okay. So you want me to add now? Yes, yes. Because first we will set up the environment. Na? So Meter. only then we can use the software properly. So it is mostly the one-time job, but once in a while, if you are thinking, if you feel that there is a new unit, it has to be Meter. added, so you know you can add it. So that's not a problem. What else? Liter, meter, kilometer. Mm, each Running meter, cubic meter, cubic meters. Okay. yeah. So there is something called inch dia. Yeah, They you will. add yeah cubic meter, yeah dot with They and will. put a Dot will capital not. M. Huh? You put a capital M, M capital, yeah. Yes. But they Now will you accept put the dot. now. Okay. So just put space. Then you put Uh, space. Cu space M. cubic meter. Inch dia. ID. Yeah. So it is used for the piping work. Yeah, piping, welding, and all that. Yeah. Inch dia, cubic meter. And what else do you think? Do you use the running meter? Sorry. Running meter, Running centimeter you use? Yeah, meter. fine. Uh, You can add RM for the running meter, and it should be recognizable by all. See, in the meter on top, I'll just explain to you. In the meter, you put M, capital M, TR, and in here the exact word is TR. This is the length. METR means the instrument. okay, yeah. Okay. Everywhere I need to change, I think. So if you think that if it is mostly okay and you have got most of the units in place, then we can close it. And later, if you feel that you need to add a unit, okay, for the measurement of the material, so you can come back. So for the count, we have got each. So for the count, we have got each. So that's not a problem. So we have, you can Numbers. We have numbers or each, right? Okay. Yeah. numbers is each Each means is same. that Yeah. unit single matlab count. Okay.
Sometimes people put count We have CT. So then sometimes people use the dozen. dozen, So yeah. yeah, maybe certain items are coming by the dozens in the packing. So packing of the electrodes, the welding electrodes, I believe they come by the dozens, 2 dozen, 3 dozen, 6 dozen, like that. Box, dozen, kind of, yeah, we can. So you can create box also. You can create box. Okay, you can just write a BOX box and BOX box in both the places. Yeah, so it is the per box cost you can plan. Very good. Now you just close it. So we have created the master. Okay, so now Just one question, sorry. yeah. In the admin category, baseline type. Mhm. There's no, what are the, I mean, uh, like these are the fixed baseline type, or we can add No, into this you one? can add the baseline type. You can say, see, many times what happens that in one company there are various engineering disciplines: civil engineering, electrical engineering, mechanical. So in the same project, if you're having a meeting, and after the meeting you save a baseline, you can then categorize that baseline as civil engineering baseline, mechanical engineering baseline. It is just to identify that what kind of baseline you have done: initial planning baseline, customer sign off baseline, management sign off Mhm. baseline. So sometimes And the you will same we do can the initial assign at the planning same. with your team. Okay, so then what you will go to the management and show them. So management will say, make some changes. So after they make some changes, you will baseline the project from their side. Then what will Mm-hmm. happen? Then you will show it to the customer. Then the customer, if he suggests any changes, then you will Mm-hmm. save the another baseline, customer sign off. And what is the final baseline? The final baseline is always the customer sign off baseline. Mm-hmm. What the customer is expecting you to finish the project by this date. So in the customer sign off baseline, we may or may not show the price, but the time, that is the schedule start date, finish date, should be always visible, Correct. No, I right? understand. Like, so just example, if you're creating new projects, so it is initial planning baseline. Then once it is approved, you can say customer sign off or management sign off, Yeah. So or you like, can categorize the baseline. So wherever you are creating the baseline, you hmm, have the option to choose that what kind of baseline is that. hmm. And this mid project is like if you change the baseline, like after in the project, Mhm. then you can assign as a mid project Yeah, status baseline. made project status baseline. And Okay. what if it's just like some experimental? So you can create that this is you can say draft baseline. You create one. You create a draft baseline. You take it to the top, right? So that you can remember that it is created by you. Now you come to the close. Okay, so we are done. So we have created the master. Now there is a very important application here. One of the important application is the user preferences on your top panel number one, extreme right. Top panel, extreme right. This, click this. Now what do you prefer? So you have said this. Okay, time units. Okay. Now I'll just show you here. Just go to the time units. See, if you look at the duration column below, just one second. Let me move this toward the right. You see in the duration, one second. See, in the duration, you are seeing just a number, 944, 433, the remaining duration. Actually, the duration should be suffixed with D. D, yes. Okay, now what happens in the beginning, it is not there. So you would select the checkbox, show duration level. And Hmm. also, if there is a fraction of the day, so that should be shown as the hours. Hours, okay. And wherever there are the hours, you should show the H, that is the label. See, it will now display like this example. Mm-hmm. Okay, so it is to be said like this. Now resource unit time format shows percentage, shows the duration per day. So it is the simpler format is 4 hour per day, 8 hour per day, 6 hour per day. Okay, so
This is to be, you just let this as default. Now we come to the dates. Now in the beginning, it So, is, just an example, if you select that option, so percentage, then it will show the progress on the base of time, right? no, 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 no. What it will show, see, whenever you are creating a resource, Hmm. so it is going to ask you for a default. When I apply this resource, how much you want to utilize. Hmm. So you can say 50%. So 50% would mean that this would be utilized at the rate of 4 hours per day. But Hmm. Hmm. majority of the people, they get confused by the percentage. Hmm. They say, sir, we are not able to understand the percentage. So that is why even Primavera as a default, it is recommending that you show as 4 hours per day, Hmm. three Hmm. hours Hmm. per day, 6 hours per day. It is a simpler format understood by most of the engineers. So for the timing, you let it there and you will find that you will agree that, yeah, this is correct. Hmm. 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 This is better. Okay. Now you come to the dates. Now in the dates, so right now it is showing you in the date column, it is just showing you the date only. Now, let me do this thing. Let me click here. I'm clicking on the 12 hour of the format and I'm showing you the time along with the minutes. Now, why I'm doing that, I want to do the calendar setting because the first thing is the Primavera setting and second thing is the calendar setting. Why? I'll just tell you. In the project, there are three project constraints: time, scope, and cost, right? Hmm. So Hmm. the time is the greatest constraint in any project, any kind of project, any industry. Every project manager will say the time is not enough, the time is short. Basically, the time is calculated based upon the engineering standard operating procedure in every industry. So if you ask in the IT industry, any project manager, he will say that when does the client want the delivery? He says as soon as yesterday. So it means that the client came so late. So the late is going in the marketing, campaigning, sales. Now, when the project lands up, according to the engineering calculation, it is not giving you the sufficient duration to work because the project is late. So that is why we want to set the time in such a way that we should be in first complete control of time. Hmm. So to set that, we will first understand that how does it display the time. So to display the time, basically the date plus the time will give us understanding whether we have set the calendar correctly or not. So once I set this thing, then what happens if I close it? See, you see that it is showing Hmm. you the time. Hmm. See, for me as a project manager, the project cost can be increased by my boss. If I talk to my boss, he can increase the budget. Now, do you see there is something wrong here? The project duration is in between the start and the finish date. Can you fix it? Sorry, Can you fix that? Can you make the project duration go to the left of the start? left here. Finish should be toward the right of the start. So like you want me to set the columns? Yes. So start, finish, and then Then start, finish, then the remaining duration. hmm, then No, no, here. okay. Yeah, like this. Okay, start, Hmm. finish, total activity, baseline project duration. So you take the baseline project duration after the project name. After the project name. Okay. Yeah. Yes, correct. Now this is fine. Now you have to save this layout. You go to the layout and save it because you just made changes to the layout. Save as. Save. Save as means new and Okay. So it is already we have to keep yeah, the same name yeah, and save just okay. yeah. Layout save. Yes, it will save the whatever the configuration you have changed. Now, do you see the time here? It is showing you the AM PM. Okay. Now these are very odd times: 1:35 p.m., 10:40 a.m. One that is due to the Hmm. calendar which is controlling it. Now you are seeing the hours also: Hmm. 5:54 day and 1 hour, 4 hour, 5 hour. So that is basically coming from the fraction of the time we utilized in the planning.
Now we are going to understand that how do we create the enterprise project structure. But before I go further into the Primavera, I want to show you the project management first. Okay, so I'm going to shift to my screen and I want to show you the concepts of the project management. Then I will come back to the Primavera once again. So I'm going to shift to my screen. Okay, I'll stop your sharing and shift to my screen. Okay. Okay, so till now we are fine. Okay, so now I'm going to show you my screen. So I believe that you can see it. First, we will understand certain concepts, then we will come back. So normally I don't use slides. Basically, the slides are given to you for your reference. Okay, so what we will do? Okay, see, basic. We want to understand introduction we have done. See, we will start with this project management concepts here. It is very important. This thing, project management concept. Why? Because if I do not understand the concept, then how do I utilize the software which is for the particular field? Okay, first I understand. First, I need to understand what is the meaning of the project management concept. Then I will find that Primavera, yes, it's good. So we have done this into introducing the Primavera interface environment. Then after the project management concept, we will go to the OBS, EEPS, and in details. So let us go into the project management concept. So first question, it's not a question, it is just a feeling. What you feel is a project. What do you think is a project? You are asking me a question. What is a project? I'm just asking you the feeling. Okay. I think project is a kind of group of activities and with a certain goal. It has kind of um, if you have a goal, like, and you want to do something, so uh, you have a group of activities, which is kind of a project. Yes. So, it is very clear that there is a goal. That is why we undertake the project. Now, what is the goal? Goal is to make a bridge. Goal is to make a building. Yeah. The Yeah. goal is to launch a rocket. The goal is to make a movie. The goal is to make a software. The goal is to make a road. Okay. The goal is to create a vaccine for the COVID. That's a project. And all these projects, they need some understanding of the constraint. So what is the constraint? Because no project will come with the infinite amount of time. The client never gives you infinite amount of time. Yeah. How long can the world wait for the COVID vaccine? Tell me. So many companies, they have set internal deadlines for their research staff and scientists. They say, no, you come back to it by the June 2021. So many of the scientists say that it takes minimum 3 years to make a reliable vaccine. Because if the vaccine is not proper, then the vaccine can cause damage. Okay, so there are things for everything. So we need to plan for what is the project. So project is basically the achievement of a goal in a limited time. So we need to understand what is the standard definition of the project management or the project according to the PMI, which you will learn in the PMI also, in the PMP training. So project is defined as a temporary endeavor undertaken to create a unique product or a service. Now, why it is called temporary? It is a very simple logic. See, once the achievement of the goal is complete, the work in the project comes to an end. Correct. And then we release the resources. Resources are men, machines. We release them to other projects. The materials are consumed. But men and material, they are not consumed. Okay, so they are released to the other projects. In our IT industry, if there is no other project, we say people are on the bench. Okay. Okay, so we say that the machine is on the shelf. Okay. So we say people are on the bench and this system is this server is free. We say this server system data center is on the shelf and these 10 people, they are on the bench. So they're waiting on the bench. Literally in the earlier times, people would be waiting on the bench for their clients. So that is why we use the same terminology. So the goal is achieved and we call it as the natural termination. So every project manager wants a natural termination within the given constraint of time and budget.
Mm-hmm. right? Now, how temporary? How much is it temporary? Is temporary? Temporary can be 2 months. Temporary can be 20 years. Like if you look at the Delhi Metro is going on for 20 years. Now, what Mm-hmm. happened when Delhi Metro was created? It was created for Delhi only. Now, Mm-hmm. what happened along with the Delhi? There are adjoining cities because Delhi is a city which is sandwiched between the Uttar Pradesh and the Haryana state. So, so the Delhi is having two boundaries, one with UP and one with the Haryana. So there are cities, Gurgaon. Now Gurgaon people said we are going to Delhi, Delhi people coming. So please just stretch it to Gurgaon. So Delhi Metro was stretched to Gurgaon. Then Delhi Metro was stretched to Faridabad, which is also in the Haryana state. Then from this UP side, people also started pulling the tug and war. Okay, they started to pull and tug. So the Delhi metro was stretched into Noida, Ghaziabad, Greater Noida. So I live in the Ghaziabad. I have a home in the Delhi also. So when I was in the college, so I saw that the Delhi metro was being created. So later when I went into the job, I could take a ride and it was good. So when I shifted to the Ghaziabad, so here it has also come. So the project is ongoing. But one day when all the routes are completed, the project will stop Mm-hmm. and the outcome of the project will be handed over to the operation team, client team, production teams, though they will use it. Now where does the production team come? Suppose if you are the the design manager in a car company, so you create a design and you test the prototype and you do crash test and compatibility test, environmental test, okay, safety test and all that, and the design is completed. So what you will do, you will hand over the design to the production team. So what the production team will do, they will produce the same model for the consumption in the market. Mm-hmm. So that is the job of the project manager. He is to achieve a strategic goal. Okay. Okay. So for that, he needs to work within the constraint of time and he needs to work within the constraint of budget. He needs to complete the work as well. So we represent this as a triangle. So the time has got two kind of the definition. Have you heard of the duration? Okay. Have you heard of the word called the schedule? Yeah. So can you tell me that what is the meaning you feel of the duration and the schedule? What is the meaning of duration? What is the meaning of the schedule? Duration is a time period, and schedule is a plan, kind of like how you are using that time period, or like duration kind of, See, or like your for like particular like task you have fixed for certain time, like when you want to do that or finish that. yeah, it's very simple. I say that I'm going to watch a movie for 3 hours. Yeah. So 3 hours is the duration. Then my friend asked that which show? I say I'm going to watch the 6 p.m. to 9 p.m. So what is the 6 p.m. to 9 p.m.? It's a duration. That is the schedule. Schedule. Okay. Yeah. From the schedule, I can derive the duration. I say 9 Duration. p.m. Yeah. minus 6 p.m. It is 3 hours. 3 years. Right. From the duration, I cannot create the schedule directly unless and until I'm putting the value into the Primavera. Mm-hmm. So once I put the 3 hour into a task into the Primavera, then Primavera will look at the predecessor of the task. Mm-hmm. So if the predecessor is not there, it will start the task from the start date of the project. Mm-hmm. So start date of the project is entered by the project manager only once. Then all the tasks will have their schedule created from their predecessor activity. Mm-hmm. You as an engineer, you will be thinking only in terms of the engineering duration, that how many working days it is required to do this task. And the Primavera will create the schedule for you. The Primavera will jump over all the holidays, weekdays. It will go over the weekend, and then it will find a start date and the finish day, and that will be utilized as a baseline. So one aspect of the project is time, another aspect is the cost. Now, what is the meaning of the cost and what is the meaning of the price? You have, I believe that you have heard both the words, Yeah. cost Yeah. and price. Guess. Right. Give me a wrong answer. Interact with me. This is a I classroom training.
Cost is direct cost, and price it with inclusive of indirect cost. I mean, kind of extra other costs. Just an example, like for like client project is a cost. Just an example, and their indirects and all that, that will become price kind of. And like just an example for the contractors, like the cost is like which they are, which the actuals, which they are spending kind of for directs, or like for them what is the cost is like removing all the extra overheads and things, then it will give a price. Okay, I will explain to you. It's very simple. See, cost and price, both of them are the amount of money. Correct. Both of them are the amount of the money. See, one amount of money is used for paying the people and for utilizing the machines, Mm. for the utilizing the material, Mm. the quantity of material, quantity of time that we use from the people and the machine. So Mm. that has to be paid for. So that amount of money is called the cost. Cost, yeah. Cost is the amount of money we use to do the work in the project. Mm. And cost is used for paying people, machine time, people time, machine time, material units, and subcontracted work. That is called the cost of the project. Right. Now, what is the price? Price is the value creation of the outcome. Yeah. Suppose if I buy 100 liters of milk and I convert it to the curd, so will I get the same amount of money or more? More. More. Why more? Because I'm creating value. Because the value of the curd is more in the market than of the milk. Because many people don't know how to make curd, or maybe they want it as a convenience. So they will pay me more. Oh, after some time, what do I do? That I go to some trading school. So from there, I learn that how to make butter. So Mm. from the same milk, instead of the curd, I make butter. So will I get more money than the curd? Yeah, card will give you more money. So that is the price. The price has increased. So what is the price? Price is the index of the value. Mm. Price is the value that you create by creating some product or a service. Now, after some time, so I go to another training center. There I learned that how to make chocolates Mm. out of the milk. So they teach me how to make chocolates. So I make chocolates, right? So will Correct. I get more than the curd and the butter? Right. So yes, right? So Yes. chocolate is better to make the chocolate than the curd. It's fine. Correct. In the beginning, to make the curd is simple. You go to the YouTube and they will teach you how to make the curd. You will make curd. Right. Maybe you will go to the YouTube, you can make butter, but first time you will fail, then second, third time you will make it. But if you go to the school directly, you can learn it directly. Correct. Okay. But if you want to make chocolates, you cannot learn from the YouTube. Right. So for that you have to come to me. So I'm here, how to make the chocolates. Okay. So from the project management and Primavera, we are going to make the chocolates. Okay. So chocolates are what? They are more value. That value is indexed by an instrument called the money. So money is an instrument which we use in the human society to exchange the values. So there are two kinds of values we are exchanging in the human society. One is the goods and one is the services. Okay. I'll just tell you how to understand this thing. I go to the doctor and I tell him my ailment, and doctor writes me a prescription and I pay him the money. So what did I take from the doctor? Service. Service. Now I take the prescription, go to the pharmacy shop, and I put the prescription on the counter. I say nothing. Mm. I put it on the counter. The counter boy takes it and he gives me the medicine. I pay him the money. And what did he give me? Resources or like material. Goods. 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 Yeah. So, two things we are exchanging in the human society. So, exchange of the goods and the services is facilitated by an instrument called money, right? Correct. Because without the money, we cannot exchange goods and the services. How do we index the value of what we have exchanged, right? So, that is why human beings, they have created an instrument called money, and money can be in the paper format, money can be in the gold format, and money can be in the number format in your banking, in your wallet, Paytm wallet, Google Pay, in any kind of wallet, it is a number. So that number
is basically indicating the value that you have created. So the value of a project is the price of the project. Price of the project is set by whom? Set by the marketing people. Marketing people, they project the services of a company to the client. They say that our company is good. Our company has got qualified engineers. Our company has got PMP certified engineers. Our company has got Primavera knowing engineers. We have done such big projects, that project, this project, and we have created bridges, we have created highways, and we have created big buildings, impressive buildings. So based upon that, they create a value perception in the minds of the customer. And after creating that perception, they get the project quote. The project is, they get the project quotation final. So that is called the price of the project. Then from the price, we calculate an amount of money backwards. Suppose I quoted the price at say 100 rupees. Then my boss says that, see, the project should make minimum 40% profit. So then I will calculate backward. I see that done, 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 done. Then I find that I'm making a profit of 45 rupees. I can finish the project in 55 rupees. So it means that it's okay, it's good. Suppose my budget is 60, even my boss will say good. So yeah, fine. Because I was expecting a profit of 40. Now that amount of money, the 60 rupees is called the cost of the project. Cost management is done by the project manager. Price management is done by the marketing and the sales people. They try to push up the price so that there is more room between the price and the cost. Now, what there in the price and the cost? What is between the price and the cost? Profit. Profit, yeah. And profit comes from where? From the value. If I'm creating value, I'm creating from the milk, I'm creating the curd. So what is the curd? Curd is another value. Correct. From the milk, I'm creating butter. Butter is another value. From the milk, I'm creating ghee. So that is another value. Okay. So these values are indexed by money. So that unit of money is called the price. So price is the amount of money paid by the client, and cost is the amount of money utilized by the project team to do the work of the project. Okay. Is this clear now? Right, clear. Both of them are the amount of money only. Money only. Now, what is direct cost and what is the indirect cost? The direct cost are the resources directly working on the project. Tasks. Which creates revenue. People, machine, material. These are, and the contractors, they are called the direct cost. Now, what is the indirect cost? Indirect cost is the building where you are working, the accountant, administrative staff, staff bus driver, sidecar driver. Okay, you know, these are the indirect costs. Indirect. Yeah. Indirect cost is electricity cost. Everything. Direct cost is the building Equipment. where your company is housed. So that is the indirect cost. Yeah. So what is the direct cost? Direct cost is the resources utilized directly on the task. Indirect cost is the cost which is incurred in supporting the project. Supporting the project, yeah. तो support staff रहता है ना आपकी कंपनी में, accountant होगा. Yeah. Accountant है, then administration people are there. Okay. Then a lot of drivers are there. I believe they are driving people from site to office, from office to home. So, you know, they are supporting the project. Suppose if the people cannot be moved from home to the site, will the project work can be done? No, it can't be done. So these people have to first reach the site and then they will start the work. Even in the airlines, the pilot has to be driven from the home to the airport. Every airlines has a mandate the pilot will be driven from home by a cab driver. They want a fresh pilot in the plane. That's a mandate. So, you know, that is why they always send a cab driver to the home of the pilot 1 hour ago. He goes and stands there. He says, sir, I'm here. So the pilot will get ready. He will sit relaxed in the cab. So pilots, they are not allowed to drive before and after the job. They can drive there in their personal life on their holiday, but not on the duty. You know, that's a rule. That's a rule for the safety. So similarly, that driver who is driving the pilot will be the indirect cost. The direct cost will be the air hostess, the fuel you put into the plane, the food which is being served to the, and maintenance of the aircraft. These are called the direct cost. Correct. Which is directly getting the job done. So in the project, the direct cost is the resources applied on the task. Right. That is direct cost. Generates the revenue. Yeah. So cost is the total cost of the project, which can be calculated by the project manager by utilizing Primavera.
Hmm. We will look at the left side. In the left side, there is scope. Hmm. And along with the scope, I will mention a word, requirement. Have you heard the requirement also? Requirement, yeah, requirement. I mean, Right? different Now, way. I heard that. now Yeah. can you guess that what is the meaning of the scope and what is the meaning of the requirement? It is very important as a project manager to understand before we put our hands into the Primavera. Right. Uh, Normally, scope is uh, largely defined, but requirement is like particularly defined. I mean, like, okay, this is the scope. I need, we need to build a refinery. So scope is like, building a refinery, and requirement is okay, the products, which are the products, which is the outcome, exact outcome, particular thing that is becomes as a requirement. So it is more detailed when you say requirement. So either you follow certain standards and things for the to fulfill that requirement. But scope is like more kind of widely used, and requirement is like particular. Okay, this is my requirement. But like from the scope to the requirement. It's very simple. Yeah. It's not like that. It's not, but I'll explain to you with a story. There are six people, six friends, they go to the restaurant and Hmm. they sit down for a meal. Hmm. Then the waiter comes and he brings a slip like this, okay, and he notes item 1, 2, 3, 4, 5, 6 on the slip. So that is the requirement of the food, Hmm. right? He takes the requirement to the back end. Back end, there is a kitchen. Kitchen is manned by a person or a role called chef. Hmm. Chef is there. So what the chef will do, the chef will look at the requirement. He will read the item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then he will say, okay, fine. So you do the cutting, you do the frying, you do the blanching, you do the microwave, you do the blending. He will give the task to his team member, right or wrong. Hmm. So that is called the scope of the project. The total work to be done in the project is called the scope, and scope is directly proportionate to the requirement. Hmm. Hmm. If the requirement is big, scope is big. So the requirement simply stated is the wish list of the client. Client says, I want to have this product with this functionality. So Hmm. his functionality is the wish list. Okay. Hmm. So his wish list is translated into work, because if I don't work, I cannot fulfill his wish list, right or wrong. Correct. So that work is stated as the scope of the project. So Hmm. as per the standard definition of the project management in the PMI, the scope is the total work which is needed to be done to fulfill the requirement of the client. Hmm. Okay, now see this thing. Six people are already seated. In a couple of minutes, that what happens, that another four people joining. They Hmm. also come and they are also seated. Now then what happens? Hmm. So the waiter will be called again, and waiter will be asked to add four more items. Then one of the person will tell that please bring all the 10 items at once. Do not bring the 6 plus 4. Not like that. We want to have the meals at the same time. Hmm. Okay. Then the waiter says, sir, just give me extra 15 minutes. Okay. Hmm. To get this. Because the requirement increased, right or wrong? Hmm. Right. Similarly, the scope will increase. Right. If the scope increases, then what will increase? The time will also increase, Hmm. and the cost will also increase. Correct. Suppose if I do not give enough room to the time, scope or cost, then who will be the victim? Quality. Good quality. Yeah. अब क्या होगा कि अगर वही 10 आदमी का खाना 6 आदमी के टाइम में अगर वो बनाएगा तो क्या होगा? खाने में कोई कहेगा कि इसमें तो नमक नहीं है, कोई Hmm. कहेगा मिर्ची तेज है, कोई कह रहा है ये तो आधा पका हुआ है. Hmm. 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 That Correct. is the quality. The quality means the satisfaction of the client. Right. What is the functionality? Functionality is given by the client, and the performance level of the functionality is called the quality. Right. देखो एक टीवी है, उसकी functionality क्या है? To show the picture. Hmm. Now what is the quality of the TV? Sharpness, right? Hmm. Right. Sharpness of the picture is a quality aspect. Brightness, right? Correct. Correct. Color depth. आजकल आजकल कहते हैं ना कि कलर डेप्थ 4K, 8K, 2 million Hmm. color, 6 million color, right? Hmm. Hmm. That is the color depth. Then comes the also comes the contrast ratio.
The white to the black ratio is 1:20,001. So black is more black and white is more white. So that gives a very real life like picture, the contrast ratio. So that is the quality. What is the functionality to show the picture? Now, if the client looks at the picture, he says, oh, picture jo hai, ye to dhundla hai. So it means that he is not going to accept it. If something is not going to be accepted by the client, then the value is zero, right? So how does the client accept something to be monetized? देखो project की monetization कब होती है? जब client पैसा देता है. लेकिन client पैसा कब देगा? जब उसको satisfaction मिलेगी. और satisfaction का parameter क्या है? Acceptance का parameter everything, all this like quality. quality and all हाँ, that. अब quality को जो है कौन support करता है? Time करता है. Scope. Scope means आपने project में सारे step किए क्या? और कोई step कम रह गया तो quality में कमी आ गई. अगर पूरा टाइम नहीं दिया, अब देखो कंक्रीट को क्योरिंग में 28 दिन लगता है. अगर 28 दिन नहीं दोगे, ऊपर ही कुछ डाल दोगे तो वो गिर जाएगा, हो सकता है गिर जाए. और वैसे ही कॉस्ट होता है. So there is a cost of the fabrication, there is a cost of the quality also. Okay, because the amount of money you are spending on the testing, so that is called the cost of the quality, cost of the safety. Cost of the fabrication is the direct cost involved in the men and material and the machine involved in creating a part or component. Correct. But when you are testing that component, that is called the cost of quality. And if the cost of quality is not included in the total cost, then who will be the victim? किसको चोट पहुंचेगी? क्वालिटी को. और क्वालिटी को चोट पहुंची तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस नहीं होगा. और अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो उसकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी. अगर मोनेटाइजेशन नहीं हुई तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो. और जो ऐसी चीज बन जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? स्क्रैप यार्ड में डाल देते हैं. ठीक है, ये तो जो है ये रद्दी है. ठीक. अभी कोरोना के चक्कर में क्या हुआ? काफी सारा अखबार की कंपनी में स्क्रैप जमा हो गया. अखबार ठप रहे हैं लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं. पीपल आर नॉट टेकिंग. ठीक है. तो you know the newspaper is going to the news time. People are afraid they will catch the corona from the newspaper, so they are not buying it. So a lot of the newspaper is coming back in the evening as a scrap. So that happens, but that is not due to the poor project management. That is due to the situation. But if I am not planning properly in the project, then if I am not planning for the time scope and the cost properly, so I can have poor quality outcome. So prevent the poor quality outcome, so I use Primavera. So where is the time? Time is in the duration column. Correct. And time is in the relation. So when I put the duration and the relation like predecessor, successor, and I get the proper schedule. Correct. And where is the cost? Cost is calculated by the Primavera according to the application of the resource. Right. And where is the scope? Scope is in the work breakdown structure. Work breakdown structures. The work breakdown structure, I create the task. First, I create the work breakdown structure. Then the work breakdown structure is actually a container. And inside that container, I put the task. So when I put the task, I get the complete scope of the project, that what is to be done. So this triangle has to be kept into mind when you are using the Primavera. Because I want to do the project management with Primavera. It is not just about pressing certain button and I will impress the rest of the people around me. देखो मैं तो Primavera कर लिया. It is Primavera. It is the project management. The project should be in your control using the Primavera. That is the idea. Right. Okay. So now let's see that what else is there. Okay, this is very important to know also. क्या होता है कि आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, ठीक है. So you know what happened? The project manager says that we will not spend too much time on the planning. Let us start the project. थोड़ा सा प्लान करके प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट कर. अब क्या हुआ? When they start the work, they first do it, then only to realize and only after feedback from the quality, the testers, they say, sir, this is not right. So then the project manager says, okay, undo it and then redo it. पहले undo कर दो, फिर इसको redo कर दो, ठीक हो गया. अब यहाँ पे आपने जो है वो आउटकम क्लाइंट को दिया, क्लाइंट कह रहा है ओके एंड यू गेट पेड. क्लाइंट इज ओके, हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? आपने कहा नो, वी विल गिव द सफिशिएंट टाइम टू द प्लानिंग. अब जैसे ही आपने प्लानिंग को आपने सफिशिएंट टाइम दिया, प्राइमावेरा यूज किया, तो व्हाट यू आर डूइंग इज एग्जीक्यूट.
अब ये जो डू अनडू रीडू और एग्जीक्यूट में क्या फर्क है? एग्जीक्यूट और डू अनडू रीडू में वही फर्क है कि जीपीएस लगा के जाना और जीपीएस लगा के नहीं जाना। एक हाईवे पे जा रहे हो 40 किलोमीटर, सही है। अब आप जो गैस कर रहे हो कि एग्जिट लेना है नहीं लेना है। अब एग्जिट आपने छोड़ दी, अगली एग्जिट पे पता चला जी ये तो गलत थी, फिर आपने क्या किया, एग्जिट ली और फिर यू टर्न करके फिर आ गए, फिर उस एग्जिट से फिर गए आगे। अब एग्जीक्यूट में क्या होता है कि अब जीपीएस लगा के जा रहे हो, जीपीएस बोल रहा है गो अहेड एंड टेक द राइट टर्न फ्रॉम द 3 किलोमीटर, टेक द लेफ्ट टर्न फ्रॉम द 1 किलोमीटर, और अंडू नहीं है कुछ भी, आप स्ट्रेट जा रहे हो। सिर्फ आप ये मॉनिटर कर रहे हो कि भाई आप अपनी स्पीड से चल रहे हो कि नहीं, आप अपनी लेन में चल रही हो कि नहीं, आप सेफली जो है रेड लाइट वगैरह पे रोक रहे हो कि नहीं, एंड यू आर रीचिंग द डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर भी क्लाइंट खुश है, क्लाइंट इज ओके हियर आल्सो, क्लाइंट जो है दोनों केस में ये खुश है, ठीक है। अब इस केस में खुश कौन है? इस केस में मोगैम्बो खुश है, सही है, ठीक है। एट द एंड मोगैम्बो विल से मोगैम्बो खुश हुआ। अब मोगैम्बो कौन है, अभी ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए मैं भी मतलब मतलब मोगैम्बो के पास काम करता, और कुछ वक्त के लिए मैं खुद भी मोगैम्बो था। ठीक है, तो ये चलता है जिंदगी में। तो सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेल माय टीम मेंबर कि भाई देखो, तुमने अगर सीखना है तो मेरे से सीख लो। सैटरडे संडे को हम आते हैं, मैं ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो मैं बाहर सिखाता हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो कुछ लोग आते थे, वो सीखते थे, वो बढ़िया काम करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मेरे ऊपर के जो मोगैम्बो है वो खुश होते, वो कहते हैं यार प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट कर दिया, कोई क्वालिटी इशू नहीं है, क्लाइंट का भी एक्सेप्टेंस है। तो एक काम करते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है ना, वो मैं अब तुम्हारी टीम को बांट देता हूँ, वो तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट बोनस है, तुम इसको रख लो, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस इज द बेनिफिट। आप इमेजिन करो, आप कल को अपना बिजनेस चलाओगे तो आप कैसे चलाना चाहोगे भाई, नंबर 1 के तरीके से या नंबर 2 के तरीके से? बताओ, सच सच बताओ। नंबर 2 डेफिनेटली। नंबर 2 के तरीके से ना। आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि कोई भी आदमी आपका फालतू बैठा रहे और फिर आपको कहे जी सर मेरे को तो दिहाड़ी दो, फिर वो बैठ के वो बीड़ी पी रहे, तो फिर वो बैठ के जो मशीन को आइडलिंग करके उसने छोड़ दिया, मशीन चल रही है, डीजल कंज्यूम हो रहा है और मशीन कोई काम कर नहीं रही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइडलिंग ना तो ह्यूमन रिसोर्सेज की अच्छी, ना तो मशीन रिसोर्सेज की। वी कैन कंट्रोल दिस यूजिंग द प्राइमावेरा। So that is why we should plan properly and sufficiently and start the work. And when we start the work, we know that which way to go, and we can make small little adjustment by looking at the baseline. तो baseline हमारा क्या है, एक रोड मैप है कि आपने ऐसे ऐसे इतने टाइम में काम खत्म करना है, इतना यूनिट मटेरियल और मैन पावर मशीन पावर आपने जो है कंज्यूम करना है, और इतना पैसा आपने खर्चा करना है, ठीक है। अगर टाइम और पैसा कंट्रोल कर लिया, यू आर ए प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन एंड द क्लाइंट इज हैप्पी and you are making a profit also, and your quality is good, and then you get a good references, ठीक है, then you are getting more customers from the reference of the customer, you know. So that is the project management, and project manager is profit manager. सही है। Project manager is people manager. He puts the people in the right task at the right time, delegates the right task to the right person. He is people manager. He is process manager. He is utilizing the processes of industry, company, correct, process of the project management, good practices. He is process manager. Right. Then he is the problem manager. He is managing the problem while the project is ongoing, ठीक है। तो then he is also the promise manager. कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, is it not a written promise? है ना, it is a promise ना, contract. Contract is a written promise to the client that we will do your project within a span of 2 year, 3 year, and these are the milestones, and we will claim the payment on these milestones only after completion. ठीक है। तो that's the promise. Now who is delivering the promise? ये promise किसके कंधे पे जा रहा है उठ के? प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम। प्रोजेक्ट मैनेजर। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को प्राइमावेरा यूज करना चाहिए। तभी तो मैं समझाता हूँ सबको कि भाई प्रॉमिस बॉस करते हैं और भरना तुम्हें पड़ता है, तो प्राइमावेरा सीख लो, ठीक है। सो दैट इट इज फाइन, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट फेल इन द बिगिनिंग नॉट इन द एंड। व्हाई इट इज फेलिंग इन द बिगिनिंग? बिकॉज ऑफ द पुअर प्लानिंग ओनली। इन द एंड ओनली द रिजल्ट इज विजिबल। करेक्ट। एंड में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो मून रोवर चांद पे जाके लैंड होगा कि नहीं होगा। अब वो तो जो है कि भाई अब जो
वो ऑर्बिटर जो है वो चला गया, अब लैंडर जो है लैंड नहीं कर पाया, अब लैंडर के पेट में था रोवर, अब लैंडर जो है वही खुद ही गिरा वो टेढ़ा, अब रोवर उसके पेट में बंद है, तो रोवर जब तक वो सतह पे नहीं उतरेगा तब तक हमें वो सतह की पिक्चर नहीं मिलेगी। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि प्रोजेक्ट लास्ट में फेल हुआ या बिगनिंग में कुछ फॉल्ट था कुछ उसमें, तभी जाके वहां जाके फेल हुआ, सही है ना? तो प्रोजेक्ट फेल इन द बिगनिंग, not in the end. So in the beginning, we should be using project management fundamentals with a good software so that we can implement our technical knowledge properly. Technical knowledge sabhi ke paas hai. Everybody has a technical knowledge. But to give the proper direction to the technical knowledge, we must do planning. Without the technical knowledge, you know that what it is like. It is like a very intelligent person groping in the dark and he is not able to reach the destination. Okay, the person has very good knowledge, but he is just groping in the dark. But this project management and project management software, so he is now able to see the direction and he can put his intelligence to the best use. So that is the reason we say project fail in the beginning and not in the end. Okay? Correct. So what is the project management? It is the application of the skills, knowledge, skills, tools, and technique. So what knowledge? Both technical knowledge, project management knowledge, skills, technical skills and project management skills. Tools, technical tools and project. Technical tools आपका क्या वो जो साइट पे आप यूज करते हैं? डायरेक्ट या जो भी आप यूज कर रहे हो साइट पे, आप जो क्रेन लगा रहे हो वो भी आपकी एक टूल है। करेक्ट। आप क्रेन यूज कर रहे हो, आप अर्थ मूवर यूज कर रहे हो, दीज आर टूल्स। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल क्या है? आपका प्राइमावेरा है। तो ये दोनों चाहिए आपको, टेक्निक भी चाहिए। और स्टेक होल्डर्स, दीज आर द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस involved or affected by the project. Of stakeholder, who is the stakeholder? You are the stakeholder, your team member, your boss, your organization, your PMO, investors, okay. And then your investors, then your clients, and then the public at general. If you're creating any public utility, even they are affected by the positive or the negative outcome. So that is what we need to understand as a project manager, that what is our objective and who are our stakeholders, where we get the requirements, where we get the approval, where we get our quality acceptance, okay, so that we can manage the project and the stakeholder. And of course, we need to use a project management tool. So there is a program, there is a sub project, there is a project. Okay, now we will go back to the Primavera. After the concept is clear, I will share this slide with you, and you can see it more in detail. And of course, since you are in the PMP program, so I'll spend more time in the Primavera here. Okay. Okay. So during the PMP also, I'll be using the Primavera to show you the time and the cost management. Okay. Now you share your screen. Now let us get hands-on. So after 10 minutes, we will take a break for 15 minutes. So let us get into the Primavera. Show me your screen, share. Share your screen. Share screen here. Yeah, from your side, there is a share screen button. You can share it. See, now I will request you for the remote control. Okay, fine. Now what we have understood, that we have to take control of the time, right? First, we will take care of the time. Then we'll take care of the scope also. Now, how do we take care of the time? So basically, the time is represented as the schedule here. We put the duration. Okay. So let us do this thing. How to create a project? See, the project can be created by us. If I go into the option projects here, I'm already in the option projects. So, you know, do you see this enterprise, engineering, construction, energy services, manufacturing? Right. Now, my projects, I say that, okay, I'm going to learn. So I will not put into this category of my project. I will create a category for myself. That category will be learning and development. Okay. So what I do, I go into the project from the top menu, click on the project. I think it is enterprise. Click on the enterprise top menu. Okay.
Then you click on Enterprise Project Structure, EPS. Okay. Now here is the place where we create the structure that we're seeing. On the left side, you see this structure. Yeah. This structure is created here and implemented there. Okay. So now you click on Add. And in the code, in the EPS ID here below, you type capital L, M and D. LMD. No. And वो होता है ना जो कीबोर्ड पे जो शॉर्टकट वाला एंड LND. no एंड जो होता है हाँ ना L and. सात नंबर पे हाँ And D. and on the right side you write learning and development. Here you can write in full. That is the shortcut. So shortcut is the code also. Press enter. Now you move it up. From the right side, you will see this navigation at button. Take it to the top. I can also take it this way, right? But there has to be something. Okay. Now you click on the close. It will apply and close. See, the structure is implemented, right? So now you place your cursor on the L and D. Under the L and D, we want to create a project, right? So from the right side, you will click on the add. So inside, it will create a project. So it has already selected the EPS, that is learning and development. And next, so here you type LRN01. That is the code of the project. LRN. 01. Okay. In the project name, you type learning project 1. Project 1. Yeah. And put dash calendars. So first we will learn the calendar. Dash calendar. Yes. And calendar is the best thing that you can learn in your life in the project management, because the calendar, I think how you should visualize. See, calendar is like the foundation of the building. If the foundation is strong, you can make a very tall building. If your calendar is very strong, if it is proper, then your scheduling will be accurate and you will be in more control of your project. Okay, now click on the next. And select a project plan start date as 4th of the January 2021. Why I am using 21? Because this is to sensitize the people. You should start planning much ahead. For January. Yeah, for January from Monday. Because from Monday it is easy to understand the scheduling. Select. Now click on the next. Responsible manager. This is called organization breakdown structure. यहाँ पे click करो. We will come back to it later, because for every line of business there is a manager. Now who is the enterprise manager? That is Ratan Tata. ऊपर सबसे टॉप में बैठे रतन टाटा, फिर नीचे बाद में उनके नीचे बाकी लोग बैठे एक एक लाइन ऑफ बिजनेस संभालने के लिए. ठीक है ना? दिस इज द सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ह्यूमन फिगर. सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं? ऊपर सबसे ऊपर होते हैं एंटरप्राइज मैनेजर. एंटरप्राइज मैनेजर कौन होता है? सीईओ होता है कंपनी का, चेयरमैन जो भी है. चेयरमैन जो भी होता है, ग्रुप चेयरमैन. ठीक है. So Ratan Tata is the chairman of the Tata Enterprise. So that is his role. So by default, you don't have any other role. So you keep the enterprise only. So once we create the role, we will come back to it. So click on the next. Rate type standard, fine. Standard rate type. That's okay. Actually, in my it came. Actually, I don't get that options. I only get option this one, price unit 1, 2, 3, 4. वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने सेट किया ना, आप तो एडमिन हो यहाँ पे. Right. So आप आ जाओ यहाँ पे. इसलिए तो आपको ये दिख रहा है सारा. Okay. Next. Finished. आपको अपने जो कंपनी में जो काम करते हो उसके अंदर आपको दिखता है वो करेंसी.
Actually, I have before I have two actually database. One is production and one is development. So actually, the production is the master database. In that, we have limitations. We can see only our projects, and Hmm. the core team they can see all the projects. Ah, And when I get the entry to the development, okay, I can actually I will development is like kind of only database for the do your what if analysis and all that, and the hmm. file which you want to keep, and you can do some experiment and all that. But Hmm. in development I can have all the rights, like as admin. But still, I mean, I feel sometimes because I'm like I don't see the admin tab over there, but i Right, can right. i can see the other details like user preferences and all that. See, because you are a user with the greater rights, Hmm. but you are not the super user. The super Yeah, I'm user not is the, always yeah, there. true. But then Correct. there are people, those who are your team member, they will be Hmm. seeing the specific task, which they can update from by talking to you, by telling you, or they can update because in certain companies, what they have provided is some app which is provided by the Oracle. So Hmm. they open the app from the site and they report their progress from there also. But they can see only their task, not the task of the other team member. Hmm. Hmm. Okay, now you click on the finish. You have created this project. Now you open this project by right clicking on this. And then you go into the activity tab. You'll find that it is totally blank. Correct. Now to insert a task here, so what you will do, you'll press Create a WPS. the insert button. No, not this. That is the wizard. I don't want to teach you the wizard. I want to teach you the shortcut. See, there is an insert button on the top row of your keypad next to the delete button, print screen button on the top row. You will find insert button on your keyboard, Ah, on the physical keyboard. Okay, keyboard. okay. Insert. Yeah, Uh, got it. okay. Yeah, Do you see that it is creating 6 days? That is original. yeah. In the setting, you put 6 days. Now Hmm. you name the activity as the task one. Hmm. Task one. Yeah. Okay. Now I'm going to do something. Okay. First of all, what I will do, I'll move the screen divider a little bit toward the right here, and I will optimize the size like this. And because I'm including the time part, I'm just going to show. And this sorting should be always on the activity ID only, because sometimes I click a column, this can get sorted here, but that would be wrong. It will create a wrong visual sequence for me. So Hmm. once I've done that, then I say that where is the bar? Now to get the bar, just in parallel to the task, I just double click here on the get. Double click. Yeah. Quickly. And then I slowly and slowly expand it. Expand it. Okay. Now, do you see that this is a 5-day week? It is a 5-day week calendar, Hmm. starting at 12 a.m. to 4 p.m. and which is very odd timing. And do you see this? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and it is going up to the next Monday. So now I know that if I give it a 6-day task, this will not finish on this Saturday because it is a 5-day week calendar. Okay. Hmm. So now just to fix this thing, I'll have to change my calendar. Now let us do this thing. Just like this, you create 6 tasks. By Okay. inserting, you create 6 tasks in parallel. You name this as task 2, that's it. Then you create next. Five. Total five, right? Okay. Create one more. One more. Okay. Now let me do this thing. See, in the Primavera, I can set up a relationship by selecting the task like this.
I select task 1 to 6 and I right click and I say link. Now link will set up the very common finish to start. Finish to start. Okay. I believe you understand, but I will explain to you in depth. So Yeah. when I do it, I expect it to move. The task should be scheduled from the predecessor to the successor and it should go ahead. So it is not going. Do you know that why it is not going? Schedule करना पड़ेगा. I mean refresh or save the कहाँ changes. से होगा? कहाँ से होगा? F9 I think or हाँ F9 से होता है, लेकिन ये अपने आप क्यों नहीं जाएगा? हाँ right. क्यों करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर है, अपने आप करना चाहिए ना. देखो मैं बताता हूँ. देखो नया क्या होता है, इसमें एक ना ये सेटिंग होती है. देखो अगर मैं इसको एक बारी में शेड्यूल कर दूंगा तो ये चला जाएगा आगे. अच्छा फिर मैंने क्या किया, एक मैंने और टास्क डाला, टास्क 7 डाला और मैंने लिंक किया 6 और 7 को लिंक किया. अब वो नहीं जा रहा आगे. क्यों नहीं जा रहा आगे? यू क्लिक ऑन दी शेड्यूल बटन, क्लिक करो, ऑप्शन है क्लिक करने का, लाइक व्हेन क्लिक करो या तो F9 प्रेस कर दो. F9 है तो F9 प्रेस कर दो. Do you see an options button here? Click on this options button and you will see a checkbox number 4. Schedule automatically. See, now I'll just tell you that why in the software this is not automatic. In Microsoft project it is automatic by default. अब क्योंकि पता क्या होता है, ये प्राइमावेरा बहुत पुराने जमाने का सॉफ्टवेयर है. तब जो है ना सीपीयू होती थी 64 किलोबाइट रैम की, 640 किलोबाइट रैम, बड़ा छोटा होता था. ठीक है, तब क्या होता था, अगर शेड्यूल कोई करता था ना तो शेड्यूल से क्या होता है, सिस्टम हैंग हो जाता था. तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते थे कि पहले ना वो शेड्यूल में सारी डिपेंडेंसी डाल देते थे और डिपेंडेंसी डालने के बाद वो शेड्यूल का बटन प्रेस करके चाय पीने चले जाते थे. फिर 5 मिनट के बाद आते थे तो सॉफ्टवेयर क्या करता था, ऐसे शेड्यूल करके स्क्रीन के ऊपर रफ कैरेक्टर बेस्ड डायग्राम क्रिएट कर देता था. तो फिर वो क्या करते थे, लाइन प्रिंटर होता था जो किट 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 करता है ना, तो लाइन प्रिंटर से वो शेड्यूल प्रिंट करते थे. लेकिन तब शेड्यूलिंग करने के लिए जो है एक टाइम निश्चित करना पड़ता था. अगर बार बार सॉफ्टवेयर शेड्यूलिंग करेगा, आपका कीबोर्ड स्क्रीन सब हैंग, प्रिंटर भी हैंग. ठीक है, और तब कंप्यूटर मल्टीटास्किंग भी नहीं हुआ करता था, एक बारी में एक सॉफ्टवेयर लोड होता था. जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपने और जो सॉफ्टवेयर लोड किया है वही चलेगा. उसको जब बंद करोगे तब दूसरा कोई चलेगा, लोटस नोट्स चलेगा. ठीक है, उसको बंद करोगे तो फिर प्राइमावेरा चलेगा, प्राइमावेरा बंद करोगे तो तीसरा कोई चलेगा. तो ऐसे चलता था. मैंने उस जमाने से भी काम किया हुआ है. ठीक है, मल्टी नहीं चलता था तब, जो है हमें नॉर्मल सही लगता था. लेकिन जब विंडो आया हमने कहा यार ये तो बड़ा मजेदार है, हम तो इस पे माउस से क्लिक कर रहे हैं, कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो दूसरा का काम पड़ रहा है, तो उसको बंद किए बगैर दूसरा भी खोल रहे हैं, तीसरा भी खोल रहे हैं. तो नाउ इट इज द न्यू नॉर्मल. तो तब उस जमाने का नॉर्मल था. तो उस जमाने में क्या होता था कि भाई शेड्यूल जो है वो ऑटोमेटिक नहीं करते थे. अब प्राइमावेरा जब बाद में जब व्हेन द प्रोसेसर्स बिकेम मच मोर पावरफुल, चीपर, रैम बिकेम चीपर, देन दिस सॉफ्टवेयर also got this feature schedule automatically. अब इसको कर दो, आप इसको क्लोज कर दो, क्लोज कर दो इसे, विंडो क्लोज. अब इसको एक बारी ना ये शेड्यूल कर दो. ठीक है. अच्छा अब मैं काम करता हूँ, रुक जाओ. अब मैं आपको जो है बताता हूँ इसमें करना क्या है. देखो आप एक काम करो, टास्क 2 से लेके 7 तक ना ये डिलीट कर दो. आप इसको 2 से 7 हाँ डिलीट कर दो आप इसे डिलीट बटन से. अब इसमें डालो टास्क 2 और फिर से 3 डाल के इन तीनों को रिलेट करो. टास्क 2 और 3 अब ये डालो. अब इसमें ये रिलेट करो, इसमें तीनों को लिंक. देखा अब ये गया, ये आ गए. That is the value of the software. That's why we need the Primavera for. But you have to do this setting. ठीक है. तो ये जो सेटिंग हमने कर ली, ये तो अब ये परमानेंटली रहेगी. जब भी हम इसको खोलेंगे बंद करेंगे सेटिंग रहेगी. तो कई बार क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने एक अपना ना ये प्रोजेक्ट बना लिया. ठीक,
अब मैं इसको क्लोज में कर देता हूँ, सारा कुछ मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, किसी दिन यूं भी हो सकता है कि आप अपना प्राइमावेरा स्टार्ट करो, हो सकता है कोई कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज कर दे या छेड़छाड़ दे, इट कैन स्टार्ट लाइक दिस। तो अब आपको पता है कहाँ से जाना है, कहाँ से आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स? हाँ, यहाँ से। हाँ, आपने क्या करना है कि यहाँ से भी कर सकते हो और एंटरप्राइज से भी कर सकते हो। एंटरप्राइज में तो हर चीज है, प्रोजेक्ट भी है, रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अपना प्रोजेक्ट खोलना है। अपना प्रोजेक्ट खोलने के लिए मैं फिर इसको करूंगा ओपन प्रोजेक्ट। खोलो इसे। वो एक्टिविटीज का टैब वो खुलना चाहिए ना। हाँ, कहाँ गया एक्टिविटीज का टैब? कहाँ है? एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे गई? रिसोर्सेज का टैब खुल रहा है, WBS, हाँ WBS भी खुल रही है, रिसोर्स का या असाइनमेंट भी खुल रहा है। तो एक्टिविटीज कहाँ गई? ओपन प्रोजेक्ट, एक सेकंड, एक्टिविटीज कहाँ गई? ये पता नहीं, वहां से नहीं खुल रही, यहाँ से खुल रही है। चलो यहाँ से खुलते हैं, ये देख लो इसकी ना, ये शक्ल याद कर लो इसकी। ये एक्टिविटीज है, इससे खुल रही, कोई बात नहीं। अब आप इसमें ना 3 टास्क और डालो, 4 5 6। लिंक करना है? नहीं, लिंक नहीं करना, ठीक है। अच्छा, नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग कि इसमें क्या हो रहा है। Let us look at the task calendar. What calendar is controlling it? So if you go to the activity details, you see this corporate standard full time. Yeah. अच्छा, अब हुआ क्या कि अब आपके बॉस बोलते हैं कि भी देखो, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम जो है ये हमारे टाइप का कैलेंडर नहीं है। हमारी कंपनी में काम होता है 9 AM से लेके 6 PM तक, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक टाइम रहता है। अब आपने नया कैलेंडर। एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ, बताओ। हम लोगों ने जब यूजर प्रेफरेंस में वो टाइमिंग सेट किया था ना, 6 days कैलेंडर और 8 hours 48 in a week, ओके। तो उसके बाद में हम लोगों ने जब एक्टिविटीज यहाँ पे डाला, तो इसमें 2 रेफरेंस है। एक तो कैलेंडर ऑलरेडी असाइन होके आया, और दूसरा जो टाइम प्रेफरेंसेस में हम लोगों ने एडमिन प्रेफरेंसेस में जो टाइम सेट किया, वो दोनों में किसको कंसीडर करता है? एक्चुअली देखो, पहला तो हमें जो है एक कि ये ओवरऑल जो है फ्रेमवर्क के लिए चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी इमीडिएटली क्या है कि ये जो कैलेंडर जो डिफॉल्ट चल रहा है ना, ये डिफॉल्ट कैलेंडर के हिसाब से ये प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो जाता है। सी, we have to understand that what is the default the calendar. See, if I look at my enterprise, there is an option called the calendars. Click here, click on this. Do you see this? Default, yes. Now, what is the meaning of the default calendar? That any new project, when it is created, it will be created as under this one, having the corporate standard time. Correct. The timing will be done according to this. जैसे हर कंट्री का अपना अपना होता है कैलेंडर। हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपना ये विक्रमी कैलेंडर से, मिडल ईस्ट में होता है इनका अपना हिजरी कैलेंडर। अब ये जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी फरवरी रहता है। तो हर अपना कैलेंडर रहता है। तो ये जो कैलेंडर है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। हर कंपनी का वर्क कल्चर होता है, किसी का 5 डे का है, किसी का 6 डे का है, किसी का 7 डे का है, किसी का 8 to 4 है, किसी का 8 to 5 है, किसी का 9 to 6 है। तो हर आदमी मतलब हर आदमी नहीं, हर कंपनी का अपना अपना कैलेंडर रहता है। अब आपके बॉस ने कहा कि हम अपना कैलेंडर बनाएंगे और अपने कैलेंडर के हिसाब से प्रोजेक्ट को चलाएंगे। Right. Now, first of all, it is very important for a project manager to be able to create a new calendar. ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, एक 15 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं। Okay. And we will continue from this point. Now, what you have to do that you have
pause the recording and remember to start the recording when we are talking again. Okay. Okay. So what I will do, I will stop sharing your screen. Okay. Now from your side, you pause the recording. From my side, I will pause the recording and mute. I will share my screen. Okay. Okay. Okay, good. So now we are going to create our own calendar. So here you will find on the right side, there is a button, plus button, add. Yeah. So this will let us create a calendar from scratch. Now, before we do this, on the top, you will be seeing 3 radio button: global, project and resource. So global calendar is calendar which is visible to the entire company. And Correct. project calendar is visible to only to certain projects only. Yeah. Because they were Just created by the a project. minute, Mr. Sujoy. I got one important call. Should I take it? You take it. Just a minute. Sorry. Mute yourself. Okay. Yeah. So you click on the ad. Okay. Okay. So from the ad, as you can see that it is having a plus sign. So basically the plus sign is to create a new one, or else you will be ending up making copy. We don't want a copy here. We say we click on the plus sign. Do you see this plus sign here, green? Now name the new calendar as the IST. IST. Okay. Yeah, Indian Standard Time calendar. So we'll create this, and you click on the default button. Now only one calendar can be default at a time. Yeah, you can change it, and it will move to the default will move to the other calendar. Now what you have to do is that we have to go into the details of the calendar to fix it. Now we have created, so we will now modify. So click on the modify button. Okay. Now let us understand slowly and slowly that what is the meaning of this. So right now, if you click on any day, you will be seeing 10 work hours per day here in this cell. Monday is 10, Wednesday is 10, Thursday is 10, Friday is 10, Saturday, Sunday are 0. Means that these are non-work. Okay. So the standard days are white, non-work is this, exception is the holiday, which we will see in a time. Now, how the time period is divided, the overall for the entire year is like this. Okay, so man hours in this company, they consider 10 man hours per day as a normal. So, which is not acceptable to us. So, we say that, okay, our man hours per day will be 8. So, you can put 8 here. In this cell, you can put 8 here. And the hours per week will be 6 days. 8 6 the 48. So, and it will be 192 and 2400 for the entire year. Then you click on the OK. Now we will configure the next. Just above the time periods button, there is the work week button. Right below. You see, this is the configuration of the week. In the week, 5 days are the working. Each of the day have been assigned the 10 hour. So we want Monday to Saturday working, and each of the day will be 8 hours. Okay. Fine. Now this is now the Saturday is also now become the working. Now what we will do, since we have set it at the month at the week level, now we will do the detailed work hour per day. See the on the top. Now how the day is configured,
will be configured from this button, work week. Now you click on the work week button once again, but the interface will be changing. Interface is basically helping you select each of the day. See, on the Monday, do you see that? Do you see this slabs? Right. The slab is starting from the 0 hour on the top. Correct. Because the clock is starting from the 0. So Right. that is the 12 a.m. After the 12 a.m. it is 1 a.m. So similarly, it goes up to the end of the 23rd hour, so which becomes the 0 hour. So which is called the 24th hour. Actually, 24th is the 0 hour. Right. Okay. So if you look at the 8 is white. So 30 is the first slab, 30 to 60 is the second slab. So this 8 is actually 1 hour full. Okay. When 8 hour is completed, then the 9th hour starts from the next row. Okay. So you can visualize it like a vertical clock. Vertical clock, and this clock is having all the 24 hours, and they are telling the 8 hour is working, 9th hour is working, 10th hour is working, 11, 12, 13, 14, 15. It is working. But where is the break time? So this is the condition of Monday. Now what is for Tuesday? Same. Wednesday, same. Thursday, same. Friday, same. Saturday, same. Sunday is a holiday. That's fine. But do you really think people can work like this without a break? ये तो जल्दी हो जाएगी, but people need some break time. So whatever boss says that we will configure the time like 9 to 1, and between 1 to 2 it will be break time, and 2 to 4 will be the second shift. So we are going to configure that, okay, for the Monday to Saturday. To make the configuration for all the 6 days at once, so I'll select all the 6 days. I will press the shift button and click on Monday and then on the Saturday. So you press the shift button. Now say you click on the Monday. Yeah, very good. Now how do I configure? So 8th is the non-working. So I select the 8th slab, the slab of the 8 on the right hand side. Okay, I'll first give you the demonstration. See this. See this demonstration. I will click here. Then I will press the control button. So after pressing the control button, then what happens? Both the slabs are selected. Then I will release the control button. I will click on this. And this is also non-work. Non-work, yeah. So 9th, 10th, 11th, 12th is work. Then you will click on the 13 hour and click on the non-work. Right. And then 16, 17 till the 8th of the 17, this is the work. Yeah, perfect. Yeah, this is correct. Yeah, good. Okay. Now this is setting the daily schedule from Monday to Saturday, and which we can check in the calendar. Now you click on the OK to close it. Now place your cursor on the Monday. Now on Tuesday. Do you see on the right side? Right, yeah. So this is constant. So now you click it on the Sunday. Yeah, this is all non-work. So our calendar is all set, right? Now we click on the OK. So we are going to implement this calendar. So click on the close. Now I'll tell you what is the meaning of the default. Default means that after this point, any new project which is created, it will get the default calendar to control its task. So right now, this current calendar, I mean the current project will have the old calendar only. Now we will go to the projects and check what is the calendar on the learn. So we will do a right click, project details. Now do you see the calendar? Now where you will find the calendar if you go to the defaults. Now you will see the corporate standard full time. Now you change the calendar corporate standard full time. Corporate standard full time, and select the IST. Click on the plus sign. Now you come to the activities and check.
Come to the activities of the project and check whether it is being controlled by the new calendar or the old calendar. It is still being controlled by the old calendar. If you look at the activity calendar. If I add new activity. Now, if you add a new activity, it will have the IST. Okay. Task 7, you put task 7. No, you put in the name task 7. No, I thought I delete that. Yes. No, you can change the number also. That's not a problem. But you can't have a blank name. I was like, I supposed to delete the activity after adding, just to check and delete. See this. I'll just tell you what has happened. When you created the new task 7, it is also having the 6 days duration. But its scheduling is done by the new calendar only. That is why it is going from Monday to Saturday. But whereas all the older tasks, even though they have the 6 days duration, they are stretching up to the Monday. Right. Now, how to change the calendar for each of the tasks? Either you go into each of the tasks and change it manually, or you can create a small little program, which is sometimes called the macro. Have you heard of macros in the Excel? Yeah, I know actually. I think also here we can do that in global change. Yes, in the global change. Now we are going to create a global change macro here in the Primavera. Though in the Primavera, they don't call it the macro, they call it the global change. I'm using the word macro because it's common across multiple programs. Right. So just for the understanding. So the global change can be accessed from the tools, and it can also be accessed from this global change icon. Yes, click here. So we will create a new one. Okay. New, click on the new. And what we will do, we will give it a meaningful name first here. The best practice is first, you should create a good name. So what is the good name? I say apply IST calendar. If you give it a good name, then in the future you can find it. Apply IST. तभी तो गुजरात में इतना लंबा नाम रखते हैं बच्चे का, बच्चा कहीं पे खो जाए तो बच्चा अपना भी नाम बताएगा और अपने पिताजी का भी नाम भी बताएगा साथ में. बच्चा बिल्कुल हाथ पकड़ उसको घर में छोड़ देंगे लाके. अब बच्चा इधर खो जाए कभी बंगाल में और उत्तर प्रदेश में ना ढूंढ के नहीं मिलता. साउथ इंडिया में खो जाए बिल्कुल गांव से ही ढूंढ लेते हैं. पहले गांव का नाम होता, फिर पिताजी का नाम होता, फिर बच्चे का नाम होता. और इसीलिए किया गया है. ये बहुत ही समझदारी थी मतलब पुराने टाइम की. ठीक है, क्योंकि भी पहले गांव होते थे, घर तो होता था ग्राउंड फ्लोर पे, बच्चे टहलते हुए पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते थे. तब व्हाट्सएप थोड़ा ना होता था, फेसबुक थोड़ा ना होता था. और बच्चे भी जो टहल के, आजकल तो सोसाइटी में गेट बंद रहता है, गार्ड जाते पूछे कहां जा रहा है बेटा, चल घर जा चल. बच्चा तो निकल नहीं सकता मतलब घर से 10 मीटर आगे. ठीक है. Now we will apply the IST, the calendar. So what we will do, we'll tell that where I am going to check the activity for the calendar. So you see the subject area. Right. It is my subject area is activity. The calendar of the activity is not the IST. Okay. So now you go to the activity, and in the parameter you select calendar. If you type C, it will go to the calendar. Now you select the calendar where is not equal. You select not equal here. Now you select the value as the IST calendar. Where the value is not the IST calendar, there you put the IST calendar. Where in the then. So here you click in this box and click on the plus sign. Yeah, first you click in the box, then you click on plus sign. Now it creates a row, and then parameter will be the calendar, which will be set to the desired calendar. What is the desired calendar? The IST calendar. Now, what is the meaning of this? This is a statement. If you translate it into English like this, it says that I will look at the activity where in the activity the calendar is not equal to the IST calendar. I will apply the IST calendar. This is the meaning of this macro. Now you click on the OK. Okay. Now, what we are going to do, we have selected the macro. We will click on apply change. Apply changes. Now you have to hold it here. Just watch it. First, I want to explain something. If you look down, there are 3 buttons: commit change, cancel change.
Yeah. You click on the cancel change, it will go back. Okay. You commit change, it will apply the change. What change? It is showing you old value, new value, old value, new value. So, you know, in the activity, these 6 activities, it has found the old value to be the corporate standard full time. So that is why it is showing you the new value as the Indian standard time. So Okay. what you can do is click on the commit changes. Okay. Now it will ask you to save the log. You say no, I don't want to save the log. I have applied the changes. And once you come down to the calendar, you come to the Gantt chart. You will So, find the changes have been applied here close. so See, all the tasks will have the proper 9 a.m. to 6 a.m. Okay, all it is now proper according to the new calendar. And you have to make a macro for anything, for activity, for task, for expense. If you want to do any of the task in the automatic fashion for large number of tasks, so macro can be created. So this is a small application of the macro, but this is not the only application of the macro. Okay. Now I'm going to ask you to create the reverse macro. You create it all by yourself. yeah. Okay. Apply corporate. Change. अब इसको फिर से लगा दो कॉर्पोरेट, नहीं फिर से वो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इतने सारे टास्क है. अब इसमें चाहे यहाँ पे चाहे thousands of tasks भी हो, तब भी एक ही बटन प्रेस करके ही काम हो. So that is the benefit of the macro. ठीक है ना? So now we know how to create a calendar and how to apply the calendar. But we have to cross check whether the calendar is proper or not. Now how to cross check the calendar? It is very simple. See, what you do, you add a task 8, task number 8. Okay. So in the duration, you put 0.5D in the duration column. Put 0.5D. Okay. Now let us look at the start and the finish time, right? Now in the duration, you put 5H. 4 hours. 5H duration. 5 hours or 0.5 days? Oh, no, 5 hour, 5H. Finish time देखा कुछ आया समझ में? 4 January. Finish time. Yeah, finish time 4 January 3 p.m. हाँ 3 p.m. पे गया. क्यों गया? 2 से वो अगर आप 4 आवर डालते हो तो 2 p.m. आता है. 5 आवर डालते हो तो 3 p.m. आता है. नहीं वो 1 p.m. आता है. 1 p.m. के बाद 3 आता है. 2 के बाद 3 आएगा. 1 to 2 break, right? हाँ, that is the break time, right? You know what happens that when you give the 5-hour task to a person, he will work for 4 hours in the first shift, then he will take his break time. 6 days calendar and 5 days calendar. है ना? It will jump the weekend or it will jump the break. अच्छा. Now you put 1.5D. देखो नेक्स्ट डे में देखो ये जा रहा है 5 जनवरी 1 है ना. अच्छा. Now you put 12H here in the same column. 12H. 1 day 4 hours same. ठीक है. तो 12H का क्या कर रहा है? 8 man hour तो पहले दिन लगा रहा है और 4 man hour नेक्स्ट डे लगा रहा है.
अच्छा, अब 1W डालो यहाँ पे, 1W है ना। तो 1W वो ये ट्रांसलेट कर रहा है, एक्चुअली W इज ए कलेक्शन। हमने इसको कहा था कि भाई जो कलेक्शन होगा हमारा, जो 1W का, ये 48 मैन आवर्स का होगा, तो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं 6 डेज में। तो 1W का मीनिंग हर जगह सेम नहीं रहता। अगर 5 डे का कैलेंडर होगा ना, 1W टाइप करता है वो 5 डे टाइप कर देगा। तो 1 डे क्या है कि 1 वीक जो है एक शॉर्टकट है, एक्चुअली 6 डे का शॉर्टकट है। अच्छा, अब इसमें 1MO टाइप करो, 1MO। 1MO, हाँ। देखो क्या आता है 1MO। 1MO 24 डेज का शॉर्टकट है। 1MO अपने आप में कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है। अब इसको हम कहते हैं कलेक्शन। वीक और मंथ को हम कहते हैं कलेक्शन, और जो हमारा जो डे और हमारा ये आवर जो होता है, इसको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक यूनिट ऑफ टाइम। इसको कहीं पे भी आप डालोगे उसका मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन वीक और मंथ का जो है मीनिंग चेंज होता है। तो हम चलते हैं ये वर्किंग वीक्स। तो वर्किंग वीक हमारा जो है 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है। सही है। और वर्किंग मंथ वो हमारा जो है 20 दिन का भी होता है, 22 दिन का भी होता है, और 28 दिन का भी होता है। सही है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, हम जब 1 मंथ डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा वर्किंग 1 मंथ, तो वर्किंग 1 मंथ में होता है 24 दिन। करेक्ट। और कैलेंडर मंथ तो चेंज होता है, कैलेंडर मंथ 28, 29, 30, 31। ठीक है। तो हम जो है, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हम सेटअप करते हैं, तो वर्किंग डेज, वर्किंग वीक और वर्किंग मंथ ही हम सेट करते हैं। बाकी ये कैलेंडर तो इसके जो है अंडरलाइंग रहता है, उस पर अपने आप ही ये सेट कर देता है। अब देखो, अभी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है, देखो स्टार्ट डेट क्या है, 4 है ना, जनवरी। आप इसको काम करो, प्रोजेक्ट में जाओ, इसको 4 फरवरी कर दो, देखो क्या होता है। देखो यहाँ से आप जाओगे ना, ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में, जनरल में नहीं, डेट साइज में डेट्स का टैब रहेगा, है ना। अब इसको 4 फरवरी कर दो। अब देखो एक्टिविटीज में क्या हो, देखो सारी एक्टिविटी अपने आप ही रीशेड्यूल हो गई 4 से। मतलब वो फरवरी के महीने से हो गई। तो अब देखो ये जो रीशेड्यूलिंग वाला काम है कितना कॉम्प्लेक्स है। इसको आप एक्सेल में ये कर सकते हो ऐसे कि आपने एक का चेंज किया और बाकी सबका चेंज हो गया, सही नहीं हो सकता, नहीं होगा ना। दिस इज कॉल्ड द शेड्यूलिंग इंजन। शेड्यूलिंग इंजन की ही जो है ये वजह से हमें इतनी बेनिफिट मिलती है, because the scheduling engine takes care of all the calculation of the start and the finish time, so which is the most complex part of the project management. It cannot be done in Excel. We need to use a proper software. Then in the project management there are many other things like the quality management, risk management, issues management, and which is also supported by the Primavera, and all these are according to the 10 knowledge areas of the PMP. So Primavera supports all the 10 knowledge areas of the PMP, and we will learn that. Okay, that how. But our primary focus today will be upon the time management, then scope management, then the cost management. Then we will learn about the other things also slowly and slowly. But these 3 things are the most important parts of the triangle. This is called the triple constraint. So you know that is why the name of my company is TripCons. Triple constraint. So my punchline is we work under constraints. So all project managers, they work under constraint only. If there is no constraint, then any school child can be a project manager. Since we have to work under constraints, so we have to plan our resources, we have to plan our time, we have to plan our cost. We make sure that everything gets done. We create the value which can be monetized. We create something which is acceptable to the client and the client is willing to pay us. And that is the value of the project manager in the company. Okay, I have one question here. Yes, we can use the multiple calendar here, right? I mean, in the same like task 1 to 8, certain tasks we can assign different calendar, right? Yes. See, if one task is being done in India and one task is being done in the Kuwait, I create a Kuwaiti calendar. I can apply the Kuwaiti calendar on a particular task. That is the flexibility of the Primavera. You can do the same in Microsoft project also. You can apply the multiple calendar there also. Okay. So, you know, it's a scheduling will change then.
Scheduling will change. Now, Right. what you do in the project, you go and set the date back to the 4th of the January. Hmm. Okay. Also, second question I had is like when we link, it is always come finish to start as a default, or we can change that one to like any See, first other it will come relation. as the default because it is the most common. It is coming as the default. Finish to start is coming as default due to the convenience factor. Hmm, hmm. Because almost 80% of the task in any kind of project domain, they are like finish to start. But there is any possibility that we can change in case if we want to No, change. we have to change it. We will change it. We will soon very soon we will learn. We are going to reach there. Ah, So okay, okay. change the date of the project to 4th of January 21 first. I want to now show you the holiday. How do we put the 4th of holiday into the February, right? calendar? I need to write No, it from here. no from the project setting, from the project setting. Ah, okay. So you have done it. Okay, now you set the data. Data date is now 4th Yeah, February. now you set the data date also back to the 4th of the January. I'll tell you that what is the data date. So data date is the date on which the data has been updated. Updated, yeah. Okay. Now you click the reschedule button from the top. You should always do it when something change is done. Now reschedule button. Now you bring the Gantt chart in the focus like this. Okay. See, on the if I place my cursor on the top of the month here, it is a hand. Hand means dragging, drag like this. And if I bring it on the week, it will show lens. Lens means stretching. Okay. If I stretch, it is comfortable to read. But sometimes, I need to see more of the Gantt chart. So, I optimize it to the single letter. So when I see the single letter, I just stop there. So then I have more convenience. Now, what I'm going to do, that I'm going to save it. If I go to the left side, it's already saved. So now what we are going to do, we are going to learn that how to put the holiday. See, holiday, suppose the project is starting on 4, 5 and the Wednesday is declared as the holiday by the company. So how I'm going to accommodate that? I will go into the calendar. I'll just show you. Just go into the calendar. Enterprise calendars. And I go to the calendar of the January month and place your cursor on the 6th and click on the non-work. Okay. Now click on the OK. Click on the close. See, immediately all the tasks they are getting rescheduled. And do you see there is a gray color on the Wednesday also? Gray All color. the tasks are shifting to the Monday. Ah, yeah. There, the date of the project is also changed. Now, if you want to remove that, suppose if you put it by mistake. But still it shows why Monday only. Before it was also Monday. No. See, 6-day task. Okay, let us go and change it. Let's go and change it. Let's go and change it. Let us go and remove the holiday. Go to the enterprise calendar. And here you select the calendar, just wait. Go to the January, go to the January, select the 6th. Now you click on the standard. No, not on the work, standard. Click on the OK, close. See this. It has come back. Ah, yeah. Sorry. It was up to Saturday, correct. Yeah. Mm. Yeah, in So, 5 days it was Monday to Monday, right? okay. Because it is 6-day calendar, so it is starting on Monday. So, that's why I put the Monday as the starting day. Yeah. Yeah, you try it once again. You shift it toward the left side. You move it toward the left side so that you can see it also. No, like this. Just wait. I'll just show you. This thing you first move toward the left. You place it here. Now you do the modify. Now you click the modify. Shift it toward the left. Yes, keep it in the left. See that? Okay.
Okay, fine, keep it on the Sure. close. Yeah, close. Okay. So, this is the benefit of the calendar. So calendar is the basic foundation of your schedule management. So schedule management is one of the knowledge area. The red color is coming because this task is the critical path. So critical path is the longest path in which the float is zero. There is no room for any kind of delay. And the tasks which are distant from the finish date, they have a float. Do you see the 6 day, 6 day, 6 day, Right. 18 day, 18 day, 18 day. Now the float, I'll just show you. First of all, let us now switch off the time part in the date column. Start and finish, they're showing the time. Now it is not needed since we are now sure that. Now what do? We go to the user preferences. Preferences. Not I here. use it. Preference. What do I prefer is the edit user preferences, and there is the icon also on the first panel. So no, in the dates, go to the dates. No, here you let it remain. Do not show time. Select the radio button below. Do not show time. Do not show time. Okay. Now it will save space. Now I'll just show you that what's happening here. First, you shrink the size of the start column. Ready? Yeah, shrink the size of the start column and the finish column. Do you see that? Let me bring the Gantt chart toward the left. Just hold on. Let me do now. Okay. See this. I'll place it here. And what I will do, I want to show you the concept of the float. What is the meaning of the float? Float is the gap from the finish date. Right. I will show you there is a float bar here. Actually, it is not visible in the beginning. So let me go down. I'll see that. Yes. Do you see this float bar? Yeah. So I'll just click on this. Come as a black color, right? So in the beginning, it will look very odd. But it is showing that how much is the gap for this task from the finish date. So any of these tasks, 1, 2, 3, they have a 6 days gap. And this task has 18 days gap. So 18 days is this entire length of this bar. So, any person can take 18 days leave here. And if on the task 8, nobody can take even a single day leave. Why? Because if you look at the total bar size of the project on the top, it is exactly equal to this only. It has to be like that. The finish date of the project will come from the last task, which is finishing in the project. Okay. Now the critical path can change. Now do this thing. Now join the task 3, 4, 5, 6, 7. Join the task 3, 4, 5. Up to 7 or 8? 7. Link them. Only up to 7, right? Yes, right. Do you see now this task 8 has become the green, and the bigger path has become the critical path. Why it is the critical? Because the float there is now 0. It is the longest path, so float is 0. There is no gap. And that is defining the finish date of the project. The finish date of the project is defined from the finish date of the last task. So the last task happens to be the last on the line, that is the task number 7. And the finish date of the 7 number task is 22 Feb, and that is the finish date of the project also. So it means this activity, like this project, has a 2 path. One is critical path and the other is normal. Yeah, so every project has got a combination of critical paths and normal path. And critical path can be multiple also. Now suppose multiple critical path. Yes, why not? You just make the duration of this task to 42. Make it. This is another critical path. So a project can have a multiple critical path also. A project will always have one critical path, but it can have actually, multiple. Just one question. The multiple critical path, because that both critical path is not linked to each other. But in that also, I mean, like, okay, certain activities, which has like, just an example, like here you have 6 activities and here you have only 1 activities.
Hmm. Here, I mean, like the first critical path, you need to control 6 activities to, Seven. finish on time, right? And here Seven only one activities. activity you need to control to finish on Hmm. time, Yeah, yeah. right? So I mean, like like the more important is like multiple activity or more activities in a critical path, or like there is nothing like that. No, there is nothing like it. Actually, see, all critical paths have equal risk. Mm-hmm. Now, critical path can be having multiple activities. It can be having less or more. In Mm-hmm. the first one, there is seven. There could be another critical path which is having not seven or not one. It could be having four. It could be having five. So what matters is that you should know the critical path. It really doesn't matter how many paths are there. So you have to control each and every path on the critical path. Mm-hmm. Every task on the critical path has to be given equal importance, because if any of it is delayed, then it will delay the project. Right. Okay, so all the tasks, they might be small or big on the first path, but every task is dangerous. Every task has the potential to push the finish date. Yeah, true. It really doesn't matter that which one is bigger or smaller. Okay. So in a project, there can be multiple critical paths also. In fact, in real life, there are multiple critical paths. Okay. So once you make the project plan, you will find that using the filter, you can display the critical path. Now, Mm. what is the use of the critical path? I will explain to you. First, you make the task 8 as the 36. Put 36 there. Here, 8. Yes. Okay, good. Now, I'll just tell you that what do we do in the real life? What is the importance of knowing the critical path? Practical utility, I'm going to tell you, because it is project management with Primavera. It is not only knowing that okay, it is red color and it is finished. Matter is not finished here. Matter starts from here now. Okay. Now, since I know the critical path, how I'm going to prevent the extension of the critical path, it is like this. On the top, you will see a tool here. I'll just show you it to you. It is called the filter. Let us see. Yeah, this is the filter. Mm. You see this filter? Yeah. You click on the filter. Now in the filter, you will find there is an option called the critical. Yeah. Select this and OK. Close this box. Yeah, it is applied. Oh, yeah, Yeah. OK Yeah. will apply. Close this box. Yeah, I'll tell you now what you will do. After filtering out the non-critical path, you will call all the team members, those who have been given the responsibility of the task on the critical path. Mm. The first question you will ask them that do you plan to take any leave between January 4 to 22nd of the February, Mm. from the first date of the project to the finish date? The Mm. answer, if it is no, then it is good. If it is yes, then you ask them which dates. Now, what will you do? First of all, you will negotiate if he is not going to take the leave. But if for a person the leave is very important, so you note that fact. What you will do? That you will note the dates of his leave and ask him to send a mail to you. You will take the mail to the HR manager and tell the HR manager that I want equivalent resource to be available. Okay, I want an equivalent resource to be available to meet the needs of the project so that the project is not delayed. So another person can continue to work in his place having equal skills and capabilities, right? Correct. Okay. Now, next what we will do, that we will ask him, is your equipment working? So if the person says yes or no, you will take the proper action. Suppose if he says no, then you ask him that what is the problem? He says, sir, its maintenance would be due in the middle of the project. So Mm. you tell him, look, we are still planning in the month of the August. So what do? You send the equipment for maintenance right now. Okay. Mm. So that the maintenance schedule doesn't fall in the middle of the project. It is already maintained by the time it is being utilized in the project. Now you ask him the third question, do you have all the material? He says, boss, we do not have a material, but there is a certain material which can be having a supply chain problem. Mm. So you say that, okay, what is the material? Sir, this material is coming from China. So Mm. this material is now blocked.
So you say that, okay, don't bother. You order this metal from Taiwan and Japan. That's it. We make sure that our critical path task is never stopped due to the factors that we control, except the force majeure. Thing that we can control, we should control on the critical path by making sure men, machine, material, or subcontractor, they are always available to do the task, so that the task is not getting extended beyond the critical path. Not only one task, but the any task on the critical path should not expand. Okay, so that is what we are ensuring here by making sure the availability of men, material, machine, and also the cash, because the cash will be utilized to do the work of the subcontractors. So the subcontractors can always work if the cash is available with the project manager. So you tell the project manager, you take an advance approval of the cash. Okay, so they take the advance approval and they keep the voucher with themselves. So whenever they need any work to be done, say immediately get the cash and they get it done by the subcontractor. So this way we ensure that no task on the critical path is getting delayed. That is the utility of the critical path planning. Correct. If we plan it properly in advance, then we have a good chance that none of the tasks will get delayed. And if our estimations are good, correct, according to the subject matter expert, and of course we'll be able to finish it without any delay. Right. Okay. So now what do you do? Now you remove the filter. After the meeting, remove the filter immediately. Otherwise, you will not remember and you will think some of the tasks they have been deleted. You know, some people, what they've done after applying the filter, they put the 50 task once again. So I tell them that you do one thing. If you are forgetful, then you do one thing. You take a small chip. Okay, after applying the filter, now you stick it on your monitor. The filter is applied. So after removing the filter, you remove the chip. Okay. So I've seen that happening because they are new people, and slowly people learn. We tell people from our own mistake. I've done this mistake, so that's why I'm telling you. Now that is the benefit of training. So you don't do the mistake that your trainer has done, right? Correct. So in the future, you will be better and better and better. Okay, better than the previous generation. Okay, so now this is the impact of the schedule. Now, schedule is impacted by what? First of all, the schedule is created and impacted by the calendar, right? Right. Then schedule is impacted by the relationship, by the dependency. Correct. Okay. Then the schedule is impacted by the constraint. So we will come to it later. I'm just telling you in advance. Okay. Now, what we are going to learn? We are going to learn the dependency. Now, how to put the dependency? So to put the dependency, first of all, we remove the relationship. See this. I'll go to the task 6. See this. Or 7. If I go to the predecessor, I'll say remove. Can you break all the relationship here? Just break all the relationship. Go to task 6 and remove the predecessor. We can do shift and no. Yeah, if you know that, so we can do it. We cannot do together, right? For two activities. We'll have to do it only one at a time. Now let us do this thing. Let us also switch off this, this float bar. It is very superimposing. So right click on the Gantt chart. Okay. Okay. Now
go to the bars option, bars, second option, number 2, bars. And if you scroll down, you will see float bar and you uncheck that bar. Okay. Now we are going to do some work on the relationship. So for the relationship, what we will do, and make the task 8 as also 6 day. Okay. Now what we are going to do, we are going to create the WBS for the 4 type of the groups. It is a demo of not only the group, but it is a demo of relationship and grouping both. So go into the WBS and you create the WBS as like this. I'll just show you. Go into the WBS tab. There is a tab here already. Yeah. See, in the WBS also, it is just like the Gantt chart, but it is having the superstructure. Just like in the building, we have the beams and columns. First, we erect the beams, then columns, and then we are able to create the floor. So here in the WBS also, it is just same like that. So in the WBS, I have name, I have got total activities. Okay. But I do not have the start date, finish date. So, I can go into the layout and say layout, save as. I say WBS with details. You type here WBS with details. With the details? Yeah, with details. Now we will put the details a column. We'll put the start duration, start date, finish date, then total cost, like that. Now Yeah. you configure the column for this. Yes. And from here, select the durations. So BL project duration here. BL project duration. Okay. Then the dates you select start finish. Just start finish. Yes, correct. Apply. No, we need, yeah, that's okay. We need the cost, total cost. Total baseline cost. See if you have the BL or the budgeted. You can take any one BL project. Yeah, you can take BL project total cost. I think it should go to the, yeah, here. Total activity. Total activities, you can place it next to the WBS name. Yes, like that. Now you apply in OK. Okay, so let's see that what is the, see at this point the cost will be 0 because we have not applied any resources. But we will use it later. Okay, so let us expand this site. So now this is a weekly thing. Now what we are going to do, that under that we will create a structure. Now we will basically create 4 kind of the WBS here. Now you press the insert button. Now in the name, we don't change this. We just in the name here, you type here, in the name you type finish to start. And next you press insert and now it is making the child. Okay. We don't want the child. So what we do, we move it toward the left from the right panel. If you go to the right panel, you will see a left arrow. Yeah. Now make it start to start. And in the third, Yes. finish to finish. And in the fourth, you put start to finish.
Okay. Now we are going to learn that how to set this. If I go to the activity tab, I'll find a framework there. You see that? But this is not looking like it should. See, sometimes the data is not updated on the screen, so the screen looks like very odd. Okay, so then you have to do the refresh. If you do the refresh, it becomes normal. So what do you do? You select task 1 and 2 and cut them. Control X, paste them in the finish to start. You select task 3, 4 pair. Put them in the start to start. Yeah. And the remaining 2 tasks start to finish. 2 or 3 or whatever is remaining. Yeah. So now this is the basic way to do the programming. See, basically, a project manager thinks from the top. How? जैसे मान लो आपके पास ना एक ना क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि भाई विशाल भाई एक ना ताजमहल बनाना है हमने। चलो भाई विशाल भाई ताजमहल बनाना है, तो वो कहे भाई कैसा बनेगा? तो वो आपको डिस्क्राइब करेगा, क्लाइंट कहेगा भी ऐसा होगा, व्हाइट कलर का गुंबद होगा, 4 मीनार। तो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग, so you are thinking of the WBS for the gumbad, for the minarets, for the landscaping, for the structure. You will be thinking from the top down. So project managers, they are encouraged to think, keep the keep the end in the mind. Keep the end in the mind, that what do you want to show to the client in the end. So that is the beginning of the project. That will set the beginning, how you should begin. Okay. So we say to begin, keep the end in mind. Project शुरू करने से पहले उसके खत्म में क्या होगा वो mind में रखना है. So that is the purpose of the WBS. So that is why in the Primavera it is proper project planning. The proper project planning says that first you should create the WBS, and under the WBS you should put the task. Now the first task relationship that we are going to learn is finish to start. Now how do you put the relationship? To put the relationship, there are two methods. One is that we have seen, but we will use the manual method. In the manual, I can go to the task 2 and I can say predecessor. I will select task 1. Or I can go to the task 1, I can say successor. I will select the task 2. Both ways it is the same. So it is just like someone asking, Ram, what is the name of your younger brother? The name of my younger brother is Lakshman. So if I go to Lakshman and I ask, what is the name of your elder brother? This is Ram. It is just exactly the same thing. From the task, I can put successor. From the task 2, I can put a predecessor. So both ways. Now, that is why we have the predecessor and successor tab. But I will show you something better. Since we are doing the training, live training, I will show you something better. Now you right click here on this gray bar next to the successor. Do you see customize activity detail? Okay, slowly and slowly, just have a look. So there is a option called relationships. Do you see that relationships? You take it to the right side. And from the left side, you move to the left side, you move this predecessor and successor. You send them back home. Send them back. We don't need that. Okay, just wait here. Do you see there is an option called the notebook? You select the notebook, take it to the right. There is another option called the expenses. Take the expenses. There is another option called the WPs and docs. Okay, so this is what we will use, and this is how it will be very useful to us. Okay, now you click on the OK. Now click on the tab relationship. See, here in one single tab, you are seeing what? You are seeing the predecessor and successor.
So tell me, if you're in task 1, what would you like to set? Would you like to set the predecessor or the successor? Both are here. Like, yeah, so predecessor, yeah. Yeah, no, successor. Sorry, successor, yeah. है ना? So you will go to the successor side and you will select task 2. And once you click the plus button, so by default, it will become the finish to start relationship. Do you see the finish to start relationship? Now you close this box, close the box. Now, what is the example of the finish to start? You will have to think from your real life and bring it here. Finish to start means one task finish and then you start the second one. Yeah. So that is the concept. But I want you to think in terms of a project. Okay, I put the first task. I'll just write the name. Now, the name of this task is excavation. Now, what can you do after this? Backfilling. Put in the task 2. You rename the task 2. To Backfilling substitute or the any activity like cabling or. Okay. I'm going to put another task here. Compression. Okay. Say this. So in this, I'm going to change the number here. Do you see the numbering? It is saying 80. I don't want 80. I want something within this group. I put 12. So now you put the name here. Compression. Yeah. And in the compression, you go to the predecessor tab. Now you select as the successor. See, no, since you are in the compression, so you will use backfilling as the predecessor, correct? No. Now you close this window. See, I'll just tell you. See, what is the beauty of this relationship? If I click on the backfilling, see, backfilling का predecessor कौन है? Left side में दिखाई पड़ रहा है. और backfilling का successor कौन है? Right side में दिखाई पड़ रहा है. अच्छा, अगर मैं excavation में गया, तो इसका सिर्फ successor है. अगर मैं compression में गया, इसका सिर्फ predecessor है, अभी successor है नहीं, है ना? See, that is the benefit of using the relationship tab instead of predecessor successor. ठीक है. अच्छा, now if you look at the duration, अब देखो duration कितना हो रहा है? 18 days हो रहा है. अब इसमें इसको हम कहते हैं mandatory dependency. We cannot do things in parallel. इसमें कोई भी काम पैरेलल में नहीं, क्योंकि जब तक एक्सकवेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक बैक फिलिंग नहीं हो सकता. राइट और रॉन्ग? पर 100% राइट नहीं है, क्योंकि पार्शियल. अच्छा, अब इसमें हम लीड टाइम डाल सकते हैं. देखो ऐसे हमने कहा चलो उसको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसके खत्म होने से 2 दिन पहले हम इसमें ओवरलैप डाल सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द लीड टाइम. अच्छा, लैग टाइम क्या होता है? हमने कहा नहीं, एक्सकवेशन के बाद जो है कुछ दिन का गैप छोड़ना पड़ता है, तो हमने कहा भी चलो 3 दिन का गैप छोड़ते हैं. दिस इज कॉल्ड द लैग टाइम. तो लीड एंड लैग से हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं. अच्छा, लैग टाइम डालने से क्या होता है कि ड्यूरेशन बढ़ता है, और लैग टाइम तो डालना ही पड़ेगा. जहाँ पे मेटेरियल क्योरिंग की बात होती है, जैसे कि कंक्रीट जो है, वो कंक्रीट का एक रिएक्शन कंप्लीट होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कंक्रीट का, वो कंप्लीट होगा. उसके बाद जैसे मान लो आपने कहीं पेंटिंग करी है, तो पेंट ड्राई होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए हम डालते हैं लैग टाइम. लैग टाइम के साथ हम डालते हैं नोट. ठीक है, नोट लिख देते हैं कि इतना दिन हमने किस कैलकुलेशन से डाला है. ठीक है. अच्छा, अगर लीड टाइम डाला है तो उसका भी नोट लिखते हैं.
कोई लीड टाइम हमने किस स्टैंडर्ड के हिसाब से डाला है, इसमें कोई सेफ्टी खराब होने वाली कोई या क्वालिटी खराब होने वाली बात तो नहीं है कोई। तो लीड एंड लैग टाइम हम इस ऐसे हम ये डाल सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा -2 डे, अब देखो ऊपर कितना हो गया ड्यूरेशन, 16 days। 16 हो गया ना। ये कहाँ पे आ रहा है आपका WBS में, देखो ये यहाँ पे, ये देखो WBS में आ रहा है। तो WBS क्या है, WBS जो है ना यहाँ पे इसको टोटल करने का है इसको, ठीक है। अब ये WBS के लेवल पे कौन देखता है, WBS के लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है, और टास्क लेवल पे ज्यादातर टीम मेंबर देखते हैं, टीम लीडर देखते हैं। अच्छा, और WBS के ऊपर कौन सा होता है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट लेवल पे कौन देखता है, प्रोजेक्ट लेवल पे देखता है प्रोग्राम मैनेजर। और प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर कौन होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ना बढ़िया चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक एक्सरसाइज इसके बीच में ही हम जो है वो कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है। देखो ये जो लाइन ऑफ बिजनेस है ना, ये एनर्जी, देखो इसमें ना 6 हैं प्रोजेक्ट अभी। अच्छा, नाउ योर बॉस इज सेइंग दैट विशाल, since our company is expanding, okay, so we want to distinguish our projects. So actually we are doing not one kind of the energy projects, but we are doing 3 types. Now 2 of these projects, they are the solar energy, I mean that is the renewable, and 2 of the projects they are non-renewable, and 2 projects are the nuclear. So you will have to create 3 groups under the energy and distribute 2 projects into each of them. So can you do it? Yeah. So Yes, you can do it. You know how to do it. You do it. You do it by yourself. I will say if you go wrong. okay. How many project we want under energy? You said. See, we will create 3 groups: renewable, non-renewable, nuclear, and we will put 2 projects into each of them. Okay. No, not here. Actually, first you will go to the EPS, enterprise project structure. You will modify the structure of the energy. You will create subgroups. We want under energy, right? Yes. Correct. एक न्यूक्लियर चाहिए। Nuclear also. देखो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है। देखो एक तरफ होता है आईडी और एक तरफ होता है नेम। देखो ये ना कॉलम बना हुआ ना, देखो टॉप में। तो आईडी में हम लोग क्या करते हैं कि छोटा नाम डालते हैं, हम लिखेंगे REN, और ये जो रिन्यूअल है इसको कट करके राइट साइड में डाल दो। वहां पे ना डाल दो REN, इसको पहले कट कर लो और यहाँ डाल दो REN। और ये जो कट किया ना इसको इधर पेस्ट कर दो इधर। हाँ, NREN. ठीक है, बिल्कुल।
परफेक्ट, कर दो, ओके। अब इसमें दो दो जो है कट कर करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखा, अब इसमें देखा ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें, है ना। अब देखो कितना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कितना जो है आसान हो गया। अगर आपसे बॉस पूछते हैं कि भाई रिन्यूएबल में बताओ भाई कितना पैसा लगा हुआ है, तो आपको, आप जाओगे बीएल प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट में, आप कहोगे बॉस उसमें 171 रुपी, नहीं 171,901,509 रुपीज, ठीक है ना। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो के नीचे प्रोग्राम रहता है, दिस इज द प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो में होता है स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो स्पेस प्रोग्राम, मेडिसिन रिसर्च प्रोग्राम रहता है कंट्री का, वैक्सीन रिसर्च प्रोग्राम रहता है, ठीक है, और उसमें रूरल हेल्थ प्रोग्राम। तो इस टाइप के जो है प्रोग्राम रहते हैं इन पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो पोर्टफोलियो दिया जाता है मिनिस्टर को। तो मिनिस्टर अलग अलग जो है प्रोग्राम चलाते हैं कंट्री के लिए, और प्रोग्राम के अंदर चलता है प्रोजेक्ट। अब देखो बिल्कुल वैसे ही मैंने ऑर्गेनाइज किया था ना फोल्डर में। अब फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने से भी वहां पे ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, यहाँ पे तो प्राइमावेरा कर रहा है, और वहां पे कौन कर रहा है, वहां पे विंडोज कर रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि दैट यू आर बेटर इन कंट्रोलिंग ऑल द डेटा एट ए सेंट्रलाइज पॉइंट। अब सेंट्रलाइज पॉइंट क्या है, सेंट्रलाइज पॉइंट है एंटरप्राइज। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे बाकी सारा नहीं दिखेगा, इसका सिर्फ टोटल टोटल दिखेगा। तो दिस टोटल इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिलो। तो इसको मैं चेक कर पाऊंगा जब मैं ये इसको चेक करूंगा ना, ये ना देखा, ये देखा जो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस का मैंने किया लेवल 2, मैंने कर दिया अप्लाई, ये यहाँ पर लेवल 2 है, राइट। और मैंने अगर कर दिया 3 पे तो देखो ये इसके अंदर चला गया थर्ड में। दिस वन इज ग्रुपिंग। हाँ ग्रुपिंग। अब अगर मैं कर दूंगा लेवल 1, तो 1 का मतलब है सीधा ही प्रोजेक्ट, है ना, समझ में आ रहा है क्या। सही है। दिस इज कॉल्ड दी पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में ये सारी चीजें हैं। ये है आपका प्रोग्राम, ये एनर्जी में 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये है आपका प्रोजेक्ट, आपका ये एलएनडी है। इसमें पोर्टफोलियो में सीधा ही एक जो वो प्रोजेक्ट है, अभी इसमें प्रोग्राम नहीं बना है क्योंकि अभी इतना बड़ा अभी ये पोर्टफोलियो है नहीं। जब ये पोर्टफोलियो जब बड़ा हो जाएगा ना, तो हम उसमें अलग अलग प्रोग्राम चला देंगे। एक कहेंगे टेक्निकल प्रोग्राम, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है इसमें चला देंगे और अलग अलग प्रोजेक्ट डाल देंगे। उससे क्या होगा कि क्लासिफाइड होने से ना क्या होगा कि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के मैनेजर को हम जो है मतलब ये असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, बॉस ये बोल रहे हैं कि ये जो एलएनडी है ना, इसके जो मैनेजर हैं, देखो इसका कोई मैनेजर है नहीं। इस बार देखो जनरल में है क्या, देखो ये रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक आप एक काम करो, एक मैनेजर का रोल बनाओ, एलएनडी मैनेजर, और ये एचआर मैनेजर को बोल दो हायर करने के लिए, ठीक है। तो रोल कहाँ पे क्रिएट होगा, एंटरप्राइज में होगा ना। सही है। अब जाओ इसमें एंटरप्राइज में जाओ, अब आपको मैं सिखाऊंगा ओबीएस। देखो यहाँ पे आपको देखेगा ना ओबीएस। हाँ, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल है ये, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से जो सीनियर मैनेजमेंट काम करती है, ये उसका रोल है। अब देखते हैं इनके पास क्या क्या है। ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, ये जो है ना, ये WBS भी आ रहा है इनके पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है ना, ये वहाँ इनसे हटा के रीअसाइन कर देंगे। ये इसमें क्या हुआ, ये लर्निंग का प्रोजेक्ट भी आ गए, और लर्निंग के ये WBS भी इनके पास चले गए, देखो इधर। और ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी इनके पास ही है, ठीक है।
तो इसको चेंज करने के लिए हमने करना क्या है, राइट साइड में देखा एक ऐड है, ऐड का बटन है, इस पे करो क्लिक, इस पे कर दो, ओके कर दो। हाँ, अब इस पे लिखो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, L&D मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी के नीचे 3 मैनेजर डालो, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल मैनेजर और न्यूक्लियर मैनेजर। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजर, जैसे चीफ मिनिस्टर के नीचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहता है वैसे। अब इसको ना चाइल्ड चाइल्ड बना दो, राइट शिफ्ट करके चाइल्ड बना दो, ये तीनों चाइल्ड बन जाएंगे। ठीक है ना, वेरी गुड। इसको L&D में जल्दी तो उसको। एंटरप्राइज को कर रहे हैं रिपोर्टिंग, हम्म डायरेक्ट रिपोर्टिंग है। अगर इनके नीचे कोई और कल को डिवीजन खुलता है तो इनके नीचे हम जो है हम्म मतलब वो डालें, जैसे ENC है ना, तो इनका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप लिख दो ENC स्पेस मैनेजर। ठीक है, तो ही इज मैनेजिंग द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। हम्म अब इसे क्लोज क्लोज कर दो। हम अब हमने करना क्या है, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, जो LRN01, हम्म इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसमें देखो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, नीचे है ना बॉक्स। हम्म ठीक है, यस। अब देखो सारा WBS भी शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ है। देखो, अब आपको शायद पहले का याद होगा कि ये एंटरप्राइज में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी। इनको आपको दिख नहीं रहा था यहाँ पे काफी सारे ये WBS थे, है ना। हम्म अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो L&D जो है, ये L&D अभी भी इनके पास है, लेकिन इनको नहीं चाहिए। हम्म वो बोल रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए ये L&D। तो L&D में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन होंगे, L&D मैनेजर, समझे नहीं। हम्म और वो बोल रहे हैं कि मुझे ये एनर्जी भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये तो एनर्जी के पास है। अब ये जो एंटरप्राइज के पास है, ये किसके पास जाएगा अब ये? एनर्जी के पास, हाँ, कौन से वाले के पास, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजर के पास, रिन्यूएबल। नंबर 2 के पास जाएगा। देखो सही जगह पे, तो नहीं तो फिर दोनों लोग जो है ये परेशान रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट खोल लो फिर। नहीं, वो अभी लगाए नहीं है, पता नहीं अभी लगाए कि नहीं लगाया अभी। चलो आप लगाओ इसमें। हेलो। हाँ ठीक, यस कर दो। हाँ, अब इसमें न्यूक्लियर एनर्जी वाले मैनेजर को दे दो। यस, बढ़िया, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटरप्राइज देखना और थोड़ी ना देखना है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इन्होंने लिए लोग जो है ये अपॉइंट किए। अब अगर मिस्टर रतन टाटा से पूछोगे कि सर आपकी जो नैनो कार है उसमें इंजन आगे रहता है या पीछे रहता है, तो वो आपको बताएंगे कि वो आदमी बैठा है, देखो वो कोने में, उनसे पूछो जाके, उनको लगा रखा है। ठीक है ना, तो वैसे वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो दे अपॉइंट ओनली द पीपल, उनका सिर्फ इतना ही काम रह जाता है कि टू हैव ए विजन फॉर द कंपनी एंड थिंक ऑफ न्यू प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ बिजनेस एंड पुट पीपल इन दोज लाइन ऑफ बिजनेस एज द मैनेजर्स। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप में से निकालते हैं, दूसरे ग्रुप में से ले आते हैं। ठीक है, ज्यादा सैलरी दे के,
तो कभी कोई टाटा से रिलायंस में चला जाता है, कोई रिलायंस से कोई जो है वो अडानी में चला जाता है, तो है ये ना। तो चेंज नहीं होता ना, है, मतलब देखो अभी एनर्जी के अंडर में रिन्यूएबल मैनेजर है, सो रिन्यूएबल हैज टू प्रोजेक्ट, सो दिस वन रिस्पांसिबल मैनेजर इज नॉट हाँ एनर्जी। बिल्कुल, ये जो रिन्यूएबल के पास जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट ना वो खोलना पड़ेगा। वो ना क्या होता है कि जब तक हम प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करते ना, तो उसका डेटा चेंज नहीं होता। हाँ पहले ओके, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो। इसको ऊपर अच्छा नहीं, वो कर दिया इसने, कर दिया, ये ठीक है। हाँ कर दिया। क्या कर दिया? नहीं, इसका जो है ये इसको इसका भी रिन्यूएबल होगा मैनेजर रिन्यूएबल। चाहिए ना। हाँ देखो, ये आप ना पहले प्रोजेक्ट को खोलो, पहले प्रोजेक्ट को ना खोल लो पहले, इसको क्योंकि प्रोजेक्ट जब खुलता है ना तब इसका लॉक खुलता है ना। अब इसका डेटा चेंज होगा, अब इसमें चेंज करो, अब इसको कर दो रिन्यूएबल। हम्म ये इसको भी खोल लो। ठीक है, प्रोजेक्ट खोलने के बाद जो है डेटा चेंज होता है। अब ये भी जो है रिन्यूएबल के पास जाएगा। हाँ हम्म देखो, डेटा सेव करो, ये लेफ्ट साइड में जो फ्लॉपी है ना, जो आइकन, ये आपके लेफ्ट पैनल में, इसको क्लिक करो। हाँ ये सेव हो गया, कमिट चेंज होता है। हम्म तो कमिट चेंज मीन पुशिंग द डेटा इनटू द डेटाबेस। क्या होता है, अगर क्लाउड में भी हम काम करते हैं ना, हम्म तो क्लाउड से क्या करता है, ये कुछ डेटा जो है ला के लोकल मेमोरी में ले आता है। तो हम्म लोकल मेमोरी में हम कुछ देर काम करते हैं, तो कुछ कुछ देर बाद ये खुद भी उसको अपडेट कर देता है डेटाबेस में, या तो हम ही कर देते हैं अपडेट उसे। So this all changes when we can do when we create the project or like program. नहीं, ये तो देखो, क्रिएशन के वक्त तो अगर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम कर अच्छा, देते उसके हैं। बाद हम लोग अगर मान मतलब लो ये स्ट्रक्चरल चेंज ऑर्गेनाइजेशन का हमारे प्रोजेक्ट के बाद हुआ है, तो उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। हम्म बनाते वक्त तो हमने प्रॉपरली जो भी अवेलेबल है वो उसी को देना है पहले। मान हम्म लो अगर ये एनर्जी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, अगर ये मैनेजर ये अवेलेबल थे, तो वैसे ही उनको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और मान लो इनका रोल बाद में क्रिएट हुआ है, तो बाद में भी प्रोजेक्ट की रीऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। हम्म। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द प्राइमावेरा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल वाले प्रोजेक्ट में। तो फिनिश टू स्टार्ट क्लियर है, इसको यूज कर लोगे ना रियल लाइफ में, हाँ, फिनिश टू स्टार्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में लगा लोगे। हाँ, द लाइक प्रोजेक्ट जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट का प्रीडिसेसर आएगा उसका। वो तो बाय डिफॉल्ट, ये जो ब्लू लाइन है ना, हाँ, ये तो ब्लू लाइन जो है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्रोजेक्ट, ये नहीं, ये देखो, ये टाइम लाइन में, टाइमलाइन में। हाँ कैलेंडर में हाँ देखो, ओके। भाई यहीं से होगा स्टार्ट, यही तो इसकी वो द बाउंड्री है। आप ये समझो कि ट्रेन लगी हुई है स्टेशन पे, तो कहाँ पे लगेगी जाके, जहाँ हम्म पे प्लेटफॉर्म जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से तो शुरुआत होगी, फिर उसके बाद जो है बाकी डब्बे लगेंगे, हम्म। है ना। तो बाकी डब्बे जो है कई प्रकार से लग सकते हैं। अब हम्म रेलवे में तो डब्बा फिनिश टू स्टार्ट ही लगता हम्म है। साइड में तो नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पे लग सकता साइड में। हम्म कैसे, देखो, मैंने कहा कि व्हेन आई स्टार्ट एक्टिविटी 3 आई शुड स्टार्ट एक्टिविटी 4। तो मैंने कहा भी रिलेशनशिप प्रीडिसेसर, और प्रीडिसेसर मैंने किया असाइन एक्टिविटी 3 को। अब क्या होगा कि ये ना, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए ये सोचता है कि हम फिनिश टू स्टार्ट ही लगाएंगे, तो हम्म। फिनिश टू स्टार्ट रहता है ज्यादातर, बट वी विल चेंज इट टू स्टार्ट लाइक दिस। अब स्टार्ट टू स्टार्ट की आपको इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी कि भाई हाउ द स्टार्ट टू स्टार्ट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय यू इन द पास्ट और यू प्लान टू यूज इट। कैसे करोगे? हम्म। दो एक्टिविटीज है वो सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, मतलब दोनों का प्रीडिसेसर जो है वो कॉमन हो सकता है या नहीं नहीं, यहाँ पे एक तो प्रीडिसेसर क्लियरली है, टास्क 3 तो प्रीडिसेसर है ही है। हम्म, यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जहां से एरो स्टार्ट होता है ना, वो हम्म, प्रीडिसेसर होता है। तो ध्यान रखना कि प्रीडिसेसर कौन होता है। अब आप लिख लो एक डेफिनेशन। अब हम्म। लिख, जहाँ से एरो से स्टार्ट हुआ वो प्रीडिसेसर है, हाँ, मतलब। तो प्रीडिसेसर टास्क इज द टास्क which controls, लिख लो, हम्म the start or finish time of the successor task।
The start or the finish time of the successor task. ठीक है? okay. अच्छा, अब ध्यान से देखना ऊपर गैन चार्ट में प्रीडिसेसर हमेशा एरो को शूट करता है और सक्सेसर हमेशा इसको झेलता है। ठीक है, इतना बस याद रखना जो बात समझा रहा हूं कि प्रीडिसेसर एरो शूट करता है किसको? सक्सेसर। कहाँ शूट करता है? उसके स्टार्ट टाइम में शूट करता है या उसके फिनिश टाइम में शूट करता है? तो अभी तो हम देख रहे थे फिनिश टू स्टार्ट, अब हम देख रहे हैं स्टार्ट टू स्टार्ट। अभी इसका जो है ना, जो प्रीडिसेसर बोल रहा है कि व्हेन आई स्टार्ट यू आल्सो स्टार्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं पहले देता हूँ एग्जाम्पल, आप सोचना, पहले अपनी इंडस्ट्री से सोचना। देखो हमारा क्या है कि एक टास्क होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की ना टेस्टिंग चल रही है। अब सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो मैंने अपने ना टीम मेंबर से कहा देखो उस तरफ से टेस्टिंग चल रही है, तुम साइड बाय साइड ना इसकी डिफेक्ट फिक्सिंग भी कर दो। तो उसने क्या किया कि साइड बाय साइड डिफेक्ट फिक्सिंग भी उसने जो है वो करनी वो स्टार्ट कर दी। अब इसमें देखना, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। मैं इसका एडवांटेज अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मान लो ये ना 15 दिन का टास्क है और ये भी 15 दिन का टास्क है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि इसको ना फिनिश टू स्टार्ट में करो, ये जो फिनिश टू स्टार्ट है ना टेक्निकली इट्स नॉट रॉन्ग। टेक्निकली मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो के कंप्लीट करने दो, उसके बाद जो है आप इसकी डिफेक्ट फिक्सिंग करना है। इसमें कुछ टेक्निकली गलत है क्या? नहीं है। टेक्निकली गलत नहीं है उसमें। तो टेस्टर क्या करेगा, लिस्ट बना के डेवलपर को दे देगा, तो डेवलपर क्या करेगा, लिस्ट देखेगा, ठीक करेगा। लेकिन देखो कितना है ड्यूरेशन, देखो ये WBS में देखो कितना है ड्यूरेशन, 40 है ना? days. है ना? 30 है। अब मैंने थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस लगाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगाई। मैंने कहा यार ये तो बाई टेक्नोलॉजी तो मैं जानता हूँ कि ये दोनों साइड बाय साइड हम ये कर सकते हैं, क्यों ना हम इन्हें साइड बाय साइड कर सकते हैं, तो हम करें, तो इससे हमारा टाइम सेव होगा। तो मैंने क्या किया, इसका रिलेशनशिप चेंज कर दिया। अब इसमें देखो ड्यूरेशन कितना हुआ, टोटल ड्यूरेशन 15 हो गया। अब देखो वो 15 क्यों हुआ, ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये विजुअली। अच्छा इसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग है। अब मेरा जो डेवलपर है वो कह रहा है कि सर फर्स्ट डे मेरे पे काम नहीं रहता, मेरे पे ज्यादा। मैंने कहा तुम एक काम करो, यू स्टार्ट योर एक्टिविटी 1 day फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज एक्टिविटी, यू टेक 1 day's डिले, so that delay will be represented in the lag time column. I will put 1D like this. Now the total duration, even though it is 15, but it is still very good, it is still optimal, because क्या होता है कि जो डेवलपर फर्स्ट डे जाके जब बैठता है टेस्टर के बगल में, तो टेस्टर जो है वो सेटअप कर रहा है, एनवायरमेंटल सेटअप कर रहा है। वो कह रहा है कि आज तो जो है मैं खुद ही पहले मैं सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पढ़ रहा हूँ, फिर मैं टेस्टिंग करूंगा, शाम तक एक आध जो है वो डिफेक्ट आता निकल के, तो पहला दिन वेस्ट होता है। तो इसलिए हमें पता है तो कि पहले दिन जो है उसका कोई काम नहीं होता। वी टेल हिम दैट यू शेड्यूल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज टास्क बट 1 day डिले। तो हमने लैग टाइम डाल दिया। अब मैं इसमें बताता हूँ, देखो क्या है इसमें फंडा क्या है। अब मान लो कि ये जो जो टेस्टर है ना, ये अपने काम को, ये मान लो ये शिफ्ट करता है, जैसे ये ना इसका ये कैलेंडर है, इसने कहा मैं 7 तारीख को करूंगा, और इसने कहा जैसे ही 7 तारीख को, तो इसका भी काम चेंज हो गया, इसकी डेट चेंज हो गई साथ में, क्योंकि वो क्या है उसका सक्सेसर है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो ये एक्सकवेशन को मैं 10 दिन कर देता हूँ, उससे क्या होगा, बैक फिलिंग भी शिफ्ट होगी, आपका जो है कंप्रेशन भी शिफ्ट होगा। अगर मैं बैक फिलिंग को 10 दिन कर देता हूँ तो इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, कंप्रेशन पे आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन उसका सक्सेसर है ना। तो इसका मतलब ये है कि द फिनिश टास्क, द फिनिश टाइम ऑफ द predecessor is controlling the start time of the successor, right? है ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि वहां पे फिनिश टाइम कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट। अब यहाँ पे इसका स्टार्ट टाइम कंट्रोल कर रहा है, इसका जो 7 जनवरी है इसके 8 जनवरी को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको स्टार्ट टू स्टार्ट। जैसे मैं इसमें गया, मैं कैलेंडर में, और मैंने कैलेंडर में यहाँ पे मैनुअली डेट चेंज कर दिया और मैंने डाल दिया 40। अब ये भी आगे जाएगा, देखो ये भी आगे गया,
है ना। अच्छा, अब आपने ना एक चीज नोट करना है, मैं बल्कि नोट में करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। जब भी कोई डेट में मैनुअली चेंज करता हूँ ना, उसमें कंस्ट्रेंट आ जाता है, उसमें देखा ये स्टार लग गया है, ये जो स्टार है, स्टार का मतलब है कंस्ट्रेंट। अब मैं कंस्ट्रेंट को हटा दूंगा यहाँ से, मैंने कहा भी नो कंस्ट्रेंट, नन, अपने आप आ जाएगा पीछे ये। मतलब आपने जो डेट चेंज किया 4 की जगह 7, सो वो कंस्ट्रेंट लग गया क्या? इट वो मीन कंस्ट्रेंट लग गया, वो 7 तारीख पे वो चला गया। और ये प्रोपोर्शनेटली जो डिफेक्ट फिक्सिंग है वो भी 8 तारीख पे चला गया, क्योंकि एक दिन का तो लैग वो, टाइम है ना यहाँ पे, ये देखो या ये राइट, लैग टाइम है। और लैग करेक्ट, टाइम कहाँ पे, ये रिलेशनशिप के साथ लगा हुआ है, देखो। राइट। मैं कहा इट इज ए स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप विद 1 डे लैग टाइम, ठीक है, इसके सक्सेसर में है। कैन वी और कैन इसके वी डू सक्सेसर में ये प्रीडिसेसर में दिखाई देगा। जो डिफेक्ट फिक्सिंग का तो ये प्रीडिसेसर हुआ ना, इट? तो इसलिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है लैग पे। Can we do it again one time? Like can हाँ we हाँ change बिल्कुल, मैं date? नहीं, मैं काम करता हूँ ना, मैं रिलेशनशिप को ही मैं रिमूव कर देता हूँ ना। अच्छा, अब आप एक नहीं, काम वो नहीं, वो करो। नहीं, वो 7-8 वाला जो डेट है ना, जो मतलब हम लोग जो मैन्युअली डेट चेंज किया ना। नहीं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले आप मेरे को ये चीज बताओ, हाँ, आपका ओके। एग्जाम्पल क्या है। मैं आपका एग्जाम्पल सुनना चाहता हूँ स्टार्ट टू स्टार्ट। आपके जो है सिविल इंजीनियरिंग में एग्जाम्पल क्या है स्टार्ट टू स्टार्ट। मेरा इलेक्ट्रिकल है, पर एक्चुअली आई एम नॉट डालो यूजिंग डालो। लाइक माई, अभी लाइक मेरा कॉमन हो चुका है, सो लाइक I'm like not in particular any discipline, so I have to look out everything like wherever it comes related to estimations or cost reporting and all that. So हाँ बिल्कुल, नाउ but यू आर द प्रोजेक्ट like मैनेजर। I can give you example like हाँ when we are एग्जाम्पल like दे दो। when we are doing like change order, just example. हम्म Okay, so what we do when we start the maneuver calculations and all that, okay, for the activities, at the same time we send for the quotation request for the procurement. हम्म Okay, so that both activities starts normally parallel, like kind of, we are preparing like MR and, sending for request for quotation, and same time we are doing also the kind of, maneuver calculations for particular activities, which is physical. And then हम्म wherever material required, we same time we send for quotation because quotation will take, some time to come. So we have to do that activity in parallel, like, in the starting itself. Or we राइट। can say like, reviewing, when we are in the review cycle. So हम्म at the review cycle we have two activities we need to do in parallel, like, we need to check like, the document provided by contractor, and also we need to check same time the document which is provided by company, like if both are matching or like, kind of. So that activity is like we have to do at the same time, we need to start at the same time, kind of. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसके अंदर डालो नाम, नाम इसके अंदर डालो, सो दैट इट इज ए वैलिड रिलेशनशिप। यू पुट द प्रीडिसेसर नेम, यू पुट द सक्सेसर नेम, Okay. डालो उसमें। बिल्कुल एग्जांपल पक्का कर रहा है, बिल्कुल। Yeah. बिल्कुल ठीक। uh, Means, specification is a requirement. इसमें हाँ ये होगा। और इसमें स्टार्ट टू स्टार्ट में आप थोड़ा सा लैग टाइम डाल सकते हो, लेकिन ये So होगा स्टार्ट टू स्टार्ट, बिकॉज द स्टार्ट टू स्टार्ट इज द सेंसिबल थिंग टू डू, इट सेव्स द मैक्सिमम टाइम, and wherever possible we should do start to start and finish to finish, because both of them are called the compact durations. इसमें एक दिन का लैग डाल दो। हाँ, और ये अब आपको रिलेशनशिप टाइप चेंज करना पड़ेगा यहाँ।
बाय डिफॉल्ट तो वो फिनिश टू स्टार्ट डालेगा ना। हाँ परफेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें कितना हो गया ड्यूरेशन, 16 डे हुआ, ठीक है ना। इससे टाइम सेव हो रहा है ना हमारा। इसमें लीड कहाँ से डाल सकते हैं, लीड टाइम? लीड टाइम, हाँ इसी को अगर माइनस कर दोगे तो, लेकिन इसमें अच्छा, लीड माइनस टाइम कर नहीं, देंगे तो लीड हो जाएगा, ओके। लीड नहीं चलेगा, क्योंकि कोई सक्सेसर ना हाँ, वो तो इसमें स्टार्ट टू स्टार्ट एक्टिविटी नहीं है, आई मीन स्टार्ट पे सक्सेसर पहले थोड़े ना स्टार्ट होगा, हाँ वही। प्रीडिसेसर पहले ही होगा। यहाँ पे लीड जो है वो तो जीरो से ही रहेगा। हाँ लैग पॉजिटिव हो सकता है। लीड कहाँ पे आएगा मैं भी आपको बताता हूँ। देखो लीड इसमें A1000 और A1010, वहां पे लीड टाइम चलता है। एक्सकवेशन के पैरेलल में जो बैक फिलिंग कर दी, और बैक फिलिंग के पैरेलल में हमने थोड़ा सा कंप्रेशन कर दिया, वहां पे लीड टाइम चलेगा। यहाँ पे लीड डालेंगे तो क्या होगा, ये तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो तो मतलब वो दिखाएगा पहले की डेट, 4 तारीख से भी पहले को वो चला जाएगा फिर। तो वैसा तो नहीं है ना वो, नहीं है, सही है। इसलिए यहाँ लीड टाइम नहीं डलेगा। या तो यहाँ पे जीरो लैग रहेगा या फिर एक दो पॉजिटिव लैग रहेगा, है ना। अच्छा अब हम चलते हैं फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश पहले मैं दिखाता हूँ इसमें इसकी शक्ल क्या होगी। आप एक काम करो, टास्क 5 की जो ड्यूरेशन है ना, इसमें 18 डाल दो पहले तो, 18। अब टास्क 18 से सिलेक्ट करके इसका सक्सेसर सिलेक्ट करो, टास्क 6 को। अब यहां से सक्सेसर में जाओ, स्क्रॉल डाउन, हाँ, और इसमें प्लस कर दो, और इस बॉक्स को बंद करके यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप को फिनिश टू फिनिश कर दो। अरे इस साइड में आपका वो दिखाई दे रहा है एक्टिवेट विंडो, ये एक्टिवेट विंडो का ना, ये देखो वाटर मार्क आ रहा है, ये देखा ये कॉर्नर में, ये आपके देखो, ये आपके प्राइमावेरा का ये जो डेट आ रहा है ना, ये जो आपके प्राइमावेरा के इसमें देखो एक्टिवेट विंडो का ये जो है ये वाटर मार्क मार रहा है। तो ये राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे नहीं बिलो बिलो बिलो, देखो रिलेशनशिप के बिलो ये कह रहा है एक्टिवेट विंडो। हाँ, एक्टिवेट विंडोज, हाँ ओके ओके ओके। ये इसलिए तो शायद नहीं हो रहा प्रॉब्लम, जो ब्लू। पता नहीं, वहाँ पे एक्चुअली जब मुझे कंप्यूटर दिया तो दे एक्टिवेटेड ओनली। अच्छा चलो कोई नहीं, ये मैंने इसलिए आपको ये ध्यान दिला दिया कि ताकि उसका अगर लाइसेंस प्राइस लिया है मतलब उसमें तो Actually, एक्टिवेट। I just you bought as a unit only, so I did not buy separately. तो देख लेना लाइसेंस नंबर, कई बार क्या होता है स्टिकर होता है उसके ऊपर रहता है ना, स्टिकर वीकर में होगा। चलो कोई बात नहीं। Okay. अच्छा अब मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल। देखो मेरे प्रोजेक्ट में क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है। पहले मैं अपना एग्जांपल दूंगा, देन योर इमेजिनेशन विल वर्क। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है ऐसे। अब क्या होता है कि अब ना एक आदमी है हु राइट्स द मैनुअल इन माय प्रोजेक्ट, सो ही कम्स टू माय प्रोजेक्ट, ही सेज कि सर यू डोंट नीड द मैनुअल। हाँ यस आई नीड द मैनुअल। So when should I start writing the manual? I say it's not important when you start. It is important that you finish along with the software development. So when my software development finishes, your manual should be ready also. So what he does, he just aligns his task like this: write manual, and it is aligned with finish to finish of the software development. Now suppose if he needs more days than 6, so just type 8 here and see the effect. Do you see the effect on the Gantt bar? What happened? His finish Same, date is finish remains same, yeah. but his start date preponed. Correct. It means that if he has to finish by the development of the software date, and if he needs more duration than 6, then he should start earlier. है ना? अच्छा अब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ड्यूरेशन 20 कर दोगे तो क्या होगा? So that also like it will also drag the writing manual to 2 days. देखो अगर वो अपना फिनिश डेट चेंज करेगा तब चेंज होगा, वैसे तब वर्ती change होगा, अपने आप वरना से नहीं नहीं चेंज होगा। कर सकते। Right. अपने आप से सिर्फ इसका स्टार्ट डेट चेंज हो सकता है। अब करना उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 20 डालना जरा, 20 days. हाँ 20 करना, देख लो इसको कर लो, Yeah. है ना। अब वो उसके साथ जो है वो गया आगे, इट इज कॉल्ड द फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा अब इसमें फाइन ट्यूनिंग भी है,
वो मैनुअल वाला कह रहा है कि सर मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि जो शाम तक जो स्क्रीन बनती है ना वो मैं डाल नहीं पाता, वो मैं नेक्स्ट डे डालूंगा। मैं ठीक है, मैंने कहा एक दिन का टाइम लैग डाल लो, है ना, एक दिन का टाइम लैग डाल लो। अब यहाँ पे जो लैग टाइम है ना, वहां पे 0 की बजाय 1 डे लिख दो, कि जो राइट साइड में है ना, सक्सेसर के रिलेशनशिप में लैग टाइम है ना, आपको कि ये एक दिन एक्स्ट्रा ले लेगा फिनिश डेट से बस। अब इसमें फिर भी जो है ज्यादा दिन तो लगा नहीं है। अगर मैं मान लो एंड टू एंड करता तो कितना दिन लगता, 28 दिन, है ना, एंड टू एंड करता तो 28 दिन लगता। तो अभी कितने दिन में काम हो रहा है, 21 दिन में, 7 दिन तो फिर भी सेव है। सही है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो आपका स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश होता है ना, दीज आर कॉल्ड कॉम्पैक्ट ड्यूरेशंस, कॉम्पैक्ट ड्यूरेशन रिलेशनशिप्स। इसमें इसमें जो है टाइम बचता है, तो यही कोशिश हम करते हैं कि भाई टाइम बचे प्रोजेक्ट में। जहाँ पे फिनिश टू स्टार्ट है, या तो वहां पे लीड टाइम डाल दो, या फिर वहां पे स्टार्ट टू स्टार्ट या फिनिश टू फिनिश डाल दो। ठीक है, क्लियर है? So when you have to अच्छा। control the finish line or like for particular activities, you हम्म। can use these relationships kind of. हाँ, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग, वेयर द टास्क आर डन इन पैरेलल। दिस इज द टेक्निक ऑफ द शेड्यूल कंप्रेशन यू विल लर्न इन द पीएमपी, फास्ट ट्रैकिंग एंड क्रैशिंग। क्रैशिंग क्या होता है, जब एक ही टास्क में हम ज्यादा रिसोर्स लगा देते ना, और उसका ड्यूरेशन जो है हम ये घटा देते हैं प्लानिंग में, तो उसको हम कहते हैं क्रैशिंग। क्रैशिंग, डूइंग वन टास्क विद मल्टीपल रिसोर्सेज, फास्ट ट्रैकिंग, डूइंग मल्टीपल टास्क इन पैरेलल। ओके, तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है प्रोजेक्ट में। वी ट्राई टू डू द शेड्यूल कंप्रेशन। ठीक है, शेड्यूल कंप्रेशन, बट द कंप्रेशन शुड बी डन विद इन द लिमिट्स ऑफ द क्वालिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, वी शुड नॉट इंक्रीज द रिस्क, नॉट डिक्रीज द क्वालिटी। अब हम आते हैं स्टार्ट टू फिनिश में। तो स्टार्ट टू फिनिश से एक पहले एक ब्रेक ले लें 15 मिनट का, Sorry? एक ब्रेक ले लेते, 15 मिनट हाँ ले लेते हैं, no रिलैक्स हो worries. जाएंगे। हाँ ठीक है, पक्का तो पक्का. लेट अस मीट 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, Yeah. Okay. Okay. तो रिकॉर्डिंग शुड बी पॉज्ड। Yeah. ठीक, Recording. I need to pause recording, and I will. so now we are going to do the constraints. So Okay. how are we going to do the constraints? So basically what we will do, we will create two tasks, task 1 and 2। आप करो, क्रिएट करो दो टास्क। तो ये एक्टिविटी होगा राइट? WBS नहीं बताया अभी. हाँ करो, एक सेकंड।
Okay, I'm back. 1 minute, Mr. Sujay. Just 1 minute. आपका लंच टाइम कितने बजे रहेगा? एक मैं फोन पे हूँ. जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ. कर लो, फोन पे बात कर लो. ठीक है, मैं यहीं पे हूँ.
Sorry, Mr. Sujoy. Sorry, I was like on urgent call. नहीं ठीक है तो एक लंच ब्रेक ले लिया मेरे ख्याल से आपका भी lunch Definitely. I forgot actually because we are late. You already got late. नहीं ठीक है So तो what time? What time? मेरा तो एक्चुअली जो है लंच टाइम यही होता है क्योंकि हाँ। आजकल जो है वो कोरोना चल रहा है इसलिए जो है खाना ही लेट बनता है घर की साफ सफाई Same here. तो इट इज नाउ 4 PM हियर तो फिर 5 बजे मिलते हैं तो मतलब आपका जो है कितना बज जाएगा देखो आप No problem. After 1 hour, I will be back. आफ्टर 1 hour ठीक है Okay. so I am here only just give me a ring on my mobile phone okay Okay. So do I need to close this call or let it be open? no you need to pause it to start recording. Yeah, record started. The general, yes, in the general. See, do you see this box here? Yeah. Default version. You change it to 1. Now you change it to 1. Now you close it and put a new. Now you put a new task. You insert a new task with the insert button. You see the default duration is 1. Right. Why do we need the default duration? See, actually, it is a matter of convenience. If you feel that in your organization, mostly your task is minimum starting at 4, 5, so you can put the 4, 5 or 6, whatever is there. Correct. Since I'm teaching my students using the example of 6 days, so that is why I tell that, okay, you make from 5 to 6. So that, because if you create one day bar, it is hardly visible. Then you have to type 6 once again. Correct. Because in my training, mostly I'm using 6. So I tell people that you put 6 there. So whenever you do like project, you change it according to your convenience. Minimum change. So you change it according to your convenience. Right. Agree. Okay. So just give me a moment. Actually, I was finishing a mail. No worries. Thank you. Okay. So just. इसके अलावा जो हाइड्रोक्सी Prisha 12 Okay, so let's start. So we are going to learn about the constraint. So in the constraint, see, suppose if I have task 2 and 3, and if I'm going to link them, simply like the finish to start. See how they behave. So they will link end to end. Very simply, so which is very much normal. Now then, what happens is that that when I'm doing the real life work. So one of my team members says, okay, sir, the person who is going to work on the task 2,
So he will be available from 20th of January onwards. Okay, so he is not available before that. So okay, so let me do the thing. Let me configure the column, because sometimes if I don't need certain columns, so I don't put them. So I don't need them. Okay, but one thing I'll do, I'll put the predecessor and the successor here, because it is good, because we are doing the dependency. So this time, since I don't know which group they are in, and this time I'll go for the list, and then I will put the word like pred. So when I say pred, so I will reach the predecessor. So I'll put the predecessor, and then I will do a control F once again. Then I will put such SU double C. So once I put that, so it will take me to the successor. No, I put too much. Okay, so Oh, what I will do, that see, this can happen. This is a mess. So what you should do, you should just try the cancel, so that you go to the original configuration. okay. Okay, so that's why I tell people that that not Yeah, to yeah. You mess by up the, mistake and you mess clicked up on the that. original. You should always make a copy and use it. Okay, so if you make a copy and use it, so then you are on the safe side of the thing. So I say predecessor, I take it, and then I say successor, as you see. So successor, say find next. So it finds me successor. So I take successor, predecessor, successor, then I say cancel, and I say okay. So this is something which is comfortable. Now I'll just show you. So this task is the predecessor, its successor is 10. Sometimes it is easier for the people to understand. Now, what happens that this guy who is going to work on the task 2, he'll be actually not be able to start on the 12th, but he will be able to say start on the say 20th. So what do I do just for my knowledge? So I go to the status, okay, and on the status we have got duration, then we have got status, then we have got the constraint. So I put a constraint. I say start on or after. Now, why is it start on or after? Because he will be either say available on the 20th or after the 20th, any day he can start the work. So after selecting the start on or the after, then I select the calendar, and I select say 19th. Now what will happen? This task will go and position itself on the 19th. So I click on the hide Mm, window, and then I do a save here. It is already saved. Now just see, do you see this gap? This is actually not a time lag, mm, because the time lag has a solid line. mm. This one has the dotted line. So dotted line means that it has a flexibility. And do you see the star here? Do you see the star on the 19th of the January? Yes. So the star tells you that this particular date has a constraint. Okay. Now what we are going to do, that we are going to go into the original duration column of the 1000, and we are going to increase it. Suppose if I increase it to it, because the outcome, if it is finishes on 13th, it's okay. So it will still wait. The outcome can be stored, or it can be kept on the site till the person comes. Now, if I make it 15, then it will then join back to back, Mm, because when I'm making it 15 days, so this task is going to 21 January. Suppose if I make it 14, it will come back. If I make it 13, it will come back. If I make it 12, it will come back. If I make it 11, then it will not come back. Why it will not come back? Because this person is going to join on the 19th. So this fact has to be noted in the notebook. In the notebook, you will find that Primavera is already providing you a category of the note. mm. So into this category, I'll go and I will add a note. Okay, the I'll write this. The main resource as assigned on task 2 will, or the number of the task will join on
19th January onwards. Okay. So, that is why this constraint is called start, on, or after. So this is how it works, right? So this thing is clear? Yeah, it's clear. Okay. Now there is another constraint which can be used on the finish date. Suppose some person is on the notice period. Okay. And he is on the notice period till the 31st of the January. So how do I take care of any task that he might be doing? It's like this. I'll go into the task 2. I'll go into the activity details. In the details, I will go to the status. Okay. In the status, this time I will put the constraint on the finish date. Now I'll go on the, I say finish on or before. Before. Okay. या तो 31 तक खत्म करो या तो 31 से पहले. So since 31st is a Sunday, so I will, yeah, I can still put this. So that's not a problem. Now this task should be finished. So I'm going to save it. So this task constraint, so just 1 second. This has to be finished on or the before. Yeah, fine. So this task should be finished on or the before 31st. I'm going to reschedule this. Okay. So the constraint has shifted to the finish date. Do you see this? This is the 23rd. So the constraint has shifted to the 23rd. Since this is the longest path in the project, it will be always be the longest. So what I'm going to do, just to show that it is actually not a critical path. Okay, so what I'm going to do, I'm going to insert a new task at the top. So do you see that I can change the number? I'll say long path, just like this. Okay, and in the long path, I'm going to put 20 days duration. So 20 days or 30 days. See this. Now, what is going to happen? So right now, this task is green. Both of them are green. See, just watch slowly and slowly as it is going to hit the 31st of the January. See, this task will become red. Why? Because this task will become the critical path due to its own constraint. See this. I'm going to make it 10. So what is the total finish date of both combination? 28. Now, suppose if I increase this, this or that, it has a combined effect. Now, okay, so just 1 second. That should not be too much. It would be 14. See, it has gone to the. Now, what I will do, I will include another column here. So that column is, I say, I will go to the group and sort by the list. Then I will do a control F. So I'll say total float. So total float will tell me that I want the total float column to land up here, and then I click on the OK. Now, do you see this? This total float is -1. Why it is -1? Because it is exceeding its own constraint by 1 day. Now, what if the constraint is reduced to 0? Still, it will be red. And what if the float is a positive number? Then it will be green. So it means that what is the conclusion? The conclusion is that a task can be critical even if it is a shorter task in the middle of the project due to the constraint, due to its constraint also. And constraint can be used for how many constraints are there? I'll show you the useful ones. See. So there is a constraint here. It says as late as possible. I'll explain this. This is very useful. So one is finish on or before. This is useful. Finish on. So it pins a date. So this is a flexible constraint, semi-flexible constraint. Mandatory finish is used on the finish milestone. Mandatory start is used on the start milestone. And start on or after, because if you want a flexibility, and start on or before if the person is on the notice period. So we will start this task on this date or else the person will go. So
this is finish on or before that we have used. Okay, finish on or before the 31st. Now there is another constraint here, as late as possible. I'll just show you that what is the utility of this. See, in a project, what happens that there are many tasks which are done at the end of the project. So what are those? See, according to the PMI, there are 5 process groups. So 5 process groups are like initiating, planning, executing, monitoring and control, which is in parallel with the executing and closing process group. So what do we do here that when I'm planning, immediately I have no idea that what task I'm going to put into the WBS. So what do I do? But I know that there is a WBS which is the closing. So I just write the name, closing process, just like this. Okay. And I'll just tell you that what is the technique that we do. We put here, see, it is a numbering system having single digit. So you know that 99 will be sufficient. If 99 is not enough, I put 999. Now, what is the benefit? If I go to the activity, I will see the WBS is created here with a 999 number. Now, that is the maximum that it can go, because if you create any WBS on top of it, it will be numbered like 1, 2, 3. You can create 998 WBS before this. Mm. Now, what is the benefit? See, I'm going to put the duration of the project as the 50 days. And in the closing process, when I insert a task, and you see this in number 1020, Mm. it is a 4-digit number. So what is the maximum it can go up to? It can go up to 9999. So I will start this series with 9000, like this. Okay. Mm. I say closing process 1, because PMI tells me that there are certain tasks which should be done at the end of the project. So, I'm going to put here, say, I'm going to do some closing process task here for 10 days. So I'll put 10. Now you do one thing. Now you yourself go to the status. Just go to the status. So, Don't make. Okay. Status actually, I'm taking class. I'll just call you back in a moment. as late as possible. I will call you in the break time. Okay. 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 Thank you. So if you go and make it as late as the possible, now what is going to happen? See, it is going to basically put it to the at the end of the project, but this is not due to the finish to finish. Okay, this is not due to the finish to finish. So this is due to the fact that this task has been planned like that. Now, why do we plan such tasks like this? Just click on the notebook. Just click on the notebook here and click on the add and put the constraint here. Constraint. And in this, close this. You close this pop-up and click on the modify. Now here you write this according to the serial number. Okay, now you write here cleanup work site. Right here, cleanup work site. I'll just tell you. Clean up work site. Clean up the work site. Second, press enter. Put labels on walkways and passages. Labels on walkways and passages. Restock unused material. Train client staff to use the building utilities. Client staff to use and manage the building utilities. जैसे होता है ना building में, जैसे lift होता है, generator होता है, power backup रहता है, ठीक है? Manage the utilities. Fourth, के बाद fifth,
फिफ्थ में रहेगा कि raise invoice to client after formal acceptance, after formal acceptance, ठीक है. Then 6, then release men and machines, men and equipment, release men and equipment. Okay, then make payment to vendors. Compile lessons learned. Archive the process documents. ये सब ये PMI का ही है सब, ठीक है ना. ये तो just to give you an idea. Now you click on the OK. अगर और भी कुछ रहता है आपके उसमें तो आप लिख सकते हो इसमें. अब मैं उसको बताता हूँ इसको हमने ऐसा क्यों किया. मैं आपको देखो, see these are the tasks. Since I'm an engineer but in a different domain, but in my domain what we do, we do not create any work breakdown structure for non-engineering tasks because it is not worth it. It doesn't work like that, because you know these are the non-engineering tasks, they work randomly. But I tell all my guys, see guys, we have to finish it within the last 10 days of the project, right? You get the point. You create the work breakdown structure, the sequence, the dependency only for the engineering task only. Non-engineering tasks are put into the lump sum duration, and we do not mention any individual task on the activity name. We put them into this checklist. So they will print this checklist and everybody will know that who is supposed to do restock. अब मैं ये किसी को मैं असाइन नहीं करूंगा कि आपका काम है restock. जिस आदमी का जो मटेरियल जिसने यूज किया है, जिसका बच गया है, वो वापस कर देगा अपने आप. और जिस आदमी का काम है जो बिल्डिंग को और ये जो बिल्डिंग के जो सराउंडिंग जो भी है एरिया, उस पे वो लेबल लगाएगा, एंट्री, एग्जिट, फायर एग्जिट, दिस एग्जिट, दैट एग्जिट, गो टू द फ्रंट रिसेप्शन, यू नो जो मार्किंग होता है ना, जैसे बिल्डिंग घुसते हैं पार्किंग से तो उसके अंदर एक लेबलिंग करनी होती है, बेसमेंट -3, बेसमेंट -2, बेसमेंट -1. लिफ्ट से हम बाहर निकलते हैं, लिफ्ट के बाहर जो है वो लेबलिंग रहती है, यू आर ऑन फ्लोर 01. तो यू नो ये सारा जो है ये सब काम लास्ट में किया जाता है, जब बिल्डिंग जब बिल्कुल साफ हो जाती है, जब भी चकाचक हो जाती है के बाद. वरना अगर सफाई करने से पहले अगर ये लेबल लगा दोगे तो क्या होगा, जो सफाई जो आदमी कर रहा है वो फिर वो स्क्रैच मार देगा उसको. लास्ट में करके ऐसे करके क्लाइंट को हम देते हैं. फिर क्लाइंट के सामने हम क्या करते हैं, फिर जैसे लिफ्ट वगैरह है, क्लाइंट इनॉग्रेशन से पहले एक दिन पहले सबके ऊपर एक होता है ना वो शीट मेटल के ऊपर जो प्लास्टिक रहता है वो सब उतार के सब साफ कर देते हैं. ठीक. So this is something which is the administrative task. So for that we are using the constraint. So this is the beauty of this constraint, as late as possible. Now see, now but you if which date it will consider? Just example, like if 29 like if 50 days like longest path activity which is completing on 3rd March, so this will consider also to be completed on 3rd March, right? अब इसके अंदर क्या होगा, हाँ, it will just मतलब कि it will just align itself. देखो ऊपर जैसे ये 3rd मार्च है ना, अब आप इसको कर दो 100 days. मान लो आप इसमें और भी टास्क डाल रहे हो, देखो उसमें डेट क्या हुआ 30th अप्रैल, इसमें डेट क्या आया आपका जो फिनिश डेट 30th April. You don't have to look at the Gantt chart. You know that what will be the picture on the Gantt chart. So basically both of them are not finished to finish, but as I am putting the task in between, I'm consulting my team members कि भाई बताओ और क्या है. तो as we are creating the project plan, so this is something that I know that it is a standard template कि भाई मुझे ये हर project में मुझे closing process में ये काम करना है. ठीक है. अच्छा, अब ये मान लो ये हुआ closing process 1. तो मैंने कहा इसका मैंने लिख दिया, चलो ये साइट का हुआ ये. ठीक है. अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि क्लोजिंग प्रोसेस 2 करना है मैंने, तो क्लोजिंग प्रोसेस मैंने 2 में लिख दिया क्लोजिंग प्रोसेस 2. तो ये है जैसे पेपर वर्क. तो आप चाहो तो ऐसे आप ये जो है ये बना लो.
आपको कि चलो ये पेपर वर्क में हम देते हैं लास्ट के 5 दिन। अब लास्ट के 5 दिन इसको करना कैसे है, इसमें जाना है स्टेटस में और यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो प्राइमरी एज लेट एज पॉसिबल। अब एज लेट देखो इसका फ्लोट जो है 0 हो जाएगा। देखो इसका फ्लोट हो गया 0, ठीक है। तो 0 फ्लोट का मतलब क्या है? 0 फ्लोट का मतलब है ये लॉन्गेस्ट पाथ के साथ ही अलाइन हो गया। फिर आप इसमें जाओ नोटबुक में, आप इसमें क्या करो कि पेपर वर्क जो आपने क्लोजिंग प्रोसेस का है आपका, ठीक है, आपने जैसे ये अथॉरिटी से आपने जो है लिफ्ट का अप्रूवल लेना है। लिफ्ट का एक होता है लाइसेंस होता है हर कंट्री में, वो लोकल म्यूनिसिपैलिटी वाले आके चेक करते हैं फिर वो देते हैं। तो वो पेपर वर्क हमें क्लियर करवा के देना होता है, क्लाइंट को हैंड ओवर करना होता है। बिल्डिंग में जो पावर सप्लाई हम जो लगाते हैं उसका भी पेपर वर्क वो फाइनल करा के देना होता है। तो ये सारी चीजें जैसे वाटर कनेक्शन का है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का है, फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस है, ठीक है, लिफ्ट का जो है वो है, अगर हमने कोई जनरेटर लगाया है, बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया है, स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है, उसका एक लाइसेंस भी रहता है। इंडिया में तो लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। Actually, we can say that internal site work and external works. हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि बिल्कुल लास्ट में हम इसको करेंगे, ये दिस इज पार्ट ऑफ द क्लोजिंग प्रोसेस बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड नॉन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग वर्क वो होता है कि जिसमें हम कोई चीज हम बना रहे हैं, ये तो पेपर वर्क है। So this is the indirect administrative task which is to support the project. So for this we do not create any work breakdown structure. It really doesn't work practically. अगर आप चाहो तो आप ये बना सकते हो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। हम इसमें क्या करते हैं, we just add like this, I say general notes या फिर constraints। आपने इसमें क्या करना कि टास्क चेकलिस्ट, ठीक है, आपने इसमें डाल देना ये चार टास्क चेकलिस्ट। इसमें आप डाल दो कि इसके अंदर ए बी सी डी ई ऐसे करके आप जो है इसमें टास्क डाल दो, तो जिसका जो भी टास्क होगा वो अपने आप को आराम से वो चेकलिस्ट में से निकाल के वो कर लेगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द दिस कंस्ट्रेंट एज लेट एज पॉसिबल। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है कंस्ट्रेंट। अगर मैं कंस्ट्रेंट अगर मैं हटा दूंगा, देखो इसमें क्या होगा, if I say none, it will immediately come to the first date of the project. So it will pick up the first date of the project because it has no predecessor. Now, if I make it as late as possible, so what it will do, it will conveniently position itself toward the end of the project. So that's a convenience for the planning team because there are certain tasks they know, they don't want to lose it from their mind or the memory. So, you can dump them here, then later on you can fill in the project like this. So, that you can always insert a WBS here. See this. See, so what you are going to get, WBS 1. So WBS 1, you can put like this, and you can push it up just like this. So it's going to turn up here like this, and you can move the activities into this WBS like this. If you select the activity here, okay, so do a Control X, and you can put the activities into this WBS. So you can create WBS 1, 2, 3, and it will be positioned in a serial number. So why did I put 999 here? Because I know because my WBS is not going. You can add as much as during the design development. Yes. So it really doesn't matter that whether there are gap between the numbering, but as long as it makes sense to you, it's fine. So here I've started the series with the 9,000 because I know that before this I won't be consuming up to 8,999 numbers. Okay. So that many tasks that I can insert. Okay. So that is the benefit of the as late as possible. Now I'm going to show you, sometimes the lines go the missing, so you'll have to check here, bar chart option. Show the relationship. Sometimes, it is there, the line is there, but it is not visible. So what you should do, shake it up sometimes. Okay, it is. So what you can do, refresh. Sometimes this thing works or something else will work. The line is there, but I don't know that yeah. Now you click here and there, now it has come.
because the line can be switched off. Because some of the contractors, I don't know whether it is stylish or not, so they provide it like that. Like very stylish people, they wear a wristwatch with just only 12 and 6. होता है ना वो घड़ी पहनते हैं जिसमें सिर्फ 12 दिखता है और 6 ही दिखता है और बीच का नंबर जो है वो गैस करना पड़ता है तो वो बहुत घड़ी महंगी होती है 50-60 हजार रुपए की होती है तो हमें वैसा नहीं करना so we have to show like this ठीक है so the line should be always visible so that we know that which task is basically is giving the reference for start or the finish date to which task like this. I'm going to show you very important constraint. It is very important for planning. See what happens that before I call my team for the planning, so what do? I create a milestone here within this group. So I create a milestone like this and I say this is say ground floor. Because it's a payment, ground floor completion. I have a payment date and I will put the number like this. So in this series, so what can be the maximum number? So in this series, the maximum number can be 90. So rest of the series will be filled. So ground floor completion. So to make it a finish milestone, I have to select the task type. Now you select the activity type. You select as the finish milestone. Activity type? Finish milestone. See, it has shape change and the days has become 0. See, the day has become 0. See, milestone is of always 0 duration. Milestone cannot have a duration. Why? Because milestone is just a marker. Okay. So milestone cannot have more than more than 0 duration. Now I'll tell you that what has happened. As I look at my contract says that the delivery date of the ground floor completion is 28th of the January 21. Okay. So what I'm going to do, I'm going to go into the status. Just click on the status. Status. In that, you select the constraint. Yeah, primary constraint. You say select a mandatory finish. And in the mandatory finish, you select the date 28 January 21. Now this no 20th February, not January, but February. Okay. Now, if you look at the milestone, so this milestone has placed itself somewhere in the calendar here. Now, I'm going to make this smaller. Okay, so that we can see it in one screen. So now, after putting this, I will call the engineering team to my room and I'll ask them, guys, see, we have a ground floor completion date on the, say, 28th of the March. So mandatory finish on 28th Feb. So this is something I need your help on. Okay. So can you guys help me? So they say, fine. So then they tell me, say, boss, we need to do certain tasks before this. I tell them, okay, tell me the task. So, you know, one by one, they are telling me the task. So I will first put the task here. Okay, I'll put some task here. Like this. And this task will be like, I'll say task 3. Okay, then task 4. Then task 5. Then I ask them, do you have any other task? They say, yes, sir, we have another task. Task 6 also is there. I say, fine, very good. Okay, so once I have put the task, so, you know, these will come with the default duration. So in the beginning, it is like this. Then I tell them, so let us sit down and do the calculation. So I link them. So basically, normally all the tasks, they won't be having only finish to start. There can be multiple combination. Now, I ask them, you tell me what is your duration for task 3. I ask the person who will do the task 3. He says, boss, for my task, it is 10 days. I say, okay, put 10 days.
Now I asked the other person. Okay, at the same time we should look at the total float column. So so you tell me that what is the duration? He says, boss, for me it is 12 days. Fine. So what is the duration of your task? He says, boss, it is 6 days. So what is the duration for your task? Task 6, boss, he says 4 days. Now, do you see that what has happened on the Gantt chart? Mm. See, in the Gantt chart, it is showing that our total duration, it has exceeded the target. Mm. Target date, it happens. This is a normal occurrence in any industry planning. Whenever you do the planning, you know that is going to happen. And now what do? We do the schedule compression. So no, this milestone is very flexible. I'll just tell you. So this no, this milestone is not flexible. That is why it is useful. And what is the purpose of the mandatory? See, if the mandatory milestone is used, it remains pinned down. Now, suppose if I change it to finish on, then it will not remain pinned down. It is still showing you that the float is minus 7 day, but it Mm. is showing on the Gantt chart. And that is very confusing. No, is So it it not? will take the last date of the Uh, task yeah, previously like assigned task which is completed, right? yeah, it is taking the last day. It is telling you that you have exceeded the last day by the 7 days, but it is not showing on the Gantt chart. On the Gantt chart, it is positioning itself at the end of. Actually, One question, task should be placed here, mandatory, finish here. So it one is minute, visible to me. It one is question. yeah. If you assign any milestone within WBS, Mhm. just example like, and then you assign the finish on milestone, then Mhm. it will take the last date of the task which is completed. You know, like No, no, the no, longest finish date it will yeah, consider if the constraint is finished on, right? yeah. So But it will if you, consider this finish milestone is only belongs to this WBS, this is belonging to this WBS. So right? let me tell you in the project. See, in the project, there is not only one finish date, there are multiple finish dates. Each of the Correct, milestone is a finish date. correct, The last finish date is actually the last finish date is the date of the last milestone. right. Every milestone has a finish date. Whenever we sign a contract, in Hmm. the contract it is written how the money will be given in the installments, and that installment is linked to the progress of the project. Correct. So that the client has to have faith in the project team that Hmm. they are showing some progress, and based upon that particular progress he will make the payment. So this is how the businesses work in the real life. In the Hmm. real life, no client will give you the full payment, and no consulting or no vendor or execution company will take the full payment at the end. Hmm. So every party is safe. Both the parties have a faith on each other that, okay, you complete this part and I will give you this much. You give me this much and I will give you this much. Now, Hmm. what is happening here is that now we have to do the schedule compression. Now I tell my guys, see, we have exceeded it by the 7 days. So can you tell me that how we can basically reduce? So, everybody is looking at the task. Then see, in the schedule compression, there are two techniques. One is the fast tracking, and another is the crashing. So fast tracking means when you are looking for the opportunity to do task in the start to start or finish to finish. Okay, so what happens that one of my guy points out कि सर ये जो टास्क 2 and 3 है ना, इसमें रिलेशनशिप जो है ये गलत लग गई है. एक्चुअली टास्क 3 का जो प्रीडिसेसर है टास्क 2, उसके साथ जो रिलेशनशिप है ना, सर ये रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट टू स्टार्ट. मैंने कहा भी ठीक है भाई, इसको वो करो, स्टार्ट टू स्टार्ट देखो. तो इसको स्टार्ट टू स्टार्ट किया. अब हमारा कितना हो गया टोटल फ्लोट? Plus 3 days. 3 days ना प्लस. अब ये जो 3 days जो है आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम कर रही है, एक सेफ्टी मार्जिन की तरह. एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है ना ब्रिज में, Hmm. एक्सपेंशन ज्वाइंट बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होता और बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होता. ठीक है. तो Right. एक्सपेंशन ज्वाइंट का जो है, जो फायदा हमें मिलता है, बिल्कुल वैसा फायदा हमें इसका टोटल फ्लोट का भी मिलता है. Hmm. अगर ज्यादा होगा तो गाड़ी उस पर खटर खट वो करेगी.
अगर कम होगा तो फिर वो गर्मियों में चिपक जाएगा, धीरे 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 ब्रिज ढीला हो जाएगा. So we put expansion joints just like that. We are putting the total floor. So I'll stop here. Okay. Okay, so I'll just stop here like this. So that is the benefit of this mandatory finish. Okay. ठीक है, ये जो mandatory finish जो है, I will put in each of my in my WBS before I start the planning, so that my guys, they are not confused, because they should always have an idea to know that why the finish date is to be met here. Because once they see this milestone, because when I bring them into the room, on the projection screen they will see only 5 milestones scattered across the timeline. And then I will tell them, guys, please fill in the engineering task before this milestone. So जैसे आपस में कई बारी लड़ाई हो जाती है कि भाई तुम ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, तो अच्छी बात है, जो वो वाली लड़ाई मेरे सामने हो जाए, साइड पे कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए. Do you get the point? So I tell my guys in my industry, भाई जिसने जो भी लड़ाई करनी है मेरे सामने कर लो. तो जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे ना, तो आपका जो डेवलपमेंट रूम है वहां पे कोई लड़ाई करता हुआ मिलना नहीं चाहिए कि भाई तुमने तो अभी ज्यादा बोल दिया, कम ज्यादा मैं फैसला करूंगा, तुम इसमें डालो. तो everybody will put in their task, and then it will exceed the finish date. So then we also look at it from the engineering point of view. So do we have any scope for the schedule compression by fast tracking or by crashing? So crashing means that I increase the resources on particular task to decrease the duration. If that is possible, I will do that also. But there is a point below which I will not go, because there is quality. That is you have to remember that suppose if I do not give sufficient time for the material curing for concrete or for paint, so that can cause problems in the quality and risk also. So if I find such a situation, since I'm planning much ahead, I have the time to escalate this matter to my seniors, matter to the client also. We can discuss it with the client. We can change the expectation. We can change the expected date, and we can have some kind of the annexer in the contract that this date has been changed as per the agreed meeting between the client and the senior management. So as to ensure the safety of the product as per the engineering standard operating procedure and engineering quality guidelines. Okay, one question here, like because I used to provide, when I do, because I'm in estimations and all that, I used to do this job, like number of days, like like how many days it will take to complete the job and all that. But actually it is very difficult to say without knowing the resources, which is planned. So just an example, like if I have to complete one substations, like like E&I activities, like in that particular cable tray activities. So I know the quantity, like I have like 3,000 meters of cable tray to be installed, right? So like now, if I go with the 5 teams, then it will take certain period. If I go with 3 teams, it will take certain period, If I go with like more teams, it will take certain period. So that this original duration is always variable on the basis of resources you apply or like Correct. so how without knowing resources, like we can take this number of days, like without providing them like the informations about how many resources we have counted, or like do we need to provide them this informations to the construction team, or they will decide and they will tell us, okay, we have considered this much resources and this is the duration. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन है, अप्रिशिएट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता था. देखो, तो see when I make the plan, first of all my focus is first and foremost on the time constraint. रिसोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा मेरी चिंता नहीं है, वो रिसोर्स मैनेजर की चिंता है. मेरे ऊपर मेरे बॉस हैं, तो बॉस को मैं दिखाऊंगा प्लान. ठीक है, मैंने बॉस को जो प्लान मैंने दिखा दिया, मेरे को ये I cannot hear. I think some disturbance is was there. I could not hear you. ठीक है, my internet was. Hello. Okay. I could not hear you. So you are getting my voice clearly or not? Now it's okay. Now I can get it. Yeah. Okay. So just tell me whenever you feel like I need to repeat something, you can tell me. Okay. Yeah. See what I'll tell you that my process as a project manager. See, first of all, as a project manager,
I have to take care of the constraint and quality both. Okay. Within the constraint, I have to deliver a quality. The quality should not be poor. The quality should be monetizable. Monetizable means that whatever I have done, so that should be acceptable to the client. If it is acceptable, client will pay for. So first and foremost, I have to ensure the quality within the given constraint. So because I cannot exceed the constraint, so I will do application of all the resources I need and I will come to the optimal constraint. Now suppose that this is my optimal plan with the three days of the 3 days of the buffer. So that is the total float. Okay, so 3 days for me is a sort of an optimal buffer. It is not too long gap and nor it is a short one. So it is good enough for the task to be done here. Now, what I will do, I will mail this plan after the meeting to the resource manager and tell the resource manager to provide me the resources as per the schedule. Okay, so from this I can get a report in which the report format, it will say that on which day I need which resources. So when I'm going to do the resourcing, I'll just show it to you how to create the resource timesheet from here and how to show it in the report so that the resource manager is able to plan the resources. Now what the resource manager will do, he will have to confirm on the mail. Now what happens that in our industry, the resource manager, when they're brought into the meeting, so in the meeting they say yes, 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 but after the meeting they don't say yes or no. They say no, they say nothing. You know, that's how. So because they are under pressure from various group, I also know. But for me, that is not the prerogative. My prerogative is to finish my project as per the promise which has been made by my boss to the client. So what I do that I mail the resource plan. See, right now I'm in the month of the August. The project is going to start on the January. You know why I'm using the advance date? I want to put it into your mind that you should plan early. Why? Because the resource manager have a tendency to say, अगर पहले बोल देते तो मैं दे देता. Do you get the point? Yeah, it's always late. Like if you ask, अगर पहले बोल देते तो मैं दे देता. आपने ही late बोला है. right. I just want to eliminate this excuse by planning her. अच्छा, अब रिसोर्स मैनेजर चुप है, मैंने मेल डाला, सीसी किया बॉस को, चुप है, फिर 3 दिन बाद एक और जेंटल रिमाइंडर. सो देन आई विल पुट इन द जेंटल रिमाइंडर, सी आई एम रिमाइंडिंग यू ऑन टाइम, प्लीज कंफर्म द रिसोर्स से अवेलेबिलिटी, and I write very clearly that without a resource mobilization for 3 months I am not going to start the project. 1 साल का प्रोजेक्ट करना है, 3 महीने का तो गारंटी लेगा ना वो. पहले 3 महीने का मोबिलाइज नहीं होगा तो मैं प्रोजेक्ट में हाथ नहीं लगाऊंगा. मैं बोल दे साफ कि मेरे को इतना सर्वर, इतना रैक, इतना जो है मुझे डेवलपर, डिजाइनर, प्रोग्रामर, टेस्टर, ठीक है, इतना सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है, इतना ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए डाटा सेंटर के साथ. और जब मुझे ये मिलेगा 3 महीने के लिए कम से कम, तो उसके बाद मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा और हर 3 महीने के खत्म होने से पहले अगले 3 महीने का रिसोर्स मोबिलाइजेशन का गारंटी चाहिए. ठीक है ना. तो रिसोर्स क्या होता है हमारे यहाँ, तो मेनली जो एक बारी हार्डवेयर रिसोर्स ले लिया तो ले लिया, बीच बीच में क्या चेंज होता है, ह्यूमन रिसोर्स चेंज होता है. तो जो ह्यूमन रिसोर्स जो टाइम टू टाइम जो चेंज होता है ना, तो उसकी मुझे गारंटी चाहिए. लेकिन वो गारंटी इंश्योर कर, मुझे तो अपना होमवर्क करना पड़ेगा. अब मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगा तो दूसरे को बोलने का बहाना मिल जाएगा. अब ये जो बात आप जो बोल रहे हो ना, ये बहुत ही कॉमन ऑकरेंस है, हर जगह पे प्रोजेक्ट में होता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट उसमें होता है. तो हम उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, देखो इंडस्ट्री में सबका रोल जो है ये बटा हुआ है. एक है प्रोक्योरमेंट मैनेजर, एक है रिसोर्स मैनेजर, एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक है अपना जो है क्वालिटी मैनेजर. हर आदमी अपना अपना काम करता है. मेरा होमवर्क अगर पूरा हो गया, बाकी ऊपर जो बॉस बैठा है वो उनका काम देखना है कि दूसरा आदमी इसके साथ भी अपना होमवर्क जो है वो पूरा करे. ठीक है, अब बॉस है ना वो सीसी में, अब बॉस उसको जो बुलाएंगे, उसको कहेंगे भी क्या बात है आप मेल का जो है ये मतलब ये जवाब क्यों नहीं देते. देखो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है. स्पॉन्सर इज द बॉस ऑफ यू एंड द रिसोर्स मैनेजर. आप अपना होमवर्क पूरा करो और फिर आप रिसोर्स मैनेजर को दो. So you tell the resource manager, see, this is my nearly complete plan, and based upon this plan, please guarantee the resource availability. आपको 3 टीम चाहिए, अब लिख दो मेरे को 3 टीम चाहिए. अगर 3 टीम नहीं होगा तो यहाँ पे डेट जो है वो एक्सीड हो जाए, माइलस्टोन डेट से हमारी पेमेंट लॉस हो जाएगी, लिक्विडेटेड डैमेजेस ले लेगा क्लाइंट हमारे से.
अब लिख दो ना पहले ही। इस इसलिए मैं ट्रेनिंग में इतनी एडवांस डेट यूज करता हूँ, 6 महीने की, 7 महीने की। एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालना चाहता हूँ कि हमें प्लानिंग जल्दी करनी है, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देना है। सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करने से नहीं होता है, वी हैव टू बी वेरी टैक्टफुल। करेक्ट। वी आर डूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद प्राइमावेरा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो वर्ड पीएम है ना, पीपल मैनेजमेंट भी होता है। ये जो पीपल जो है ना, आसपास के लोग, कई बार पीपल क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को बलि का बकरा बना देते हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही बलि का बकरा, पहले से ही उसको फूल माला पहना के प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक, कि इसका जो है वो बकरीद के दिन हम सब खाएंगे इसका। तो वो क्या होता है कि अगर सीखा हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, वो पहले से ही प्लान बना के वो फूल माला जो है वापस वो रिसोर्स मैनेजर के गले में डाल देगा। सही है ना? तो हमने उसको डाल दिए। अब डिपेंडेंसी उसके अंदर चलेंगे। आई पुट द बॉल इन योर कोर्ट, नाउ यू हिट द बॉल। सो इफ ही वांट्स टू हिट द बॉल, ही हैज टू गारंटी द रिसोर्स इन द रिटर्न मेल। अब वो रिटर्न मेल में जो है उसको करना पड़ेगा उसको। तो आप को कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने प्लानिंग नहीं की थी, आपने पहले एडवांस में जो है मुझे बताया नहीं था रिसोर्स। करेक्ट। अगर आपने बता दिया तो उनका काम है ना। मेरे को, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन ओनली डू एज मच एज द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू हिम। करेक्ट। है ना? ये कहा था कि नहीं मैंने? आई थिंक अभी बात हुई अच्छा, बट अभी मैंने बताया। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सपोज इफ देयर इज अ रूम इन विच यू रिक्वायर 1000 टाइल्स, आपने कैलकुलेट किया एरिया से, तो आपको जो दिया गया 999 टाइल्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, पूरा रूम क्या कवर होगा क्या? नहीं नहीं होगा ना, कहीं से कोना, कहीं से खाली करेक्ट। रहेगा। अच्छा, अब अगर आपको टाइल दिया जाएगा तो आप कितना मांगोगे? आपने टीम मेंबर को बुलाया, आपने उससे पूछा भाई देखो 1000 टाइल चाहिए, तो फिर मुझे आप जो है मुझे बताओ कि एक्चुअली कि भाई मुझे भी कितना टाइल चाहिए। सो हाउ मेनी टाइल्स शुड आई बी आस्किंग फॉर? सो यू शुड बी इंक्लूडिंग द variance due to the tile breakage. वेस्टेज एंड डैमेजेस Yeah, the wastage and damage should be included as the variance of the material. 5 to Because 10%. in the project, in the project plan, if you are counting the material cost, it should include the wastage also, so that the project material comes out right. So when you're planning the project, you should tell in the beginning that the percentage of the wastage is the 5%, and Yeah. which I need 1050 tiles for my project, so that my project plan is not running short of the materials in the middle of the project. Because if it is running short of the material in the middle of the project, whose fault is that? It is not fault of the software. It is fault of me. It is my fault. Correct. Because I am the planning manager, I am the project manager, I am the people manager, I am the profit manager, I am the process manager, I am the problem manager, and ultimately I am the promise manager. देखो कितना सारा मैनेजमेंट है इसमें। Right. Right. ठीक है, अगर आप पीएम बनते हो ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये नहीं True. कि आप पीएम बन गए और 10 साल तक आप चुपचाप बैठे और दूसरा आदमी आके अपने मन की बात करता है, तब उसको आप जो है टॉन्ट करते हो। क्यों? आप जब 10 साल तक थे तो आपको किसने मना किया था अभी मन की बात करने से? किसी ने नहीं किया था ना मना, सही है। है ना? तो इसलिए आपने मन की बात करनी है। और कैसे करनी है आपने मन की बात? प्राइमावेरा के थ्रू करनी है आपने। करेक्ट। ये आपके मन की बात को देखो, पिक्चर में दिखा रहा है, नंबर में दिखा रहा है, डायग्राम में दिखा रहा है, हर चीज में। ठीक है। ग्रेट। हाँ, yes, Riya, I am conducting a training session. I will get back to you in the break time. Okay, fine, thank you. So, this is the beauty of the Primavera, and this will give you the complete resource plan. I will show you how to get this out on the resource. Once you put this in front of all the stakeholders, so, everybody will come out in your support only, that, okay, we should be working like that, because the client has given a tight schedule. The only thing that remains to be done is to provide the resources on time. So this plan looks fine to us. This is what kind of the words that you will hear. So you will find the support from many quarters. See, it is based upon maths and calculation. Nobody can deny maths and calculation. Correct. If you have calculated, I need 1000 tiles, how can someone deny it? Absolutely. It is a 1000 square feet room, and the one tile is the 1 square foot. So I need 1000 tiles. That's maths. So nobody can do. And if you tell people there is a wastage of 5 tiles per 100, of course
the common sense will say that it is always useful to put 50 tiles extra so that the work will never get stocked at the end of the job done. So what we will do, if any tile is saved, so we will restock it. So okay, so what is more important? Finishing the work on time, keeping some extra 50 tiles is not a big deal. आपके रहते नहीं गाड़ी में स्टेपनी, एक दिन ट्राई करना, जिस दिन स्टेपनी को ना खोल के छोड़ के जाना घर में और देख लेना उसी दिन ही पंचर होगी। वो सिर्फ ये नहीं कि इमरजेंसी में काम होती है, वो टोटके का भी काम करती है। ठीक है, तो लेकिन अगर उसको आप अगर निकाल के गाड़ी चलाओगे, आपके गाड़ी में 15% कम फ्यूल कंजम्पशन होगा, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप जा रहे हो फैमिली के साथ बहुत दूर, 10 किलोमीटर दूर, और रात का टाइम है, हाईवे है और आसपास कोई है नहीं, और बिल्कुल आप वहां पे हो, ये कुवैत में, इंडिया भी नहीं है, ठीक है। अगर गाड़ी पंचर होगी क्या करोगे? तो आप तो स्टेपनी में से निकाल के जो है वो उसको करोगे ना चेंज, वो तो आप कर सकते हो। अगर वो नहीं होगी स्टेपनी तो क्या करोगे? तो दिक्कत होगी फिर बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इट इज बेटर दैट वी शुड प्लान लाइक दिस। तो ये क्या है, ये जो 3 दिन है ना, ये स्टेपनी का काम कर रहे हैं यहाँ, ये जो फ्लोट है। अब यहाँ पे आपने जो रिसोर्स प्लान किया है, अब इतना रिसोर्स जो है रिसोर्स मैनेजर को देना पड़ेगा। करेक्ट। ये तो प्राइमावेरा से बाहर की बात है, नहीं तो मैनेजमेंट की बात है, रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है। प्राइमावेरा में जो आपने प्लानिंग की है, अगर कोई इसको डिस्प्यूट कर सकता है तो वो अपनी वो टेक्नोलॉजी से वो बताएगा कि भाई ये जो स्टार्ट टू स्टार्ट क्यों नहीं है, ये जो 2 और 3 जो है ये स्टार्ट टू स्टार्ट नहीं है, क्यों फिनिश टू फिनिश है, या जो भी है, हाँ उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन ये जो टास्क 2 में जितना मटेरियल चाहिए, जितना मैन मशीन चाहिए, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। तो इसको आप पहले से इसको बनाओ, और जितनी जल्दी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उतनी जल्दी प्लानिंग इसका कर लो। और पहले जो है आप क्या करो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट। एक क्वेश्चन है इसमें, प्रीडिसेसर और जो सक्सेसर है उसमें ये अगर जो हम माइलस्टोन है ना, देखो सुनो, ये जो माइलस्टोन है ना, ये जगह जगह पे डाल लो, ठीक है। इसकी डेट जो है पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग टीम को बुलाओ। पता क्या होता है, इंजीनियरिंग टीम मेंबर सोचते हैं कि बॉस हमारे ऊपर प्रेशर डालना है, तो इसलिए मैं पहले उनको मैं बता देता हूँ स्क्रीन पे क्या करता हूँ, जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ पोर्शन जो उनके जो देखने का नहीं होता उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, उसका स्नैपशॉट लेके कैमरे से, और उस पर मैं लिखा, मैंने कहा गाइस देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट की हमारी जो डेट्स है ना, इस डेट पे इंस्टॉलमेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं, क्लाइंट इज द अल्टीमेट बॉस। अगर आप लोगों को क्लाइंट से कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी बात अभी मैं बॉस से मैं करवा देता हूँ। अगर मेरे से कोई लड़ाई है तो कर लो, लेकिन क्लाइंट से जो है कोई भी नहीं लड़ सकता, राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डेट बताया क्लाइंट ने, अब तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ और अपने आप बैठ के आपस में रजामंदी करके मुझे ये सब टास्क बीच में ये भर के दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टास्क है ना 199 और 2099, 3099, 4099, ये मैं पहले ही डाल लेता हूँ। ये मैं डालता हूँ, ये डालने के बाद सबको बुलाता हूँ रूम में, और प्रोजेक्टर पे मैं प्लान डालता हूँ। मैं कहा बीच के वो बताओ, आपस में जितनी लड़ाई करनी कर, लेकिन मुझे यहाँ पे 3 दिन का जो है इंश्योरेंस ये चाहिए, ये स्टेप नहीं चाहिए मुझे, ये 3 दिन की स्टेप नहीं चाहिए मुझे हर एक टास्क में, ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये है प्राइमावेरा का ये बेनिफिट है, बहुत ही बढ़िया तरीके बताता है। नाउ यू आस्क मी योर क्वेश्चंस। व्हाट आई वाज आस्किंग, भूल गया, एक सेकंड। हाँ, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर में अगर जो हम लोगों ने लेग डाला था ना, 1 डेज या 2 डेज, जो भी 3 डेज, वो यहाँ पे इसमें नहीं दिखाएगा ना? नहीं, लैग तो दिखाएगा। देखो लैग पता कब दिखता है उसको, जब इसमें थोड़ा सा जो अभी अभी इसमें जो प्रीडिसेसर आ रहा है, जैसे देखो एग्जांपल देखो मैं आपको 1000। बताता हूँ, देखो इसमें अगर मान लो मैं इसमें लैग डालता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको मैंने ये बड़ा किया है ना मैंने, अब इसको बड़ा करने के बाद अब ये दिखेगा मुझे। अब इसको जब मैं छोटा करता हूँ तो नहीं दिखता है मुझे। देखो यहाँ पे ना ये आ गया, ये देखो लैग आ गया, ये आ गया लैग। उसमें नहीं, यहाँ पे जो टेबल में प्रीडिसेसर जो सिर्फ एक्टिविटी आ रहा है, उसमें +3 -3 ऐसे कुछ नहीं आएगा? नहीं, ये तो आप डाल लो, ये तो आप इसके अंदर जाए तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो फैसिलिटी बहुत अच्छा बोला है आपने, एंड आई अप्रिशिएट। इसमें तो देखो, इसमें क्या क्या करो, इसमें आप कर दो लिस्ट, और इसमें करो कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल F करके देखो, इसमें देखो एक लैग रहेगा जरूर, कॉलम यहाँ पे जरूर रहेगा, लीड लैग, एक सेकंड,
इसमें लीड लैग नहीं है क्या? लैग अगर वहां पे दिख जाए तो बढ़िया, नहीं तो लैग तो आपको वहां पे तो दिखता ही है। एक मिनट होगा, मैं कैटेगरी देखता हूँ, मैं ड्यूरेशन में ग्रुप एंड सॉर्ट बाय कैटेगरी ड्यूरेशंस। क्योंकि मैं कोई रिलेशन देखता हूँ वैसे, तो मैं क्या इसमें करता हूँ। इसमें ना जरा चेक करना, मैं एक ना जरा पे कॉल का मैं रिप्लाई कर दूं, ठीक है? हाँ ओके, मैं चेक करता हूँ, चलो इसमें।
Okay, so I'm back. So we can start again. Yes, hello. Vishal, you're there? Hello, I'm here. I'm here. Just a minute. Okay. Yeah. I made it mute actually. Okay. Yeah. Let's start. Hello. Yeah. Okay. So Yeah, let us start. now I'm going to show you, see, the utility of the start milestone. So in the project, we need a date, so which is used to signal the start of the engineering. I'll just tell you that what happens, that when I'm doing a project, so my project might be starting on the 4th of the January, but what happens that in the beginning, in the project, there might be some administrative task. Now, what I need to do, that I need to put some buffer time. So, this is called the engineering or the site work start milestone. Now, in this milestone, I created like start milestone. So start milestone has a start date. Okay, start milestone, and I put the start date as, I go to the status and I go to the constraint. Suppose I want my engineering to start on say 4th of February. Okay, I want to use 1 month's time for the administrative task. Now, this milestone has placed itself on the 4th of the Feb. Now the project, suppose all these tasks, they put 4 February. हाँ 4th February, मैं आपको बताता हूँ क्यों 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 किया मैंने. देखो, इसको मैंने लिंक कर दिया, आई लिंक इट. ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मैंने ये टास्क 1 को लिंक कर दिया. अब ये टास्क 1 के पीछे ना ये सारे टास्क जो है वो अपने आप ही रीशेड्यूल हो जाएंगे. अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है. इसका ना नाम देखो, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा. इसका नाम है इंजीनियरिंग स्टार्ट. एक्चुअली क्या है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो टास्क है, जो बाकी के जो टास्क हैं, सो दे आर लाइक दिस. देखो, इसमें मैंने स्टार्ट माइलस्टोन में इसमें नंबर में डाल रहा हूँ 0980. ठीक है, इसमें डाल दिया, ये यहाँ आ जाएगा. और इसमें जो नंबर डाल रहा हूँ 0900. ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा. अब ये जो एक्टिविटी है, these are admin and resource mobilization. ठीक है, ये सब जो टास्क है इसके लिए मैंने ये प्रोविजन कर दिया, मैंने 20 दिन. अब ये जो टास्क है ना, ये जो 20 दिन वाला जो टास्क है, ये 20 दिन भी ले लेगा, 21 दिन भी ले लेगा. लेकिन मैंने क्या किया, अपने इंजीनियरिंग जो मेरा जो साइट वर्क है, जैसे इंजीनियरिंग एंड साइट वर्क जो है, ठीक है, ओके. सो इंजीनियरिंग, Gagan, I will call you in the break time. Okay, I'm in the middle of a training. Thanks. Okay. So this is the date I have put as a deadline so that everybody can see. Project में क्या होता है कि एक ना project का एक ना formal start date होता है. तो formal जो start date है, वो start date से मेरी engineering और site work start नहीं होती. Actually site work थोड़ा बाद में होता है. इसके बीच में हम लोग ना थोड़ा सा administrative paper work और रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं. तो ये जो मेरा जो स्टार्ट माइलस्टोन है ना, ये फ्लैग है भाई, बाय दिस डेट आप अपना पूरा कर लो. उसको उसके साथ लिंक नहीं करता, लेकिन सबको दिखता है यहाँ पे कि भाई इंजीनियरिंग का स्टार्ट जो है, हमने ये टारगेट ये कर रखा है, अभी 4 को हमने स्टार्ट करना है. उससे पहले मेरे हाथ में पेपर, परमिशन और सारा जो है, जैसे लैंड एक्विजिशन रहता है, इंडिया में बड़ा पंगा रहता है ये लैंड एक्विजिशन का. ठीक है ना. तो मैंने कहा चलो भाई मेरा लैंड एक्विजिशन जो है मेरा 28 जनवरी तक हो जाएगा. एक रफ आइडिया लगा लिया मैंने. तो मैंने कहा ठीक है, 28 जनवरी तक लैंड एक्विजिशन हो जाएगा ना, तो बाकी सारी चीजें तो उसके बीच में हो जाएगी. चलो मैं एक काम करता हूँ, एक 4 फरवरी को एक डेट रखता हूँ ये नारियल फोड़ने का, और मैंने यहाँ पे डेट रख दी.
ठीक है। सही। तो ये जो 4 फरवरी है, मैं इसका वो जो है इंजीनियरिंग स्टार्ट और साइट वर्क रख दिया, और ये जो नीचे जितने भी टास्क है ना, इनको मैंने इसके साथ इसको लिंक कर दिया मैंने। देखो, अब देखो सारे टास्क वहां से वो रेफरेंस ले रहे हैं। तो अब मेरे को ये भी पता है कि ऊपर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है, और मेरा इंजीनियरिंग जो है यहाँ से ये स्टार्ट होगा, उससे पहले इनका काम। अब मान लो इनका काम जो है 25 को कंप्लीट हो जाए, 26 को कंप्लीट हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। मैंने इनको अभी टारगेट जो है इस पे प्लान पे डाल के मैंने ये दिखा दिया। क्यों? मैंने कहा अगर मैं इसको 4 तक मैं मैक्सिमम में स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट 2 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। सारे कहते हैं हाँ ठीक है। अब क्या है कि अब इससे मेरे को कोई प्लानिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आगे, कि भाई 4 को स्टार्ट करना है या 3 को करना है स्टार्ट। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लो मैं किसी को कह दूं कि भाई मैं 2 तारीख को स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 तारीख को 100 लेबर आके वो बैठ जाएगा साइड पे। ठीक है। अब वो 2 तारीख को बैठ के बीड़ी पिएगा, 3 तारीख को बीड़ी पिएगा, और जाके वो काम करेगा 4 तारीख को। तो ये तो 2 और 3 तारीख को 100 आदमी जो बीड़ी पिएगा, उस बीड़ी का खर्चा कौन देगा? आप दो। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भैया 4 तारीख को ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 4 तारीख को बाकी सारी चीजें मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए आदमी 4 तारीख से ही इसके अंदर लगाना प्रोजेक्ट में। 4 तारीख में साइट का एक्सकवेशन कर देंगे, और एक्सकवेशन करके सारा काम जो है बिल्कुल सीक्वेंस में चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन 3 महीने की मिल गई है। अब उसके बाद क्या होगा, एक एडमिन का गैप और डाल दूंगा फिर। अगर कंपनी में कोई क्वार्टरली कोई रहता है इशू, तो एक और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जैसे मान लो 3 महीने काम करा, मैंने काम करा फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मैंने मई का पहला वीक मैंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन का फिर से कोई डाल दिया। क्योंकि एक होता है प्रीवियस फेज का क्लोजर डॉक्यूमेंट जो वो बनाना होता है, ताकि हमें प्रोजेक्ट की पेमेंट मिल जाए। उसमें क्या होता है कि उसमें टीम थोड़ी सी बिजी हो जाती है भी गैदर करने के लिए, भाई हमने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट रहा है, वो सब कुछ चीजें जो हमें पेपर वर्क करना होता है। तो लोगों को फिर साइड से जो है ये बुलाना पड़ता है, फिर ये वापस एक बारी वो जो है आते हैं ऑफिस में 3-4 दिन बैठ के पेपर वर्क करते हैं। फिर पेपर वर्क जो है वो सबमिट होता है, फिर एक पेमेंट आती है, उस पेमेंट के दम पे हम फिर आगे 3 महीने का रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। ठीक है ना। तो हर जगह मेरे ख्याल से लगभग यही रहता है, इंडिया में तो यही रहता है कि भाई पहले एक पेमेंट लो, फिर उसके बाद उस पेमेंट से सबकी तनख्वाह बांट दो, फिर आगे और भी जो है रिसोर्स मंगाओ, और फिर काम जो है ये चलाते रहो। ठीक है। तो इसलिए जो है एक स्टार्ट माइलस्टोन लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये फिनिश माइलस्टोन जो है ये तो हर एक में रहेगा, क्योंकि ये आपका जो WBS है ना, ये आपका ओपनिंग ब्रैकेट और ये है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अगर क्लाइंट को प्लान दोगे, तो क्लाइंट को कितना देखना होता है मैं बताता हूँ। क्लाइंट का इंटरेस्ट सिर्फ इतना होता है, देखो क्लाइंट का इंटरेस्ट इतना होता है सिर्फ, और नहीं देखता कुछ भी क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट को यहीं से ही पता चलता है कि आप लोग साइट पे कब काम चालू कर रहे हो, और ग्राउंड फ्लोर कब बनेगा, फर्स्ट फ्लोर कब बनेगा, सेकंड फ्लोर कब बनेगा। तो वो अपने माइंड में वो पेमेंट का ख्याल रखेगा, और एक एक्सपेक्टेशन करेगा कि हाँ उस दिन मैं अपना ग्राउंड फ्लोर इनॉग्रेट करूंगा, फर्स्ट फ्लोर इनॉग्रेट करूंगा। वो भी अपने फर्दर क्लाइंट्स ला के वो दिखाएगा। जैसे मान लो मैं शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ मैं, तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये जो मॉल वाले, ये लोग क्या करते हैं, ये डेट अनाउंस करते हैं पहले ही पब्लिक कि भाई आके जो है आप देख लो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गई है, अब तो बुकिंग करो। वो क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर के जोर पे बाकी 4-5 फ्लोर भी वो बेच देते हैं। तो उनके लिए ग्राउंड फ्लोर जो है बढ़िया सा जो है वो दिखाना ये जरूरी हो जाता है। ठीक है। और कई बार जैसे अभी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, अभी एक प्रेशर चल रहा है मेरे क्लाइंट का, वो कह रहे हैं सर ये शेड्यूल जो है वो बनवा दो, ताकि ये दिवाली से 15-20 दिन पहले हो जाए, क्योंकि इस साल तो बहुत ही हालत जो है वो खराब है। क्योंकि दिवाली से पहले हर आदमी एक परचेज करता है इंडिया में। ठीक है। तो शेड्यूलिंग में ना वो कंस्टेंट डाल लेते हैं, फिनिश कंस्टेंट डाल लिया, दिवाली से बैक कैलकुलेट कर लिया 15 दिन, उसके बाद फिर बाद में सारे टास्क इंजीनियरिंग के डाल दिए। तो इंजीनियरिंग टीम अब जो है वो मतलब लग गई है, क्योंकि क्लाइंट आता है। अगर क्लाइंट को अगर ग्राउंड फ्लोर अगर ये पसंद है, तो उसको फर्स्ट फ्लोर पे अगर चाहिए तो वो लेगा, है ना। तो कुछ अगर नहीं दिखाओगे तो उसको आइडिया क्या कैसे होगा कि भाई आपका काम कैसा है। तो इन द प्रोजेक्ट प्लान
द प्रोजेक्ट मैनेजर विल पुट ए फिनिश डेट, यहाँ पे फिनिश डेट डालेंगे और फिनिश डेट के बीच में हम जो है सारे टास्क डालेंगे। तो WBS भी बनाना ये जरूरी, क्योंकि WBS अगर नहीं होगा एंड इफ यू क्रिएट ए लॉन्ग लिस्ट, ओके, इट विल बी वेरी वेरी अनमैनेजेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर इंजीनियरिंग and for planning also. Correct. Okay, so we create the WBS, and next to the WBS we put the finish milestone, and between the WBS and the finish milestone we put the task, and then we check that how we are going. ठीक है, तो अब जैसे इसकी डेट जो है ये आगे ये चली गई, तो मैं इसकी कंस्टेंट को मैं चेंज कर दूंगा ना, ठीक है ना। इसकी कंस्टेंट तो पहले 4 जनवरी के हिसाब से थी, तो what I will do, I will go into the activity details, and instead of the 20th Feb, I will put 28th of the March. Okay, I'll put 20th or 30th of the March. तो मुझे ये पता चल जाएगा इसमें कितना मुझे फ्लोट मिल रहा है, तो एक रीजनेबल फ्लोट तो मुझे ये डालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये जैसे ये -1 चल रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 1 अप्रैल डाल देता हूँ मैं इसमें, जैसे इसको ले गया अप्रैल में मैंने डाल दिया 1, तो इसमें मेरे को 1-2 दिन का फ्लोट मुझे ये मिल गया। और ये जो टास्क है ना, इसमें अपना कंस्ट्रेंट ये लगा हुआ है टास्क 2 में। मान लो कि मैं इसमें मैं कंस्ट्रेंट मैं ये हटा देता हूँ, तो ये अपने आप ही ये नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक। तो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हाउ डज द कंस्ट्रेंट वर्क। तो कंस्ट्रेंट आपका क्या क्या रहता है, आपका देखो, कंस्ट्रेंट एक रहता है एज लेट एज पॉसिबल, ये हम यूज नहीं करते हैं। इसका तो मेरे को 15 साल के बाद ये पता चला ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। मैं 15 साल से प्लानिंग करता रहा, ये सोचता रहा ये कौन यूज करता है ठीक है, ये दिया क्यों हुआ है। एक होता है फिनिश ऑन और आफ्टर। ये होता है तब कि जैसे मान लो कि आपको ना किसी काम को जो है मतलब ये स्ट्रेच करना होता है। फिनिश ऑन और आफ्टर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एनजीओ है, वो एनजीओ जो है किसी का वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोजेक्ट ले रही है। अब उसमें जो बड़े बॉस है उन्होंने पैसा दिया 6 महीने का, लेकिन काम 4 महीने का है, तो ये क्या करते हैं 4 महीने काम को स्ट्रेच कर देते हैं। ये वो क्या करते हैं उस माइलस्टोन पे ऑन और आफ्टर की ये डेट डाल के बीच में टास्क डाल देते हैं, बीच के टास्क को स्ट्रेच कर देते हैं सिर्फ वो डेमो देने के लिए, फिनिश ऑन और आफ्टर। तो नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं फिनिश ऑन और बिफोर यूज करते हैं। यह मैंडेटरी फिनिश तो बहुत ही बढ़िया है प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसमें से चूज कर लेना, जब आप इसकी प्लानिंग जब ये करोगे इसका मीनिंग आपको जो है वो समझ में आ ही जाएगा। जब फिनिश माइलस्टोन डालते हैं तब मैंडेटरी फिनिश डाल देते हैं उसमें। हाँ, मैंडेटरी फिनिश का तो ये देखो फायदा आपको दिख रहा है, देखो ये प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे, देखो प्रैक्टिकली आपको ये दिखता है। देखो ये जो मैंडेटरी है ना फिनिश, अब ये मैंडेटरी फिनिश क्या होता है, ये अपनी अपनी जगह पे बैठा रहता है। मान लो इस टास्क में किसी ने ये बढ़ा दिया ड्यूरेशन, तो वो तुरंत जो है वो दिख जाएगा उसका जो है इफेक्ट, ठीक है। अब मान लो मैं मैंडेटरी की बजाय मैं यूज में, देखो इसमें कितना कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल फ्लोट आ रहा है -3, तो इसका मतलब ये एक्सीड कर रहा है ना ये। अच्छा मान लो कि मैं इस पे देखो मैं इसी वाले में मैंडेटरी को ना मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा भी फिनिश ऑन। अब इसमें क्या है वो दिखा रहा है फ्लोट -3, लेकिन ये जो माइलस्टोन है ना, अगर कोई गैंट चार्ट की तरफ वो नजर डालता वो कहेगा नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। क्यों? देखा वो माइलस्टोन, देखा वो कहाँ पे वो खिसक गया है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता। मैं प्रैक्टिकली जो खुद मैं जब भी प्लानिंग करता हूँ तो मैं मैंडेटरी ही यूज करता हूँ। हालांकि फिनिश ऑन दिया हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर पे हर चीज है तो हर जगह बटन दबाना है, ठीक है। इसमें मैंडेटरी फिनिश यूज करो तो इसमें क्या होता है कि जब आप प्लानिंग करते हो ना तो प्रोजेक्टर पे ये चमकता है, सभी देखते सर ये देखो ये आगे चला गया, हाँ हाँ मैंने कहा हाँ दिख गया ना तुझे, हाँ वे बहुत अच्छी बात है मैंने कहा तेरा देखना जरूरी है, मुझे चाहे ना दिखे, अब तू बता क्या करेगा। क्योंकि अगर आप if you are putting finish on, it doesn't actually make any sense because वो एक्टिविटी का ही फिनिश डेट ले रहा है। हाँ वो एक्टिविटी का फिनिश डेट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे वो -3 वो दिखा रहा है, टोटल फ्लोट में गलती नहीं कर रहा, लेकिन फिजिकली वो जो है वो आगे जा रहा है। तो वो विजुअली इसके साथ जो है वो कोरिलेट नहीं होता। जो टेक्निकल आदमी है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। मेरी टीम में जो टेक्निकल आदमी है जो प्राइमावेरा नहीं जानता, उसको जो है वो समझ नहीं आता, वो कहता है सर ये -3D दिखा रहा है, लेकिन है तो उसके मतलब वो आगे। मैंने कहा नहीं बेटा वो आगे नहीं है, वो यूं है, देख अब देख ध्यान से,
हाँ वो कह रहे हैं हाँ ये 3 दिन जो है ये आगे चला गया, आपको दिखता है, देखो ये टाइम लाइन में, ये देखो मैं टाइम लाइन को मैं स्ट्रेच में करता हूँ ना थोड़ा टाइम स्केल, देखो ये 3 दिन एक्सीड हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसको कहाँ होना चाहिए, एक गैप के साथ होना चाहिए ना अभी पीछे। तो हम क्या करेंगे, तो पीछे का कोई ये बड़ा टास्क होगा, उसमें कुछ रिसोर्स ज्यादा लगा के क्रैशिंग करेंगे, तो क्रैशिंग करेंगे तो हो गया 0। अब हम क्या करेंगे भी दूसरे टास्क में एक एक दो दो दिन जो है वो क्रैशिंग कर देंगे, इसमें इसमें कर दिया 1 दिन और इसमें भी कर दिया 1 दिन का क्रैशिंग कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि आपका ये जो टोटल जो आपका फ्लोट है आपने रख दिया 3 दिन। अब ये जो 3 दिन जो है ना, ये 3 दिन एक स्टेपनी का काम कर रही है। और देख लेना जब तक आप ये 1050 पे पहुंचोगे ये स्टेपनी भी ये खत्म हो जाएगी। सही है। आपके टीम मेंबर ही जो है वो धुएं की तरह उड़ा देंगे इसे। तो इसलिए आपने क्या करना है, उनको ये दिखाना है कि देखो 3 दिन की स्टेपनी है, इसमें ज्यादा पैंतरेबाजी व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं करना साइट में, और काम करना है। ठीक है, ये 3 दिन जो है हमने ये रखा है सिर्फ लास्ट 3 डेज के लिए। इसमें अगर होगा तो टास्क नंबर 4 को 1 दिन, 5 को 1 दिन, 6 को 1 दिन। अगर शुरू में ही अगर ये तीनों एक एक दिन ले लेंगे और 4, 5, 6 वाला तो चिल्लाएगा, है नहीं। अब फ्लोट में 6 रख के भी नहीं चल सकता, दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक रीजनेबल फ्लोट भी रखना होता है और कंस्ट्रेंट में काम भी करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम ऑप्टिमाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हम पहले करते हैं, बाद में वो मैनेज होता है। अगर हम पहले प्लान नहीं करेंगे तो क्या मैनेज करेंगे, कोई मैनेजमेंट का काम कोई हवा में थोड़ा ना होता है। तो दैट इज व्हाई इन द प्राइमावेरा वी यूज दिस फैसिलिटी मैंडेटरी फिनिश, mandatory finish for the end of the WBS and mandatory start to signify the start date of the project. Mandatory finish and mandatory start. अब देखो इसमें स्टार कहाँ लगा हुआ है, स्टार्ट डेट में। तो जो स्टार्ट माइलस्टोन होता है उसमें एक ही डेट रहता है, जो फिनिश माइलस्टोन होता है उसमें एक ही डेट रहता है, जो फिनिश डेट रहता है उसमें स्टार लगा हुआ है। तो जहां पे भी डेट पे स्टार दिखे तो इसका मतलब ये है कि उसमें कंस्ट्रेंट लगा है, और कंस्ट्रेंट का एक रीजन होता है, नोट डाल दो उसमें। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है मेरा ये फिनिश, अब मैंने ये कंस्ट्रेंट क्यों मैंने डाला है, तो तो नोटबुक में जाऊंगा, तो नोटबुक में देखो प्राइमावेरा ने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट का कैटेगरी दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इसमें लिखना चाहिए। इसमें मैं लिख दूंगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट 5 पेज नंबर 10। ठीक है, अब जिसने चेक करना होगा वहां से वो चेक कर लेगा भी इस ये कॉन्ट्रैक्ट में ये 5 नंबर पैरा पेज नंबर 10 पे ये दिया हुआ है, इसलिए ये मैंने डाला यहाँ पे, बात ही खत्म, कोई इस पे बहस नहीं करेगा, है ना। अच्छा, अब मैंने आपको जो है वो बताया था कि आप इसमें डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अब डॉक्यूमेंट का बहुत बढ़िया है फीचर, अब क्योंकि हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो ये वो भी मैं दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप कर्सर जो है ये पकड़ लो आप। एक क्वेश्चन, ओके, बिफोर वी मूव, जस्ट वन क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, पूछ लो। We were in the jungle status. Okay, so as late as possible is also like not used much. Finish नहीं on ये यूज होता है, ये आपका क्लोजिंग प्रोसेस में यूज होता है, वो दिया है ना लास्ट में closing process. हाँ, मतलब I mean like only one time, था। like in a whole project one time only. हाँ, ये सिर्फ बिल्कुल लास्ट में यूज होता है। लास्ट में यूज होता है। फिनिश ऑन नॉर्मली लाइक उसकी जगह मैंडेटरी फिनिश। हाँ, अब ये सब दिया हुआ है, लेकिन जो है ना हम जो है हम एक तो ये यूज करते हैं फिनिश ऑन और बिफोर। या फिनिश लाइक अब सो क्यों, नॉर्मली अगर कोई आदमी नोटिस पीरियड पे है तो उसका जो टास्क है उसके फिनिश डेट पे मैं डाल दूंगा फिनिश ऑन और। अब क्या होगा, अगर बीच में जब मैं प्लानिंग करूंगा ना तो प्राइमावेरा क्या करेगा, आगे के टास्क अगर उसको खिसकाएंगे ना एकदम से वो रेड हो जाएगा। अगर मेरे प्रोजेक्ट के बीच में कोई टास्क रेड हो रहा है तो इसका मतलब मैं उसकी कंस्ट्रेंट को हिट कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्रिटिकल पाथ सिर्फ लॉन्गेस्ट पाथ ही नहीं होता, क्रिटिकल पाथ वो भी होता है जो प्रोजेक्ट के बीच में जिसकी कंस्ट्रेंट डेट वायलेट हो जाए वो भी रेड हो जाता है। इसलिए अब क्या है कि अब अगर मैं इसको मैं डाल के अगर नहीं चलूंगा, लोग क्या करेंगे कि बीच में लंबे लंबे टास्क डालते चले जाएंगे, और वो क्या करेगा, नोटिस पीरियड वाला दिन जिसका कंप्लीट हो जाएगा काम इक्विपमेंट का आदमी का, वो जो है वो चला जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा, है ना।
तो अपनी प्लानिंग की कंप्लायंस उसकी फिनिश डेट के साथ कनेक्ट हो गया। हेलो 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 ओके, आई एम बैक। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसमें रिमोट कंट्रोल चला रहा था। आपका रिकॉर्डिंग चालू है ना? रिकॉर्डिंग हाँ शुड हाँ बी हाँ ऑन। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ मेरा रिकॉर्डिंग क्योंकि चल कई बारी लिंक ब्रेक हो जाता है। ये क्या करता है कि रिकॉर्डिंग जो है कई बारी रुक जाती है। उसमें देख लेना, रिकॉर्डिंग का जो है ना ऊपर जो ब्लिंक आना चाहिए हाँ लेफ्ट। वो ब्लिंकिंग हो रहा है राइट स्पॉट। Okay, so let us continue with this. Okay, so what I was asking is like yeah, so mandatory finish, mandatory start, uh, देखो, आप एक काम करो, आप एक नोटपैड लो, मैं आपको हाँ लिखवाता हूँ बढ़िया। ठीक है, आप सबसे पहले लिखो एज लेट एज पॉसिबल। इसमें लिखो एज लेट एज पॉसिबल इज यूज्ड ऑन द टास्क which part of the closing process. For example, administrative closure of the project and site cleanup work. ठीक है, ये लिख लिया इसमें मोटा मोटा। So the benefit is that the tasks are positioned at the end of the project. This is used for non-engineering task. ठीक है, sorry which one? this is the as late as possible is used for non-engineering task. फिर लिखो अगला finish on or before. This can be used for person or equipment which have a finish lease date or notice date. Finish on or before constraint is used Person on or the equipment. person or the equipment's task to be finished before the expiry of the notice date and expiry of the lease period. Okay. अच्छा, उसके बाद आता है आपका मैंडेटरी फिनिश। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसमें पूरी लिस्ट दिखेगी यहाँ पे। मैंडेटरी फिनिश, ठीक है। मैंडेटरी फिनिश इज यूज्ड फॉर मार्किंग द finish date of the milestones linked to payments, linked to project installment payments. Link to finish date of milestone. Milestone which are linked to the project installment payment. कि उन milestone पे ये लगाते हैं जो
प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट से लिंक है। ओके ओके फिनिश। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि अभी तो हम जो है वो फिनिश माइलस्टोन पे है ना, इसलिए वो नहीं दिखाएगा। अब बाकी हम एक काम करते हैं, टास्क के बीच में क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे सारे माइलस्टोन दिखाएगा। एक है मैंडेटरी स्टार्ट। तो मैंडेटरी स्टार्ट और स्टार्ट ऑन कैन बी यूज फॉर द स्टार्ट माइलस्टोन। ठीक है। सो दोनों में स्टार्ट, डिफरेंस है कुछ? अब देखो उस डेट में तो कोई खींचातानी नहीं होती है। आप चाहे स्टार्ट ऑन यूज कर लो, आप वैसे मैंडेटरी स्टार्ट यूज कर लो। पता बात क्या है, मैंडेटरी स्टार्ट ना बड़ा प्रेडिक्टेबल जो है, हाँ मतलब फिक्स ही कर देता है, मतलब वो फिक्स है। और हाँ, कोई चीज कंसिडर नहीं करेगा, राइट? ठीक है। अच्छा, एक होता है स्टार्ट ऑन और आफ्टर। इट इज यूज्ड फॉर द टास्क on which the resources are joining on a particular date. Start on or after. ओके ठीक है। अब ये जो लिखा है ना आपका स्टार्ट ऑन और बिफोर, मैं इसको ना ये पसंद नहीं करता, क्योंकि ना ये कंफ्यूज करता है। इससे पता बढ़िया क्या है, जैसे मान लो कोई आदमी कह रहा है कि भाई मेरी ना लास्ट डेट जो है मेरी है 31 ऑफ दी अगस्त, तो मैं उस पर लिखूंगा फिनिश ऑन और बिफोर। अब मान लो कोई आदमी कहता है कि मैंने ना नोटिस दिया हुआ है कंपनी को और मेरा काम 1 अगस्त से पहले चालू करवा लो। ठीक है, स्टार्ट ऑन और बे बिफोर। लेकिन मुझे पता है कि उसकी लास्ट डेट तो मान लो कि 31 ऑफ द अगस्त है, तो मैं स्टार्ट ऑन और बिफोर 1 ऑफ द अगस्त की बजाय मैं ये प्रेफर करूंगा फिनिश ऑन और बिफोर। मतलब आप कहोगे इसका काम या तो एक जो है वो 1 अगस्त से पहले स्टार्ट कर दो, या इसका काम जो 31 अगस्त से पहले इसे खत्म करवा लो। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो स्टार्ट ऑन और बिफोर जो है ना, ये यूज नहीं करता मैं। या तो मैं यूज करता हूँ स्टार्ट ऑन और आफ्टर। ऑन और आफ्टर मीन्स पर्सन is able to be available, resource is working on some other project, or some equipment lease period will start on a particular date. तो start on or after makes sense, or finish on or before makes sense for the notice period of a person or ending of the lease period of a rented equipment. कि भाई ये इक्विपमेंट जो है इस डेट से पहले हमने कर देना है इसका जो है, क्योंकि अगर हम इसका लीज अगर एक्सटेंड हम करेंगे, हम यूज करेंगे 1 महीना और वो लीज मांगेगा भी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें तो कोई फायदा है नहीं। तो इससे पहले है कि उसके फिनिश डेट से पहले ही सारा काम कंप्लीट करके इक्विपमेंट जो है वेंडर को दे दो वापस। तो और ये सेकेंडरी डेट की कौन सी, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी? कौन सा? ये बाजू में जो टेबल है ना सेकेंडरी, ये वाला। सेकेंडरी का मतलब है कि जैसे मान लो एक आपने ना जो फिनिश डेट दिया है, ठीक है, अगर ये फिनिश डेट अगर ये पार कर जाए तो वो दूसरी डेट पे भी जा सकता है। जैसे आपने दिया हुआ है यहाँ पे ये फिनिश ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर फिनिश ऑन डेट दे के यहाँ पे कई बार ये प्रोविजन आ जाता है भाई आप सेकेंडरी भी डेट डाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैंने यूज किया नहीं है इतना ज्यादा, तो इसलिए सेकेंडरी का मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ढूंढ के, मतलब मैनुअल में काफी ढूंढना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा उसमें। लेटर ऑन एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाउट से मैं कुछ नोट करके रखता हूँ इनके आप मेरे को भेज देना इस पे मतलब क्योंकि मेरा तो मेन एम ये है कि भाई प्रैक्टिकली आदमी तैयार हो जाए। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा इसका सेकेंडरी का, लेकिन अगर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है तो मैं ये बता दूंगा, आप देख लेना। अगर आपका कोई ये सिचुएशन है, अगर फिट बैठता है तो यूज कर लेना। तो सेकेंडरी डेट में यूं मैंने सुना है कि अगर ये वाली डेट पार हो जाती है तो वो अगले जाके माइलस्टोन उस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें जैसे फिनिश ऑन और बिफोर दिया हुआ है तो कई बार ये एक्टिवेट होता है। अब इसमें क्या है कि फिनिश ऑन और आफ्टर, अब इसमें क्या है कि जो दोनों तरफ से कंस्टेंट लगा सकते हैं। अब इसमें मैं दूंगा इसके साथ जो है यही कॉम्बिनेशन चलेगा, स्टार्ट ऑन और आफ्टर। अब मैंने कहा भाई फिनिश ऑन और बिफोर, मैंने कहा एक टास्क है
ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 31 मार्च से पहले खत्म करना है, लेकिन उसका एक स्टार्ट का भी मैंने कंस्ट्रेंट डाल दिया, मैंने कहा उसको अगर करना है खत्म मार्च से पहले, तो उसको 31 से पहले खत्म करना है, तो मैं कहा भी उसको 1 तारीख को चालू भी उसको कर देना है, या नहीं, स्टार्ट ऑन और बिफोर, फिनिश ऑन और आफ्टर, स्टार्ट ऑन और आफ्टर, ठीक है। 1 मार्च को स्टार्ट कर देना। मतलब उसको 30, मतलब कोई बंदा 1 महीने के लिए अवेलेबल है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट है ना, उसको दोनों तरफ से आपने बांध दिया है। आपने जैसे आपका जो कंस्ट्रेंट है वो दोनों तरफ से काम करेगा। जैसे आपने कहा अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, अगर आप मैंडेटरी स्टार्ट दोगे तो यहाँ पे वो सेकेंडरी स्टार्ट नहीं देगा, क्योंकि वो फिर एक ही डेट पे पिन डाउन हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जैसे मान लो आपने कहा कि स्टार्ट ऑन और आफ्टर, कि भाई 31, अब इसमें जो दूसरा कंस्टेंट क्या 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 लगता है कि अगर मैं 31 मार्च के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको अप्रैल 30 से पहले खत्म भी कर दो, तो ये दोनों डेट के बीच में लिमिट हो जाएगी। ये तो महीने में, हाँ, रिसोर्स जो है वो ये महीने के लिए अवेलेबल है। हाँ, So he's coming on जैसे like 31st March जैसे and he's leaving हाँ, 30 April. So हाँ, तो इसमें क्या है कि ये जो आपका जो सेमी फ्लेक्सिबल है ना, जो कंस्ट्रेंट है, तो सेमी फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में दूसरी तरफ का भी आप लिमिट डाल सकते हो। ये इन फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में तो काम नहीं करेगा, उसमें तो जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ से डेट का एक ना ब्रैकेट बन गया, तो ये टास्क आपको कभी भी 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में कंप्लीट करना है। तो उस टास्क में उसकी एक छूट है कि 1 अप्रैल से, अगर ये 1 अप्रैल से पहले स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये मना कर देगा, और अगर ये अप्रैल के बाद जाएगा तो ये मना कर देगा। तो एक तरफ ओपनिंग ब्रैकेट है, एक तरफ क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये तभी आएगा जब ये एक फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। अब 1 तारीख का क्यों दिया आपने? 1 तारीख का इसलिए दिया जो आदमी 1 तारीख को ज्वाइन करेगा, और आदमी 1 से लेके 30 के बीच में काम चाहे 5-6 दिन का ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 5-6 दिन का जो काम है ना, ये 1 और 30 के बीच में कंप्लीट करना होना चाहिए। हाँ। और ये जैसे ही ये 30 को ये टच करेगा, ये रेड हो जाएगा ये। जैसे मान लो इसके मैं रिलेशनशिप में गया, मैंने क्या किया, ये जो इसके जो प्रीडिसेसर के साथ जो इसका जो रिलेशनशिप है ना, वो इसका है स्टार्ट टू स्टार्ट है। अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये कौन सा टास्क है, अच्छा ये तो टास्क 4 पे मैंने ये डाला हुआ है। तो इसमें क्या है, इसको पहले ये देखना, ये टास्क है ये कहाँ पे, ये टास्क 4 जो है, हाँ, तो ऑलरेडी ये रेड हो गया है, ऑलरेडी फिनिश ऑन और बिफोर, क्योंकि इसकी कंस्टेंट डेट जो है ना, इसकी जो फिनिश डेट है या फिर स्टार्ट डेट है, ये ऑलरेडी इसको ये पार कर चुका है। तो इसलिए स्टार्ट डेट, स्टार्ट ऑन और आफ्टर, फिनिश ऑन और बिफोर, ये रेड या तो टास्क 4 की वजह से हो रहा है, ये -27 ये बता रहा है। तो -27 किस रिलेशन से हो रहा है ये पता करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं ये कंस्ट्रेंट में ही हटा देता हूँ, नहीं, अगर मैं ये भी कंस्ट्रेंट अगर ये मतलब हटा देता हूँ, हाँ, तो ये पता क्यों ये हो रहा है, ये रेड क्यों हो रहा है? इसलिए रेड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको स्टार्ट होने का मौका मिल रहा है 26 फेब को, और हम लोग 31 मार्च जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें कहता हूँ चलो स्टार्ट ऑन और आफ्टर मैं 28 फेब डाल देता हूँ, और इसको मैंने कहा कि फिनिश ऑन और बिफोर। अब यहाँ पे जैसे 8 मार्च है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको 10 तारीख से पहले कंप्लीट कर लो, तो ये भी ग्रीन रहेगा। अभी देखें इसमें फ्लोट जो है वो 2 दिन का बता रहा है। अब 2 दिन का क्यों ये बता रहा है? क्योंकि इसकी जो फिनिश डेट है अभी 8 तारीख है, और इसकी जो यहाँ पे कंस्टेंट डेट है वो 10 मार्च है। अच्छा, मान लो इसको 27 करोगे तो एक दिन आगे निकल जाएगा। अच्छा, मान लो कि ये जो टास्क है इसका टास्क 3, अगर मैं इसको करता हूँ 10 दिन, तो इसका 1 दिन का फ्लोट जो है वो कंज्यूम हो गया। अच्छा, फिर मैं टास्क 3 को अगर मैं ये 11 तारीख कर दूंगा, तो इमीडिएटली ये जो टास्क 4 है ये रेड हो जाएगा। क्यों? इसलिए ये रेड होगा टास्क 4 क्योंकि ये अपनी कंस्टेंट डेट को टच कर गया यहाँ से। अब इसकी जो फ्लोट था उसमें सेकंड एक्टिविटी को पुश किया। अच्छा, मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 दिन का और मैं छूट में दे देता हूँ, तो अब ये ग्रीन हो जाएगा, 1 दिन का फ्लोट इसको वो मिल गया।
और अगर मैं एक दिन का फ्लोट अगर मैं हटा देता हूँ तो ये रेड हो जाए। तो इसमें क्या है कि एक तो ये 26 तारीख के बाद ही स्टार्ट हो सकता है और 10 तारीख से पहले इसे कंप्लीट हो, तो उसके बीच में ये फ्लेक्सिबल है। अगर मैं यहाँ पे इसके प्रीडिसेसर को मैं कम कर देता हूँ तो उस पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती सही है ना। तो ये क्या है कि ये सेमी फ्लेक्सिबल जो डेट्स हैं ये उन पे काम करता है, स्टार्ट ऑन और आफ्टर, फिनिश ऑन और बिफोर। अब ये मैंडेटरी पे काम नहीं करेगा। अगर मैं इस पे बोल दूंगा अभी मैंडेटरी स्टार्ट इज 26 फेब, इस 26 फेब को ही अगर मैं मैंडेटरी स्टार्ट अगर मैं ये कर दूंगा तो ये इमीडिएटली ये रेड हो जाएगा। देखो मैंडेटरी स्टार्ट मैंने वो कर दिया तो इमीडिएटली ये रेड हो जाएगा। रेड इसलिए होगा क्योंकि कोई भी टास्क जिसमें मैंडेटरी स्टार्ट या मैंडेटरी फिनिश होता है उसका फ्लोट जीरो होता है, वो कभी भी डिले नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मान लो आपने स्टार्ट डेट पे अगर ये लगा है तो इसकी पर जस्ट वन क्वेश्चन, लाइक जीरो फ्लोट नहीं हो सकता पर उसका कंप्लीशन जो पीरियड है कंप्लीशन डेट इसकी ये बढ़ सकती है। देखो इसको ना मैं एक दिन का कर देता हूँ। एक दिन का मैंने किया, इसकी जो 26 तारीख की जो स्टार्ट है ना वो स्टार्ट इसकी फिक्स रहेगी, इसकी जो सिर्फ फिनिश डेट चेंज होगी। अच्छा अगर मैं इसको 3 दिन का करता हूँ, अब क्योंकि मैंने पिन डाउन कौन सी डेट को किया, स्टार्ट डेट को किया। देखो स्टार कहाँ पे है, स्टार कहाँ पे है, स्टार इसकी स्टार्ट डेट पे लगा हुआ है। इट इज द 26 Feb which is pinned down. The 26th date of this activity is pinned down on the 26th. So its finish date can expand, but the start date can't move. देखो इसकी एंड डेट जो है बढ़ सकती है, ठीक है, इसकी फिनिश डेट बढ़ सकती है, स्टार्ट डेट नहीं हिल सकती। अच्छा अगर मैं इसकी फिनिश डेट पे लगा देता हूँ, मान लो मैंने कहा अभी मैंडेटरी फिनिश ऑन से 5th of March, ठीक है, मैंने मैंडेटरी जो है ये फिनिश लगा दी मैंने। अच्छा अब इस टास्क में क्या होगा, अगर मैं इसकी ड्यूरेशन को ये जो है ये बढ़ाऊंगा ना तो इसका आप ये देखना, इसकी स्टार्ट डेट हिलेगी, फिनिश डेट नहीं हिलेगी। और किसी भी टास्क पे अगर मैंडेटरी स्टार्ट या मैंडेटरी फिनिश आप लगा दोगे वो उस टास्क का फ्लोट जीरो हो जाता है इंस्टेंटली। ठीक है, हाँ उस टास्क का फ्लोट इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। लेकिन जो टास्क सेमी फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट यूज कर रहा है उसका इमीडिएटली जीरो नहीं होगा जब तक वो अपनी कंस्ट्रेंट डेट को हिट नहीं करेगा। लेकिन मैंडेटरी स्टार्ट और मैंडेटरी फिनिश में इंस्टेंटली रेड हो जाता है क्योंकि उसमें आप उसको हिला नहीं सकते कहीं से भी। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो इसको आप एक काम करो, इसको ना अपने नोटबुक में नोट कर लो। एक बार इसको नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज है। आपकी जो स्लाइड्स है उसमें दिस टॉपिक्स आर इंक्लूडेड, मतलब जो स्लाइड में भी है, मैं आपको एक हैंडबुक भी दूंगा उसमें भी है। लेकिन मुझे कुछ प्रिंट करना है, लाइक मुझे कुछ प्रिंट करना पड़ेगा। देखो प्रिंट करने के ना क्या है कि ये जो मैंने आपको जो बताया था ना पेज 1 2 3 जो एक्सरसाइज का है उसको प्रिंट कर वो कर दिया है, वो प्रिंट ले लिया मैंने। अब बाकी ना कुछ लोग है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे को जो है प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ने का जो है मतलब शौक है, तो मैं जो आपको हैंडबुक दूंगा आप उसको प्रिंट आउट स्पाइरल बाइंडिंग आप ये करवा सकते हो। दैट इज योर चॉइस। किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाओगे, पेन ड्राइव लेके उसको दोगे तो वो आपको पहले दिन लेगा, अगले दिन आपको स्पाइरल बाउंड करके वो दे देगा। राइट, आप मुझे वो सेंड कर देना। एक्चुअली व्हाट आई विल बी लाइक रिक्वायर्ड, क्योंकि लाइक अभी ट्रेनिंग पीरियड में नहीं, बट लाइक एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा फिर एक्सरसाइज जो भी हम लोग करेंगे या मतलब कुछ मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो उसके लिए जस्ट रेफरेंस के लिए आई विल जस्ट कीप इट सम हाइलाइटेड पार्ट्स। बिल्कुल, उसमें आप एक काम कर सकते हो, आप ना उसका प्रिंट आउट ले लो, स्पाइरल बाउंड जो है वो करवा लो, आप कुछ पेजेस जो है मार्क कर लो कि भाई ये पेजेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट पेजेस और जो है। हाँ राइट, वो कई बार आप जब बैठोगे अपनी टीम के साथ उस बुक को सामने रख के बैठ सकते हो, आप उसमें से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन बुक तब
काम करेगी जब आप मेरी ट्रेनिंग कर लोगे, क्योंकि एक माइंड में इंडेक्स बन जाएगा ना। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम टॉपिक के बारे में जानते हैं, एक माइंड में इंडेक्स बन जाता है। राइट। काम करेगा, हाँ इंडेक्स बोलेगा, हाँ वो फलाना टॉपिक जो है वो मेरे को उसका डिटेल देखना है। लेकिन जब तक माइंड में इंडेक्स नहीं बनेगा ना, तो आप कितनी भी मोटी किताब रख लोगे, कितनी भी महंगी बढ़िया किताब रख लोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि एक बारी मेरे से पूरा इंटरेक्शन कर लो, मेरे से डिटेल में देखो पहले सॉफ्टवेयर को, माइंड में इंडेक्स बन जाएगा। फिर आप की किताब खोलोगे, पेज में जाओगे, तुरंत आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीज, इसका जो है यूटिलाइजेशन ये है। पहले फाइन पॉइंट को पहले ग्रैब कर लो, और ग्रैब करने के बाद यू कैन एक्सपेंड इट। करेक्ट है ना। तो ये जो कंस्ट्रेंट है, सबसे फायदेमंद आपका कंस्टेंट है मैंडेटरी फिनिश। बिकॉज सबसे बड़ी जो हमारा जो प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में, वो हमारी क्या होता है कि हमारी माइलस्टोन की डेट जो है एक्सीड हो जाती है। और वो एक्सीड क्यों होते हैं? क्योंकि ना हम लोग प्लानिंग के वक्त अपने जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमें एस्टिमेशन जो देते हैं, उनको सेंसिटाइज नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने जो टेक्निक जो आपको जो ये बताई ना, ये जो बीच बीच में जो माइलस्टोन डाल के, अगर इस तरीके से अगर मैं प्लान उनको मैं दिखाऊंगा ना, तो वो डे 1 से सेंसिटाइज हो जाएंगे। भाई हमें रिस्पॉन्सिबली ड्यूरेशन देना है, इन्फ्लेट नहीं करना है, हमें अननेसेसरीली ड्यूरेशन इन्फ्लेट नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो वो बिल्कुल ही ऑनेस्टली ड्यूरेशन दे रहे हैं, इन्फ्लेट नहीं किया है, और फिर भी एक्सीड हो रहा है, तब आप लोगों ने क्या करना है, उसको एक बारी स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग टीम से उसको इन्वेस्टिगेट जो है वो करवाना है। इंजीनियरिंग टीम की एडवाइस ये आती है कि नहीं, ये जो है कंस्ट्रेंट जो है टाइट है, इसमें काम नहीं हो सकता, इसमें रिस्क होगा। तब उसमें आपने क्या करना है, फिर आपने एक कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट को समझाना है। ठीक है कि सर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारी इंजीनियरिंग टीम ने ये देख लिया है, और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस कंस्ट्रेंट में ये वाला माइलस्टोन डिलीवर नहीं हो सकता, इसमें इतने दिन की हमें छूट चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम वगैरह है ना, ये सब जो है जो डिस्प्यूट, ये पहले ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सब डिस्प्यूट जो खत्म। अभी मैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी आपको मैं समझाऊंगा कि भाई इसको हम कैसे क्लेम करते हैं, कैसे हम इसको ढूंढते हैं। जब प्रोजेक्ट जब चलता है, तो टास्क जब भी आगे पीछे होता है, तो उसको ढूंढने का तरीका क्या है। ठीक है। तो उससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। पहले मैं स्क्रीन पे निकालता हूँ, फिर मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ, प्रिंट आउट पे फिर मैं पिंक या रेड में जो है मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल या को वेंडर पे है। जैसे मान लो, मैं वो छोटा सा देता हूँ एग्जांपल, मैं HVAC का काम करता हूँ। ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का। मेरी डिपेंडेंसी 2 को वेंडर पे है। एक को वेंडर सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। जब दोनों का काम कंप्लीट होगा, तब मुझे साइट एक्सेस मिलेगा, तब मैं अपना काम कर पाऊंगा। मान लो कि ये मैं अपने प्लान में शो नहीं करता, मैं क्लाइंट को जब मैं अपना प्लान सबमिट करता हूँ, तो मेरा क्लाइंट ये सोचता है कि इसने लेट किया है। अगर मैं इस चीज को अपने प्लान पे पहले ही शो कर दूं, प्रिंट आउट के ऊपर जो है पिंक लगा के मैं बोल दूं कि सर ये जो टास्क है ये मेरे प्लान से बाहर है, ये आपके जो दूसरे जो को वेंडर हैं, इंटरफेस, हाँ वो उनका काम है, ये आप उनके प्लान में क्रॉस चेक कर लो प्लीज एक बारी कि उनका इसी डेट से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उनको बुलाएगा मीटिंग में, आपको भी बुलाएगा मीटिंग में, उनके प्लान को कहेगा कि अपना प्लान दिखाओ, उनसे फिर वो गारंटी लेगा। तो वो पहले ही ले लेगा गारंटी। एक बार मेरे क्लाइंट पे जो पेनल्टी जो वो लगा दी, तो मैंने कहा भी इसको ना मोटा मोटा करके छाप लो, और छाप के क्लाइंट के पास जाओ, उसमें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पास, तो उनको दिखाया। अब वहां पे वो ऑफिशियल कहता है, इतना मोटा मोटा क्यों छाप के लाए हो? तो वो हंसने लग गया, मोटा मोटा क्यों छाप के लाए हो? क्या होता है कि जब आपने किसी को जोर से बोलना होता है ना, तो मोटा मोटा छाप लेते हो, जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देखते ही समझ गया, वो हंसने लग गया। उसने फिर मैंने समझाया कि सर देखो, ये जो आपके को वेंडर है, ये जो एक्सटेंशन ऑफ क्लेम बनता है हमारा, इसलिए क्योंकि डिले उन्होंने अपने एंड पे किया है। तो आपका जो 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 पेनल्टी है उनके ऊपर बनता है, हमारे ऊपर नहीं बनता। क्योंकि हमारी तो ये डिपेंडेंसी थी। उन्होंने कहा भाई देखो, या आगे से पहले सबमिट किया करो, ताकि मैं पहले उनको टाइट कर सकूं। अब उसमें मेरे क्लाइंट के लिए जो है वो लेसन लर्न था। मैंने तो पहले उसका काम नहीं किया था, तो पहली बार किया, तो मैंने वो निकाल के दिया। फिर मैंने बैठ के उसका पूरा प्लान चेक किया 2-3 साल का। तो मैंने फिर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ कहाँ पे को वेंडर की वजह से आपका लेट हो सकता है। तो तब जो है जाके उन्होंने पहले ही वो सबमिट कर दिया,
उन्होंने कहा कि हमें आप अपने को वेंडर से एक अंडरटेकिंग कॉपी दे दो कि भाई हम अपने माइलस्टोन को अपने डेट से कंप्लीट कर दें। तो मैंने कहा आप उनके वेंडर की जो है एक अंडरटेकिंग की कॉपी लेके अपने पास रख लो, क्यों आपके ऊपर कल को कोई वो डाल दे तो आप ये दे दिखा सकते हो कि अंडरटेकिंग कॉपी है हमारे पास। करेक्ट है ना? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो धीमे धीमे करके बताऊंगा, क्योंकि एक साथ में बहुत ज्यादा बताऊंगा तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए। सही ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो हमारी लिमिट कोई 3 दिन की नहीं है। सही ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं मान लो किस दिन मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरे ग्रुप में अनाउंस करता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको बात दिखाता करनी हूँ कि भाई देखो जिसने जो बात वो करनी है वो मेरे से कर लो। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ना मैं रोज अपने टीम से, मेरे पुराने स्टूडेंट बैठे हैं उसमें 5 साल 6 साल पुराने, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। तो सही जी है। तो एक ये हमारा ये रिलेशन वाला जो है टास्क, वो चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया ना, उसमें एक जो है LOE, लेवल ऑफ एफर्ट्स क्या बोलते हैं उसको, दैट वी डिड नहीं, नॉट। उसको करना है ना अभी। अच्छा, वो इसके इस कंस्ट्रेंट के बाद करेंगे। बिल्कुल इसके अंदर ही आएगा, अभी वो हाँ टास्क ओके। टाइप में बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ हाँ सकते ओके। मैं। हम्म। उसको उसको नहीं छोड़ सकते। देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया है आपके उसमें, ये व्हाट्सएप में ओके। देखो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे बोल रहे थे सर हमने ना फ्रीलांसिंग करनी है, तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो इसमें कर लो फ्रीलांसिंग के साइट में। हम्म। ठीक है, तो आज काफी तो जैसे मतलब कल जो है काफी स्टूडेंट मतलब वो मीटिंग कर रहे थे मेरे से, तो भाई मैंने कहा भाई दिखाओ अपना प्लान दिखाओ, देखें इसमें क्या है। ठीक है, अच्छा अब हम जो है आते हैं टास्क टाइप में। ये तो थी हमारी कंस्टेंट, देखो कंस्टेंट क्लियर है ना, करेक्ट। है ना? देखो अब इससे भी मजेदार है टॉपिक, अब हम क्या क्या करेंगे। मैंने जब भी स्लेट जब भी क्लीन करना होता है ना, तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ और इस पे मैं इसको बनाता हूँ कॉपी। देखो ये आपके लिए भी ये रिकॉर्ड रहता है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के स्क्रीन पे ही मैं काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे 4-5 स्टूडेंट रहेंगे ना, तो फिर मैं बारी बारी से घूमता रहता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे टास्क टाइप। ठीक है, और ये टास्क टाइप बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, अच्छा अब करेंगे ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट पता नहीं काम नहीं कर रहा ये। एक्टिविटी पता नहीं वो, हाँ एक्टिविटीज ओपन नहीं हो रहा नहीं। हाँ ये बड़ा अजीब सा, ये एकदम से ये भी बंद हुआ है, ये सुबह ही चल रहा था ये। कोई बात नहीं, ये इसका अपना मूड की बात है। देखो इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब आपका वो वाला डेटा आपका रहेगा, आपने जब भी रिफ्रेश करना होगा आप उसमें देख सकते हो, इसमें कर दिया ओके। तो ओके करते ये साफ हो जाएगा, नीड ए क्लीन स्लेट। ठीक, अब ये तो किसी WBS में नहीं था इसलिए यहाँ पे ये बच गया। ओके। है ना? अच्छा अब मैं यहाँ पे एक मैं डालता हूँ। अच्छा ऐसे ना आप एक काम करो, पहले एक तो सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे एडमिन में, एडमिन प्रेफरेंस में जनरल में 6-6 दिन का बनाना पड़ता है। हाँ 6 days। है ना? तो इसलिए यहाँ पे मैं 6 days में डालता हूँ। देखो अब आपको ये भी आ गया ना समझ में, इसकी मतलब यूटिलिटी क्या है। करेक्ट। इसकी यूटिलिटी क्या है कि ट्रेनिंग में हमें 6-6 दिन चाहिए, तभी तो वो दिखता है बाहर, वरना दिखता भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बनाओ, इसमें ना आप एक काम करो और इसमें बनाओ आप 5 टास्क बनाओ, 5 अच्छा टास्क। सुनो। हाँ, टास्क 1 2 3 4 5 बनाओ 6-6 दिन का। पांच टास्क बना दिया। ठीक है, देखो अब मैं दिखा दूँ आपको। अब इन 5 को ना आप लिंक कर लो, ऊपर से लेके नीचे तक लिंक कर लो आप। अच्छा अब यहाँ पे देखें, एक डबल क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे ये घूम के यहाँ आ जाएगा।
अब मैं आपको मैं बताता हूँ एक बढ़िया चीज। देखो क्या होता है कई बारी, जैसे ये जो मेरा है ना टास्क 1 2 3 4, इसके पैरेलल में मुझे एक टास्क करना है। अच्छा एक और चीज, उससे भी मैं बढ़िया चीज बताता हूँ। अब मान लो ये जो मेरे पास जो एक WBS में ये बनाता हूँ, इसमें जैसे एक WBS बना, उसका नाम लिखो WBS1, यहीं पे एक बनाओ इंसर्ट करके, उसमें मत नेम में डाल दो WBS1। पहले वो मैं बताता हूँ, उससे आपको फिर ये मजा आ जाएगा। अब इसमें एक्टिविटी में जाओ, ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये इसको WBS में डाल दो, कट करके WBS में डाल दो। अच्छा देखो ये जो टास्क है ना, ये जो 1 2 3 4 5 टास्क है, ये तो आपके जो है जो भी स्पेसिफिक इंजीनियर या साइट पे जो भी आदमी काम करने वाला है। एक आपका एक आदमी है जो सुपरविजन कर रहा है। आपने क्या किया, एक उसका टास्क आपने वो बनाया, वो पूरे WBS में काम करेगा। तो आपने यहाँ पे एक्टिविटी का नाम डाला सुपरविजन, ठीक है। वो आदमी जो है सुपरवाइजर काम करेगा। अब वो आप कहोगे यार ये तो मेरा WBS तो 30 दिन का बनेगा, तो फिर इसमें 30 दिन डालना पड़ेगा, फिर इसमें और टास्क डालूंगा तो फिर वो 35 दिन का बन जाएगा, तो फिर इसमें 35 दिन डालना पड़ेगा। अब इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन इसमें यूं है, हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, यूं एक्टिविटी डिटेल में जाओ। अच्छा इसमें जनरल में जाओ, देखो इसमें टास्क टाइप है ना, इसमें सिलेक्ट करो WBS समरी। अब देखो ऊपर उसकी ड्यूरेशन कितनी आ गई, 30 days है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें फायदा क्या होगा। अभी मैं रिसोर्स मैनेजमेंट पे नहीं हूँ, लेकिन एक रिसोर्स में बना के आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक रिसोर्स में डाल के मैं दिखाता हूँ। इसमें पहले तो मैं कॉलम डालूंगा, अभी रिसोर्स में मैं आया नहीं हूँ मैं, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, वो एक बहुत ही अलग से करता हूँ मैं उसको। इसमें एक कॉलम लूंगा सिर्फ एक समझाने के लिए। इसमें एक रहेगा बजटेड रहेगा एक, हाँ बजटेड लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसको रखते हैं यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो WBS जो समरी ये एक्टिविटी टाइप है, और इसमें मैं लूंगा फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स पर टाइम। इसका भी मैं अभी मतलब मैं अभी समझाऊंगा मैं आपको। पहले मैं काम कर रहा हूँ एंटरप्राइज रिसोर्स में गया यहाँ पे, और रिसोर्स में एक सेकंड, ये फिल्टर हटाना पड़ेगा, फिल्टर बाय ऑल रिसोर्स, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें मेरे पास रिसोर्स है या नहीं है, नहीं होगा तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लूंगा, टेस्ट, ठीक है। रिसोर्स नेम, नेक्स्ट, लेबर, इसका रेट है 10 रुपीज पर आवर। एक सिंपल सा रेट में डाल रहा हूँ, इसमें अभी आपको ये समझ में आपको आ ही जाएगा, ठीक है। और ये जो रिसोर्स है मैं अपने एक टेस्ट ग्रुप में डाल रहा हूँ। मैंने कहा भाई रिसोर्स मैनेजर, ये एक फिक्टिशियस रिसोर्स है, रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। तो ये रिसोर्स मैनेजर का इसका अपना कोई रेट वेट नहीं है, इसको मैं सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज करता हूँ अपनी ये ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ना, इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल के इसके अंडर में डाल दूंगा, तो ये जो है ना इस रिसोर्स मैनेजर के ग्रुप में रहेगा। अच्छा अब मैं इसमें दिखा दूं, देखो अब मान लो कि ये जो आदमी है इसका मैं जानना चाहता हूँ कि इसका ये जो 30 दिन में ये जो काम करेगा, तो 30 दिन में कितना हुआ मैन आवर, इसका मैन आवर होगा आपका 240 240, ठीक है। अब मैं इसको रिसोर्स को मैंने ये लगाया इसमें, तो रिसोर्स मैंने ये लगा दिया WK। अब WK को मैंने यहाँ पे ये लगाया, देखा यहाँ पे इसने 2400 रुपया कैलकुलेट किया है। अब ये जो 30 दिन है ना,
अब देखो मेरी टेंशन नहीं है, देखो इसकी टेंशन लेगा प्राइमावेरा। देखो इस टास्क को मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 24। 24 हो गया। अच्छा 24 इसका, अगर इसका यूनिट है तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हुआ? 176। अच्छा इसमें क्या होता है, एक मिनट रुको, इसमें 176 होता है, इसका बजटेड यूनिट 192 ले रहा है। एक मिनट रुको, इसमें क्या होता है कि इसमें टास्क के हिसाब से इसको ये बढ़ाना घटाना चाहिए। बजटेड यूनिट पर यूनिट टाइम नहीं, इसको तो चेंज करना चाहिए। एक मिनट रुको, इसमें क्या होता है कि इसको अब इसको 24 सेव करना पड़ेगा, चेंजेस को सेव करना नहीं, पड़ेगा, उसके बाद देगा। इसका नहीं, इसमें बजटेड यूनिट्स, एक मिनट रुको, इसको टास्क 4 को भी हटाता हूँ, टास्क 4 को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ना इसका क्या होता है कि इसका एक डेली रेट इसका चेंज होना चाहिए। इसको टास्क 4 को भी हटा देता हूँ मैं। टास्क 4 को हटाया तो ये 18 दिन का हो गया। तो 18 दिन में इसके मैन आवर कितने हो गए? 18 दिन में 144। 18 दिन में मैन आवर हो गए। एक मिनट, कस्टमाइज रिसोर्स कॉलम, इसमें एक ना पता क्या है, एक इसमें प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में। देखो इसमें क्या है, मैं इसको डालता हूँ ये बजटेड यूनिट के बगल में, इसकी जो यूनिट कॉस्ट है, इसकी यूनिट कॉस्ट है ये 10 रुपए, ठीक है। अब इसका जो बजटेड कॉस्ट है इसका कितना होना चाहिए? इसका होना चाहिए 1440। इसमें क्या है, एक ना टूल है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक टूल है रिकैलकुलेट ये असाइनमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये एक इसमें ये समस्या है ये प्राइमावेरा में, इसको नोट कर लो आप। इसको दबाना पड़ता है, पता क्यों? जैसे मैं इसमें गया ना, ये रिसोर्स में आदमी का मैंने ना पे रेट मैंने ये डबल कर दिया। मैंने कहा भाई इसका पे रेट हो गया 20 रुपए प्रति घंटा, ठीक है। मैंने किया और करके मैं यहाँ आया, और यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 2880, लेकिन करता नहीं है। ये जो टूल है ना, ये मेरे को बार बार ये दबाना पड़ता है, रिकैलकुलेट असाइनमेंट कॉस्ट। अब होगा ये 2880। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे, लेकिन हाँ एक चीज की मुझे ये सुविधा मिल रही है कि 18 दिन ये कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे जितना टास्क जो है ना ये बढ़ेगा ना, जैसे देखो मैंने एक और टास्क मैंने ये बढ़ाया, टास्क मैंने 4 डाला, और मैंने कहा भी ये, फिर मैंने जो है टास्क मैंने 5 डाला, ठीक है। और फिर मैंने जो है टास्क मैंने ये डाला 6 डाला मैंने, और मैंने क्या किया 3 4 5 6 को मैंने ये लिंक किया। अच्छा आप इसको करो लिंक, आप देखो इसका क्या होता है ये इफेक्ट। चारों को लिंक करना है। हाँ करो इनको लिंक, ये 3 4 5 6 ये सीक्वेंस में हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी सीक्वेंस बन गई तो ऊपर कितनी ड्यूरेशन हो गई? 36, ठीक है। यस, 36। अच्छा मैन आवर इसने सही कैलकुलेट। इसने कैलकुलेट किए। अच्छा देखना जरा अपने कैलकुलेटर में क्या बोलता है ये। 36 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होता है? ये कितना रहता है ये 36 मल्टीप्लाइड बाई है? 288 सही है। 288 है ना, सही। तो ये जो इसकी जो कॉस्ट पे मुझे डाउट है, ये तो कॉस्ट इसकी तो 20 अभी रुपए आपने है। डबल कर दी ना, हाँ तो डबल डबल कर देना। आप इसमें क्या करो कि टूल एक बार ही जाओ उसमें, टूल में प्रेस करो, देखो 5760 होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा प्राइमावेरा मार ये, डबल है। अब यहाँ पे प्राइमावेरा मार खा जाता है। यहाँ पे प्राइमावेरा जो है ये मार खा जाता है। तो अगर कोई रिकैलकुलेट कॉस्ट करना भूल गया एक्टिविटीज में चेंजेस करने के बाद, तो पॉसिबल है कि कॉस्ट में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। हाँ एक मोटा एक लाल पेन से नोट कर लो इसको कि whenever you update the resource rate or resource duration, you must use the tool recalculate रिसोर्स कॉस्ट। तो एक recalculate काम कर सकते assignment हैं, cost। एक प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। मतलब जब भी हम लोग कॉस्ट रिलेटेड अच्छा चीजें कभी भी वेरीफाई करने, एक जो बेस्ट प्रैक्टिस में सबको मैं नोट में कराता हूँ कि that before baselining the project,
दो दो काम कर लो। एक एक तो ये शेड्यूलिंग का बटन एक तो ये दबा दो, और एक रिकैलकुलेट असाइनमेंट कॉस्ट कर लो बेसलाइन करने से पहले। तो ये 2 पॉइंट ना एक बारी नोट कर लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर फाइनल बेसलाइनिंग करना है, और एक तो ये शेड्यूलिंग करना, रीअसाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ, रीअसाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो इसमें क्या है कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ये जो टास्क टाइप है ना, ये टास्क टाइप क्या होता है कि ये जो WBS जो समरी टास्क होते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन है ना, ये आपको नहीं डालनी पड़ती। ये क्या करता है, ये टास्क ऊपर ये WBS के साथ ये कोरिलेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो सुपरवाइजर को मैं इंडिविजुअल टास्क पे नहीं लगाऊंगा, मैंने उसका एक टास्क बना दिया है साइट सुपरवाइजन, ठीक है। अब जो सुपरविजन जो आदमी जो काम करेगा, इसमें नीचे जितना भी टास्क जो ये डलेगा ना, उसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है ना। अब मैंने उसका जो रेट मैंने रखा है 20 रुपए प्रति घंटा, ठीक है। उसका पे रेट है 20 रुपीज पर आवर, तो उसका जो भी बजटेड यूनिट है। अब जैसे मैं रिसोर्सेज में गया, अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, वो इंस्टेंटली चेंज करता है। आप किसी भी रिसोर्स का रेट चेंज करोगे, ड्यूरेशन चेंज करोगे, वो तुरंत। कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि सर ये प्राइमावेरा जो है ये बेकार है। अब मैं कई बारी मैं प्राइमावेरा में चिट्ठी डाल चुका हूँ, भैया इस चीज को ठीक कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है। वो डायनासोर के ऊपर आपने ये पैचअप किया होगा, अब बताओ इसका कोई तो बनता है। मैं क्यों मैं ये बट वो दबाऊं, जब मुझे पक्का पता है, जब मैंने रेट चेंज किया है, तो वो अपने आप ही इसको करना चाहिए ना, वरना सॉफ्टवेयर का क्या हुआ फायदा। इसने देखो अब रेट चेंज किया है, देखो अब इसने 2880 किया है, पहले कितना था, पहले 5760 था, है ना, पहले 5760 था। अब ये जो चीज है, ये तो थोड़ा डायनासोर युग की बात है, लेकिन खैर आपने इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूटिलिटी मेरे को आज तक नहीं समझ में आई है कि सॉफ्टवेयर में हम एक जगह पे चेंज कर रहे हैं, तो एज ए स्प्रेडशीट, जैसे स्प्रेडशीट होती है, आपने तो काम किया है स्प्रेडशीट में भी, अगर आपको ऐसे बटन दबाना पड़े तो फायदा है कोई स्प्रेडशीट यूज करने का, वो रिलायबल रहेगी। एक बार अगर बटन दबाना भूल गए तो फिर हो गया, फिर हिसाब किताब। तो इसको नोट कर लो आप कि हम रिसोर्स का रेट चेंज करते हैं, रिसोर्स की ड्यूरेशन चेंज होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक और टास्क डाल दिया, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया टास्क नंबर 7, या तो मैंने क्या किया, इसी टास्क को ना मैंने ये 10 दिन कर दिया। अब इसको मैंने 10 दिन कर दिया, तो वहां कितने दिन हो गए, 40 दिन हो गए ना। अच्छा, अब इसने 40 दिन तो ठीक किया कैलकुलेट, और इसने 320 भी ठीक किया कैलकुलेट। इसने कहा भाई वो बजटेड यूनिट। अब ये जो 320 का जो 3200 जो बनना चाहिए ना, ये 3200 नहीं है बनाता। वो कहता है जी इसको 3200 बनाना है, तो पहले ये बटन दबाओ आप इधर, अब 3200 करना है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इस टास्क की यूटिलिटी बहुत ही बढ़िया है, इसको नोट कर लो आप। इस टास्क का नाम है WBS summary. The WBS summary task, it derives the duration from the WBS. It is used for the duration of the site supervisor, general manager, project manager. अब देखो मैं आपको एक और जो है उसकी बढ़िया एप्लीकेशन में ये बताता हूँ। अब जैसे मान लो आप ना प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अब आपका भी तो एक टास्क में, मतलब प्रोजेक्ट में एक जो है ना वो ड्यूरेशन है ना। आपने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैंने क्या करा, मैंने कर दिया WBS। अब ये कौन से का लेगा बताओ, ये लेगा ऊपर, ये जो टॉप लेवल में जो है ये यहाँ से ले लेगा ये प्रोजेक्ट में। अब नीचे आप कितने भी टास्क डाल लोगे ना, आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन मान लो आ गई 300 दिन, 100 दिन आ गए, तो ये 300 दिन 100 दिन लेगा। अब इस टास्क के ऊपर जो भी रिसोर्स लगाऊंगा, जैसे मान लो रिसोर्स मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्रिएट कर दिया PM, तो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, और मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने कहा भाई इनका रेट है 100 रुपीज पर डे, ठीक है, तो मैंने कर दिया फिनिश। देखो यहाँ पे कर दिया 100 रुपीज पर डे। अब यहाँ पे एक्टिविटीज में क्या, अब आप इनकी ना दिन की गिनती से देखना, इनका पैसा ये आएगा। अब इसको पहले मुझे रिसोर्स पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है ना आपने मैन आवर नहीं देखना, दिन की गिनती से आएगा। देखो 40 दिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं
तो यहाँ पे ये 40 दिन कैलकुलेट कर रहा है ना। अब मान लो कि मैंने ये वाला टास्क है, इसको मैंने कर दिया 10 दिन, तो क्या हुआ, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी हो गई, 44 हो गई, तो इसका 4400 मतलब बनना चाहिए, बस वही है, बस ये वाला बटन थोड़ा सा मतलब ये दबाना पड़ेगा, ठीक है, तो अपने आप ही ये कैलकुलेट करेगा। नहीं चेंज नहीं हुआ इसमें तो चेंज नहीं किया इसने, यहाँ पर चेंज कर दिया इसने, देखो इसका चेंज कर दिया। अब ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है ये, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, असाइनमेंट कॉस्ट यहाँ चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज कर रहा भाई, एक मिनट हो गया, मैं टास्क टाइप देता हूँ। हाँ, इसमें जो है टास्क टाइप ये होना चाहिए, फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड यूनिट्स पर टाइम, रोज का जो है फिक्स रहेगा, ठीक है, इसका मैं मतलब अभी मैं समझाऊंगा। हाँ, ये वाला टास्क टाइप रहेगा, तो ये चेंज ये करेगा। तो अब ये जो टास्क टाइप है फिक्स ड्यूरेशन पर यूनिट्स ऑफ टाइम, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें रिसोर्स को जाके मुझे बोलना पड़ेगा भाई ये 8 घंटे रोज के हिसाब से ये लगेगा, ये फुल डे के हिसाब से लगेगा, ये तब जाके इसको ये कैलकुलेट करेगा, रिकैलकुलेट असाइनमेंट कॉस्ट, अब जाके ये 4400 करेगा। अच्छा, मान लो ये वाला टास्क 2 है, इसको मैंने कर दिया 10 दिन, तो इसको 10 दिन किया तो प्रोजेक्ट कितने दिन का होगा, 48 दिन का। अब इसको मैं करूंगा रिकैलकुलेट असाइनमेंट कॉस्ट, अब ये कर रहा है 48 दिन, तो ये दो दो कॉम्बिनेशन लेना है कि एक तो कॉम्बिनेशन ये होगा WBS समरी, दूसरा फिक्स ड्यूरेशन एंड पर यूनिट ऑफ टाइम। इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा जब मैं रिसोर्सिंग में जाऊंगा, तो अभी आप सिर्फ इस पे करो फोकस, ये WBS समरी पे, ठीक है, तो ये आ गया ना ये समझ में। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या टास्क होता है। तो फिनिश माइलस्टोन क्लियर है आपको, स्टार्ट माइलस्टोन भी क्लियर है। अच्छा, टास्क डिपेंडेंट क्या होता है कि कोई भी टास्क जब टास्क डिपेंडेंट टाइप लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट कैलेंडर के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाता है। अब जो टास्क टाइप हम रिसोर्स डिपेंडेंट ले लेते हैं, उसमें क्या करता है कि उसमें जो रिसोर्स का जो कैलेंडर होता है ना, उसके हिसाब से अपनी छुट्टियों के दिन जो है वो ये बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट कैलेंडर को बाईपास कर जाता है। तो नॉर्मली हम जो है रिसोर्स डिपेंडेंट यूज नहीं करते हम, क्योंकि उससे ना काफी कंफ्यूजन हो जाती है प्रोजेक्ट में। हम ज्यादातर यही यूज करते हैं टास्क डिपेंडेंट, WBS समरी, या फिर ये लेवल ऑफ द एफर्ट, ठीक है। तो रिसोर्स डिपेंडेंट में वो रिसोर्स कैलेंडर से चलता है, तो वो भी मैं डेमो में दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसको आप जो ये अवॉइड करना उसको, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं फिर से अपना टास्क डिपेंडेंट पे। अब देखो, अब मैं आपको एक और जो है सिचुएशन में ये बताता हूँ आपको, देखो ये यहाँ पे क्या है, इनको थोड़ा सा ना छोटा छोटा मैं कर लेता हूँ, जैसे इनको कर लिया 4 दिन, 4 दिन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक ना टास्क है जिसमें ये जो 1 2 3 4 है ना, ये 1 3 4 के ही बराबर रहेगा, उसमें 6 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं एक टास्क में एक जो है ये बनाऊंगा, उस टास्क का मैं मतलब मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक रेलवे ट्रैक बना रहा हूँ, ठीक है। अब रेलवे ट्रैक जो है, मैं ये काम कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 में, और मेरे को रेलवे ट्रैक के बगल में एक और काम करना है। देखो ध्यान से देखना, फेंसिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फेंसिंग का टास्क है, ये टास्क नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 5 के एंड में एंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो मैं ट्रैक लेइंग का काम मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 में कर रहा हूँ, 6 कुछ और काम है, 6 पे वो रेलवे स्टेशन बन रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक फेंसिंग है, मैंने लिख दिया फेंसिंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। अब ये बिल्कुल करेक्टली पैरेलल में आपके ये होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टास्क टाइप होता है लेवल ऑफ द एफर्ट, इसका एक यूज होता है, ठीक है। तो इसको जब हम यूज करते हैं और फिर हम इसको दोनों तरफ से हम लिंक कर सकते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन है ये अपने आप ही कैलकुलेट होती है टास्क 1 के स्टार्ट से स्टार्ट। अब इसके रिलेशनशिप में क्या, मैंने कहा अभी इसका जो प्रीडिसेसर है उसके साथ एक इसका रिलेशनशिप है स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में गया सक्सेसर में,
इसका रिलेशनशिप टास्क 5 के साथ जो है इसका है फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप में है, तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप कर दूंगा फिनिश टू फिनिश। अब ये जो टास्क है देखो इसकी एक ड्यूरेशन बन जाएगी, अभी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो सॉफ्टवेयर में एक ना वो बग है, उसको मैंने बाईपास किया हुआ है। देखो इसमें क्या है ना, ये 26 दिन का जो है ये टास्क जो है ये बना रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे रिसोर्सेज में गया, मैंने कहा एक रिसोर्स लगाता हूं मैं FM, इसका नाम है फेंसिंग मैन। फेंसिंग मैन जो है वो प्रति घंटा वो ले रहा है हमारे से 10 रुपए, ठीक है। इसका सिंपल रखा मैंने, फेंसिंग मैन मैंने लेबर लगा दिया। अब इसमें देखना, इसमें अब इसका कॉस्ट कैलकुलेट जो है वो करेगा फेंसिंग मैन का। अब इसमें गया मैं फेंसिंग ऑफ द ट्रैक, ठीक है। अब इसमें रिसोर्स में गया और इसका जो फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट की बजाय लूंगा फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स पर टाइम। वो इसलिए लूंगा कि इसका पर डे का रेट फिक्स रहे। अब इसमें मैंने लगाया ये फेंसिंग मैन को। अब फेंसिंग मैन का पैसा इसने कितना कैलकुलेट किया, 2080। देखो 26 दिन का काम है ना, तो 26 गुना 8 कितना हुआ, 26 into 8 20, हाँ 208 yes। तो 208 रुपए और 10 रुपए प्रति घंटा के इस हिसाब से इसका पैसा बना दिया 2080। अब देखो कितनी ये बढ़िया चीज है, अभी ये दिख नहीं रहा। अभी क्या है कि इसमें एक ये समस्या, पहले मैं ये समस्या दूर कर देता हूँ। मैं एक फाइल भेजूंगा आपको, उसमें एक आपकी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, हाउ टू इंपोर्ट द लेआउट, ठीक है। मैं 1 मिनट हो जरा फाइल भेजता हूँ मैं। ये असल में इसमें ना ये बग है ये सॉफ्टवेयर में, तो इसका एक फाइल होता है, उसको अगर आप इसकी लेआउट फाइल अगर ये चेंज कर लोगे तो वो हो जाएगा। देखो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ये एक PLF फाइल है, प्राइमावेरा लेआउट फाइल। आप इस लेआउट को जो है ये लगाओ यहाँ पे, एकदम से तुरंत ये दिख जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि थोड़ा कॉलम की रीकॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिखने के साथ साथ जो है ना ये क्या करेगा, ये कॉलम भी चेंज कर देगा। इसमें ईमेल में भेजा है? नहीं, वो उसमें व्हाट्सएप में दिए, देखो आपके व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया। व्हाट्सएप में क्या होता है कि छोटी मोटी फाइल तुरंत चली जाती है। इसमें इंपोर्ट ही करता हूँ ना सीधा? हाँ, इसके अंदर ना देखो पता कहाँ से करना है। आप ना पहले लेआउट में जाओ और लेआउट का करो, सेव करना है इसको? नहीं, इसको कर दो नो इसको कर दो, इसका वो आ जाएगा, कंट्रोल पैनल आ जाएगा साइड में, खोल दो इसको। नो नहीं, नो बोल दो, और यहाँ पे ना इंपोर्ट आएगा बटन, और यहाँ से उस फोल्डर्स में जाओ जहां से आपने ये डाउनलोड किया हुआ। अच्छा, डाउनलोड की जगह बदल गई है। डाउनलोड तो आपके ना उसमें ये डाउनलोड्स में आएगी ना अब तो, है ना। तो इसको सेव, इसको कर लो सेव, इसको अप्लाई कर दो एक बारी, ठीक है। एक बारी ना आपको ये टास्क जो है ये दिखना चाहिए। पहले ये क्या था, भूत की तरह था। अब इसमें क्या है कि अब ये जो दिखने लगा है अब आपको, अब इसमें क्या है कि कॉलम आप एक काम करो, ये हटा के ना इसमें ये जो BL1 सर थोड़ा हटा दो ये, और इस
इस लेआउट को थोड़ा संभाल के रखना, इस लेआउट को, ये बहुत काम का लेआउट है, क्योंकि काफी लोग जो है बहुत इसमें परेशान है, क्योंकि ना लेवल ऑफ दी एफर्ट कई जगह पे जरूरत पड़ती है। पता सभी नहीं ये निकाल क्या दो, रहता है। L1 सभी निकाल दो। हाँ ये सब निकाल दो, ये अभी नहीं चाहिए ना। अभी हमें क्या चाहिए कि एक तो ड्यूरेशन चाहिए, प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल टोटल कॉस्ट भी ये निकाल दो, एक्चुअल वेरिएंस ये सब ये निकाल दो। हाँ बस ये अप्लाई कर दो। देखो इसमें ये इसमें फायदा क्या हुआ कि ये आपकी, मुझे समझ में नहीं आया, ये लेआउट से कैसे आ गया, पहले नहीं था? अरे ये बग है ये सॉफ्टवेयर में, ये लेआउट जो है इसमें क्या किया है कि लेआउट जो है हमने, क्या हुआ कि किसी के ना सिस्टम में चल रहा था, मेरा तो बड़ा ग्रुप है काफी, हाँ। ठीक है, किसी के सिस्टम में चल रहा था। मैंने कहा यार तू एक काम कर, अब काफी लोग इससे ना वो परेशान थे, इनफैक्ट मेरे सिस्टम पे भी नहीं चल रहा था। हम्म। मैंने कहा तो एक काम कर, जरा लेआउट दियो जरा, मैंने मतलब परेशान हो गए थे 2-3 घंटे से सारे। वो कह रहा है सर मेरे सिस्टम पे दिख रहा है। मैंने कहा तू एक काम कर, अपना एक काम कर, तू लेआउट भेज दे मेरे को। हम्म। उसने कहा सर लेआउट से थोड़ी ना होता, इसमें बग है सॉफ्टवेयर। मैंने कहा तू लेआउट तो भेज, देखते हैं ना बग को बाईपास करते हैं। तो वो लेआउट जो है मैं सभी को अपने ग्रुप में मैं बांट रहा हूँ, जिसके जो है वो समस्या आ रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लेआउट चेंज करने से क्या फर्क पड़ गया इसमें। लेआउट चेंज करने से, और ये लेआउट जो है ये सब ऐसे संभाल के रखना सोने की तरह, क्योंकि ना आपका ये जो लेवल ऑफ दी जो एफर्ट जो ड्यूरेशन है ये बहुत ही काम की चीज है। इसको आप ना ये प्राइमावेरा में डाल लो, इसको प्राइमावेरा के सॉफ्टवेयर के साथ एक एक तो यहाँ पे डाल लो कॉपी, एक आप अपने प्राइमावेरा के फोल्डर में डाल लो, ठीक है। प्राइमावेरा में जाओ, प्राइमावेरा में, हाँ इसमें, हाँ डॉक्यूमेंट के साथ भी डाल लो, नहीं तो एक फोल्डर बना लो, लेआउट्स बना दो, फोल्डर एक लेआउट बना लो, कई प्रकार के लेआउट सेव करोगे अब आगे। मैं भेजता रहूंगा लेआउट भी इसमें। डाउनलोड से मिल जाएगा, डाउनलोड में जाओ, डाउनलोड में कट पेस्ट कर दिया था ना इसलिए। हाँ तो फिर हाँ कट नहीं करना चाहिए, डाउनलोड में पड़ा रहने दो। डाउनलोड को क्या करता हूँ मैं, एक एक महीने के बाद साफ करता हूँ, ठीक है। ये आपका सेट हो गया। अच्छा अब इसमें देखो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। देखो ये जो टास्क 1 से लेके 5 के बीच में इसकी डिपेंडेंस, इसकी जो ड्यूरेशन की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लो ये टास्क 2 है ना, जैसे आप इसको ना 6 कर दो, आप इसे कर दो, इसे 6। देखो अपने आप ये स्ट्रेच हुआ। अब इसका देखेंगे इसका जो है रिसोर्स कॉस्ट कैलकुलेट हुआ कि नहीं। हम इसके इसमें रिसोर्सेज में जाएंगे हम। अब देखो इसकी जो बजटेड यूनिट होगी 220, हाँ वो ऊपर का बटन दबाओ जरा, टूल्स रीकैलकुलेट। अब वो 2240 कैलकुलेट कर रहा है, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो ड्यूरेशन की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल रही है 1 से लेके 5 की, माला बना रहा है ना, एक माला बन गई है। तो इसमें आप जब तक आप जब तक ट्रैक आप जब तक डालते रहोगे तब तक आपको फेंसिंग करना पड़ेगा। तो क्योंकि फेंसिंग का काम पैरेलल में वो ट्रैक के स्टार्टिंग पे और उसके एंडिंग पे वो डिपेंडेंट है, तो ऐसे आपने इसको लिंक कर देना है, और ड्यूरेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले जो टास्क है उसको बस भरते चले जाओ, ये अपने आप ही ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी ड्यूरेशन अपने आप। तो इसका जो प्रोग्रेस है वो ये 5 या 6 टास्क के ऊपर है, 5 टास्क के ऊपर है। हाँ मतलब अगर वो 5 टास्क को अपडेट करोगे 20%, हाँ तो ये टास्क भी 20% हो जाएगा। हाँ वो भी अपने आप ही प्रोग्रेस हो जाएगा, उसके साथ ही प्रोग्रेस होगा, इसका भी प्रोग्रेस उसके साथ होगा, और उसकी जो ड्यूरेशन भी वहीं से आएगी। और जितना उसका प्रोग्रेस होगा उतना आप देख लोगे, उतना ही इसका जो एक्चुअल जो रेगुलर यूनिट कैलकुलेट होगा, प्रोपोर्शनेटली जितना इसका वो बनेगा। अब जैसे मान लो टास्क 1 से इसका कितना आ रहा है, ये कितना डेज आ रहा है, 4 दिन आ रहा है ना। तो आप ये देख लो कि 4 दिन का पैसा कितना हुआ, 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 गुना 10, 320 रुपए आपका ये एक्चुअल कॉस्ट में आ जाएगा, एक्चुअल रेगुलर यूनिट में
जैसे ही आप पहले टास्क को कंप्लीट मार्क करोगे तो एक्चुअल रेगुलर यूनिट यहाँ पे आपका वो आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये प्रीमावेरा प्रोरेटा बेस कॉस्ट से करता है काउंट या फिर कंप्लीशन होने के बाद ही काउंट करता है? नहीं, ये प्रोरेट बेसिस पे भी कर सकता है, बीच में भी कर सकता है। कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल, अकाउंटेंट की तरह चलता है ये आपका। जब ये इसका बेसलाइन बन जाएगा ना, जब ट्रैकिंग का टाइम आएगा, तब आपका रोल प्रोजेक्ट मैनेजर से जो है वो अकाउंटेंट का हो जाएगा। अकाउंटेंट तो एक ही चीज का हिसाब रखता है पैसे का, आपको 3 चीज का हिसाब रखना पड़ेगा, टाइम का, यूनिट्स का, यूनिट किस चीज का, मैन का, मशीन का, मटेरियल का। एक्चुअली डालना पड़ेगा आपको। प्राइमावेरा अपने आप गैस नहीं लगाएगा, आपने जो बजटेड डाला है उससे कम ज्यादा कितना, आपने कहा अभी मैं तो भाई बजट किया 1000 टाइल, ठीक है, अब आपने जो है वो लगा दिया वहां पे 1050, तो वो डालना पड़ेगा, वो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। जैसे ही आप डालोगे ऊपर से कॉस्ट आपका कैलकुलेट करेगा बड़ा फर्स्ट क्लास। तो वहां पे हम पहुंचेंगे कल, ठीक है, वहां पे हम पहुंचेंगे कल। आज हमने क्या किया है, हमने ये समझा है कि शेड्यूलिंग कहाँ से होती है शुरू। सबसे पहले शेड्यूलिंग की शुरुआत होती है हमारे कैलेंडर से। कैलेंडर तो समझो कि आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसका प्रॉपर कैलेंडर एज पर द वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री। कंट्री पर भी करती है डिपेंड, क्योंकि कंट्री की जो छुट्टियां वही तो आप डालते हो यहाँ पे, है ना। तो जब आप इसको कैलेंडर में डालोगे, और कैलेंडर की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अब मैं जो है मैं कैमरे पे मैं आता हूँ आपसे, ठीक है। कैलेंडर की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि देखो, आपका अगर प्रोजेक्ट अगर 1 साल का है, जैसे ये 1 साल है ना, आपने कैलेंडर बनाना है 1.5 साल का। 1 सेकंड में भी लाइट चालू करता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप देख लो। कैलेंडर जो है, अगर आप 1 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हो 1.5 साल का बनाओगे, क्यों? देखो मैं अपनी गलती आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ कि 1 साल का प्रोजेक्ट आया, 1 साल का प्लान बनाया मैंने, ठीक है, काम कर लिया 2 महीने। क्लाइंट जो है बॉस से मिला, कहा है कि भी देखो तुम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी में बढ़ाने को दे रहा हूँ। बॉस ने कहा भी तो क्लाइंट ने हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बढ़ाने को दे दी, तो मैंने उसका एस्टिमेट किया, तो 3 महीने का वो आया। तो उसका अप्रूवल मिल गया, मैंने प्रोजेक्ट को री बेसलाइन कर दिया, लेकिन छुट्टियां नहीं डाली 3 महीने की। अब क्या हुआ, क्या हुआ बताओ क्या है, अब क्या गलती हुई? जल्दी खत्म हो गया। उस जो 3 महीने में 3 जो माइलस्टोन थे वो जल्दी जल्दी आ गए, छुट्टियां तो है नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ, जब 15-20 दिन मैंने काम कर लिया, फिर मैंने रियलाइज किया मैं तो छुट्टी तो डाली नहीं। अब छुट्टी डाली तो मान लो कि एक मेरा पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था 31 ये दिसंबर को, तो मेरा वो दिखा रहा था कंप्लीट 31 मार्च को। जब छुट्टियां डाली तो देखा कि वो चला गया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना एक दिन भी लेट हो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हाई हाई तौबा करते हैं क्लाइंट, ठीक है, मेरा ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। मैंने बॉस को बताया, तो बॉस ने फिर कहा कि भैया क्लाइंट को तो बता ही नहीं सकते ये तो, कि भाई हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर इतने इनकम्पिटेंट है, ठीक है। अब पहले मैं टेक्निकल रोल में था, टेक्निकल से जो है सन 2000 में सीधा डाल दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाल दिया, मैं सोच रहा हूँ टेक्निकली। अब प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। वो क्या होता है, जब गलती होती है ना तब माइंडसेट चेंज होता है। तो बॉस ने कहा देख, रात दिन काम कर, अपनी टीम के साथ बैठ के मीटिंग कर, और इसको जो है शेड्यूल कंप्रेशन कर, पुट मोर पीपल टू द टास्क। हम टाइमलाइन चेंज नहीं कर सकते, जो हमने कमिटमेंट कर दी वो कर दी, वरना क्लाइंट जो है क्या करेगा, वो पैसे काट लेगा, हमारा ज्यादा लॉस होगा। यहाँ पे ओवर टाइम कर ले, ज्यादा पिज्जा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, और काम खींच दे उन्हें। तो वो जो लेसन लर्न था ना, फिर मैं क्या करता था, 1 साल का प्रोजेक्ट होगा तो 1.5 साल का मैं छुट्टी डालता था। अगर बीच में अगर कोई बढ़ा दे, कुछ भी कर दे, तो उसके बीच में उसकी एक बड़े से लंबी छुट्टियों की छत्र छाया में रहता था। तो इसका लेसन क्या है कि छुट्टियों की छत्र छाया बड़ी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट अंदर छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट की फिनिश डेट जो एक्यूरेटली, क्योंकि फिनिश डेट इज डिपेंडेंट अपॉन द कैलेंडर। कैलेंडर शुड बी बेसिकली द फर्स्ट फाउंडेशन फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज है टाइम, क्योंकि भगवान ने एक टाइम लाइन बनाया लीनियर। अब पैसा अगर आप अपने बॉस से कहो ना, बॉस दे दो पैसा थोड़ा और प्रोजेक्ट में, बॉस कहें ले ले। अच्छा, लेकिन बॉस से कहो बॉस थोड़ा टाइम दे दो, कहता जब क्लाइंट ने टाइम नहीं दिया मैं तेरे को कहां से दूंगा, ठीक है ना, वो टाइम तो दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है।
ए प्रोजेक्ट विच इज फिनिश्ड ऑन टाइम इज ऑलवेज चीपर। ये नोट कर लो, ये इस बात को मैं फिर दोबारा पीएमपी ट्रेनिंग में भी मैं ये बोलूंगा, project is always finished on time is cheaper, because if project is delayed then it might hit the LD clause। अगर वो जैसे मान लो एक क्लाइंट ने ना एक आपको ये प्रोजेक्ट दिया, भाई हमें जो है टोल प्लाजा जो ये बना के, टोल प्लाजा आपका कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च 2021। ठीक है भाई, हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है क्लॉज, क्योंकि हमारा पर डे रेवेन्यू 5 लाख का है, उस टोल प्लाजा में जो गाड़ी जो निकलती है पर डे हमारा 5 लाख का कलेक्शन है। अगर एक भी दिन लेट होगा तो वो 5 लाख आपको भरना पड़ेगा अपने जेब से या अपने प्रोजेक्ट की जो है फीस में से। ठीक है, तो ये है लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लॉज। तो इसलिए हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट होता है हमारा बढ़िया कैलेंडर से। उसके बाद हमारा टाइम मैनेजमेंट किस चीज से होता है? प्रॉपर ड्यूरेशन की कैलकुलेशन से। उसके बाद हमारा टाइम मैनेजमेंट किससे होता है? बढ़िया प्रॉपर रिलेशन लगाने से। प्रॉपर रिलेशन क्या होता है? प्रॉपर रिलेशन फिनिश टू स्टार्ट नहीं होता, प्रॉपर रिलेशन ये होता है कि भाई ठीक कौन सा है, एक्चुअल कौन सा है। हाँ, अब मान लो कि जहाँ पे मैंडेटरी फिनिश है, मान लो कि आपने जो है टास्क लगा दिया एक्सकावेशन के पैरेलल में, जो एक्सकावेशन के बाद होता है वो प्रॉपर नहीं है। जो एक्सकावेशन के बाद होगा वो तो आप लगाओ, लेकिन कहीं पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप जो है लीड टाइम डाल सकते हो, टास्क ऐसे कर दिया पैरेलल में, या तो कहीं पे आपने कर दिया स्टार्ट टू स्टार्ट, आपकी टेक्निकल नॉलेज कहती है स्टार्ट टू स्टार्ट कर दो थोड़ा सा लैग डाल के, तो वहां टाइम सेव हो गया, फिनिश टू फिनिश में टाइम सेव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो गया। तो सबसे पहले कैलेंडर, ड्यूरेशन, रिलेशन। उसके बाद क्या आ गया? कंस्ट्रेंट। उसके बाद क्या आ गया? टास्क टाइप, है ना। अब ये जो बीच में जो टास्क टाइप है, WBS समरी और जो LOE है, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो WBS जो समरी ऊपर लगाओगे टॉप में, तो आप उसमें जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिन, इन तीनों का टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जिस जिस WBS में जो जो सुपरवाइजर काम कर रहा है उसका कैलकुलेट करते हो। सुपरवाइजर को हर टास्क में लगाने की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं यूडेमी फ्यूडेमी से सीख के आते हैं, वो सुपरवाइजर को हर टास्क में जो है लगाते हैं। मैंने कहा ये क्यों कर रहा है? तो वो कहता है सर वो सुपरवाइजर भी तो काम करे। मैंने कहा सुपरवाइजर तो एक लीनियर में काम कर रहा है, एक एक टास्क में घुस के थोड़ी ना काम कर रहा है, वो तो साइड पर खड़ा हुआ है। उसमें उस साइड में जितना काम होगा, उस WBS में जितना काम होगा वो करवाएगा। तो फिर कहे भाई वो WBS समरी लगा। सर वो तो यूडेमी में नहीं था। मैंने कहा यूडेमी में नहीं था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तो अपने कैरियर का जो है सत्यानाश करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आदमी कंसल्टेंट के साथ काम करता है ना, उसके सब जो वो पता होता है, ये सब साइट वगैरह में नॉलेज मिलती है। यूडेमी ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग? अब यूडेमी ऐसे बात नहीं करेगा जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दिस इज ट्रेनिंग एंड कोचिंग। यूडेमी में क्या है कि रिकॉर्डेड एक आदमी बोल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, उसने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसका नाम है, तभी यूडेमी वालों ने उसको बुलाया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसका मजा तब आएगा आपको जब आप मेरी ट्रेनिंग करने के बाद उसका भी देखोगे, उससे भी कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। लेकिन वो कोचिंग नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग कोचिंग नहीं करती, रिकॉर्डिंग देती है नॉलेज। लेकिन नॉलेज तब काम करेगी जब आपके कोर कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब मेरे को जो है वो यूडेमी वाले कहते हैं कि सर आप कुछ दे दो। पता नहीं किसने यूडेमी वालों ने देख लिया मेरा वीडियो। अब यूडेमी में पता क्या है, वीडियो सारे वो पाकिस्तानियों के हैं। वो पाकिस्तानी इंग्लिश वो उल्टा सीधा लिखते हैं, उल्टा सीधा देखोगे स्लाइड पे काफी सारी मिस्टेक्स हैं। और वो यूडेमी वाले इस वक्त वो हटा भी नहीं पा रहे, क्योंकि सब्सक्राइबर भी है। वो कह रहे हैं कि सर आप कुछ दो बना के। मैंने कहा मैं अभी नहीं बनाऊंगा, अभी मैं थोड़ा पहले निपटा लूं, फिर मैं आपका देखूंगा अक्टूबर के बाद से। ठीक है, जब मैं छुट्टी उट्टी लूंगा तब देखूंगा, क्योंकि उसमें फिर वो बनाना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि मेरे पास ना स्टूडेंट अपने रेफरेंस से ही बहुत मिलते रहते हैं। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसमें 220 लोग हैं। 220 लोग, किसी ने एक दे दिया, दो दे दिया, एक दे दिया, तो मेरा काम चलता रहता है। तो मेरे को क्या है कि लाइव सेशन करने में थोड़ा मजा भी आता है, क्योंकि क्लासरूम में करता था मैं पहले। अब वो क्लासरूम का जो है वो एक्सपीरियंस मिस कर रहा हूँ मैं। बहुत दिन हो गए क्लासरूम नहीं किया, और एक ही कमरे में बंद हूँ, इसी वाले में। अब उसमें जो है मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं पापा कहाँ तक जा रहे हो, कितनी दूर जा रहे हो। अब उनको बच्चों को चिंता है कि पापा को कोरोना ना लग जाए। ठीक है, इसलिए ना मैं जाता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम 53। अब 53 का जो है वो सर्वाइवल चांस जो है कम है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी इसलिए वो करना जरूरी है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ना लोगों को ज्यादा टाइम दो। कोई भी स्टूडेंट आए, उसने जितना पढ़ना वो पढ़े, उसको मैं मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ
ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घर में बैठ के मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, टीवी देखूंगा, तो टीवी से जो है ऊपर जो है न्यूज आएगी, वो अमित शाह के जो कोरोना लग गया है, फेसबुक में जाऊंगा, वहां पे जो है किसी मुसलमान की पोस्ट देखूंगा कि वो दुआ कर रहा है कि अमित शाह को कोरोना लग जाए, मेरा दिमाग हो जाए खराब। वैसे ही मैं आरएसएस का हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप ठीक है, ये सब, हाँ, तो ये सब जो है ना, मेरे को बड़ा सा गुस्सा आता है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ रहो कि ठीक है, क्योंकि पोस्ट डालते ना, कोई भी मोदी को बोलता है, अमित शाह को बोलता है, मेरे बहुत चुभती, क्योंकि मैं जो है अमित शाह जी से मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। मैं एक बार एम्स में आया था अपना ट्रीटमेंट वो करवाने 4-5 साल पहले, मैं अपनी वाइफ के साथ गया था। तो उस वक्त मैंने उनको ना यूं किया, मैंने ऐसे, वो आरएसएस वाला, तो उन्होंने भी कहा, फिर मैंने कहा कि सर थोड़ी सी जो है मेरे को थोड़ी डॉक्टर को रेकमेंड कर दो, उन्होंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो फिर मैं गया अंदर, तो मेरा काम बन गया। तो वो बहुत ही हेल्पफुल आदमी है। तो क्या होता है ना कि ये सब चीज, सब न्यूज देखते हो कि ये सब ना थोड़ा दिमाग खराब रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपना काम में रहता हूँ। मैंने कहा चलो काम करके थोड़ा जो है स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्या है कि एक तो होती है ट्रेनिंग, एक होती है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन से क्या होगा, आप ना सेल्फ लर्निंग मोड में चले जाओगे। आपको लगेगा हाँ मुझे प्राइमावेरा करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो है ना एजेंडा क्या है, सेट नहीं है, सेट तो एक मिनिमम पे है। मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट अगर उससे ज्यादा अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो बता दो उसको। ठीक है, वो मैं बताऊंगा 3 दिन के बाद। पहले तो 3 दिन का एजेंडा कंप्लीट करना है। तो आज आपको ये क्लियर है ना, टाइम वो है ना ग्रिप में, पक्का बढ़िया कैलेंडर ये बना लोगे ना। अब कैलेंडर कोई सा भी बना लोगे, 7 दिन का भी बना लोगे, मिडिल ईस्ट का भी वो जो है वो बना लोगे। कैलेंडर एक बार ही बन गया, और ड्यूरेशन रिलेशन अगर सेट कर दिया, और टास्क टाइप अगर कंस्ट्रेंट और टास्क टाइप अगर सही यूज कर लिया, तो आपका जो है टाइम सेट हो गया। अब उसके बाद आता है रिसोर्स। रिसोर्स जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि पुटिंग द हॉट नाइफ थ्रू द बटर, इट इज जस्ट लाइक दैट इन द प्राइमावेरा। प्राइमावेरा इतना बढ़िया कैलकुलेशन करता है कॉस्ट का, इतना बढ़िया ब्रेकअप देता है। और उसमें लोग सोचते हैं बजटिंग बहुत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल चीज है। आपका बस ये सही होना चाहिए, क्वांटिटी सर्वे सही होना चाहिए बस, कि आपने कितना मैन आवर लगाना है, कितना मशीन आवर लगाना है, कितना केजी लीटर मीटर लगाना है। एक बार ही लगा दिया, तुरंत आपके स्क्रीन पे बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएगा 4 कॉलम में, लेबर, नॉन लेबर, मटेरियल, प्लान्ड एक्सपेंस, फिर दिखाएगा टोटल। आपने सिर्फ रेट चेक करना है और क्वांटिटी चेक करना है अपने टीम के साथ, क्रॉस चेक। क्योंकि हम अपनी चीज को अपने आंख से देखते हैं, हमें ठीक दिखती है। अगर हमारे किए हुए काम को दूसरा आदमी देखता है अपने वो नजर से, फिर वो गलती निकाल देता है। दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। तो अप्लाई द पीयर रिव्यू। पीयर कैन बी बिलो और अबव यू, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टीम मेंबर को बोलो कि बेटा देखो मेरा काम देखो, इसमें बताओ क्या गलती है। तो वो निकाल लेगा, सर ये रेट जो है ये गलत डाला है आपने, जो है ये पर डे का पर आवर कर दिया, पर आवर का पर डे कर दिया। तो जैसे ही वो सही होगा ना, तो मेरा बहुत बढ़िया बेसलाइन बन जाएगा। और बेसलाइन बनते ही मेरा प्रोजेक्ट जो है, आप ये समझो कि वो आधी टेंशन तो खत्म। क्यों? जब मैं टीम के साथ अगर मैं सहमति लेके कोई काम मैं कर रहा हूँ, तो वट एवर एस्टिमेशन इज देयर, सो दैट इज हैविंग ए कमिटमेंट फ्रॉम द टीम मेंबर। इट इज नॉट ओनली एन एस्टिमेशन, बट इट इज ए कमिटमेंट कि ठीक है, अगर मैंने सर को 15 दिन कहा है, तो वो 15 दिन में मैं करके दूंगा। तो आदमी क्या करता है, अपने आप को सेल्फ मैनेज करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज मोस्टली मेकिंग द स्टेटस एंड सेंडिंग इट टू द क्लाइंट एंड द सीनियर मैनेजमेंट, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ ए गुड बेसलाइन। तो कल हम करेंगे हाँ, रिसोर्सेज में काम करेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट देखेंगे, और बेसलाइन किस तरीके से बनते हैं। फिर मैं एक मैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट दूंगा आपको कल, ठीक है। उस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के बाद हम जो है ट्रबल शूट करेंगे, फिर हम उसको बेसलाइन मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और ये रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है प्राइमावेरा में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो रिपोर्टिंग करोगे तो प्रोजेक्ट का बिल्कुल स्टेटस आपको डे टू डे ये पता लगता रहेगा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग, उसके बाद एक मैं आपको एक्सरसाइज और दूंगा जो आपने मेरी ट्रेनिंग के बाद करना है, और फिर उसको आप 5 दिन में कर लोगे, 6 दिन में कर लोगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो एस्टिमेटेड जो ड्यूरेशन या एस्टिमेटेड कॉस्ट से आपका कितना फर्क आ रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है रॉ डेटा पकड़ने की क्षमता कितनी है ना। अगर रॉ डेटा अगर आपने ठीक से पकड़ लिया है, रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? एक तो
आपकी जो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन टीम जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाती है, वहां से मिलेगा, ईमेल से मिलेगा, क्लाइंट से कोई मीटिंग की है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग से भी मिलेगा, कई बार चैट में मिलेगा, कई बार आपका टीम मेंबर बनाए, ये सारा इकट्ठा करना ना, जो WBS में डालना, ये बहुत ही जो है, जिसे कहते हैं ना, ये अटेंशन का काम है, फाइन डिटेल। अगर ये सही बन गया तो बाकी सारा सही हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। हाँ, कल मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, नाइस, ग्रेट। कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी रीडिंग या कुछ भी नहीं चाहिए ना? रिलैक्सेशन की जरूरत है, बस रेस्ट। ओके। क्योंकि जितना फ्रेश माइंड से आए, जितना रेस्ट करके आओगे ना, उतना ही इंटरेक्शन जो है ये बढ़िया रहेगा। ओके, ग्रेट। ठीक है ना, ठीक है, ओके, हैव अ गुड, नाइस। चलो, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।